left wondering where did he go, right? In that comeback that 100 Thieves had, he went missing. So will he be missing today, or is he going to have monster performances? Yo, hello. Finally गेम स्टार्ट हो रहा है. अगर मैं ऑल टैप करूँ तो ये हो जाता है. I see. Sick logo. Riot Games का. Let's go. वेट क्या क्या मैचेस का क्या क्या सीन है एक मिनट में देखने पर ही. स्पाइक एक और चीज करता हूँ. पॉप आउट चार्ट. Gambit versus G2. कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे. फिट मैप अभी डिसाइड नहीं हुआ है क्या? 9:30 तो हो तो गया. मैप पूल बता रहा है. क्या कह रहे हैं लोग? कह रहे हैं G2 जीतेगी. G2 का 60%, 60-40. यार इन्वी ने अच्छा खेला है सेंट्रल्स को हराने के लिए. तब तक क्या करें? Fortnite. We're going to play against you. It's much better than we played against them on the EMEA, and we'll show better performance. See Anuki on the stage. अभी तो टाइम है आई गेस. थोड़ा सा टाइम है शुरू होने में. Not only Gambit, not only EU region can win so 71K. Let's go. वैसे इस बार ही आई थिंक Valorant की नॉर्मल स्ट्रीम पे काफ़ी व्यूअर्स आने चाहिए क्योंकि इस बार ही वो नहीं है ना, मतलब इतना ज़्यादा हाइप नहीं होगा. फ्राइडे का फ्राइडे और शाउट का क्या हुआ? शाउट भी शुरू किया कि नहीं किया? आई डोंट थिंक सो. वेट हाँ और भी तो थे. नहीं अभी तो शाउट ने शुरू नहीं किया. सो दिस टाइम 13-1. मैप्स डिसाइड नहीं हुए ना, तो ऐसे करते हैं कि वैलो खेलते हैं तब तक. वैलो खेलो, फोर्टनाइट खेलो. ठीक है एक आ जाओ. फोर्टनाइट खेल सकता हूँ थोड़ा सा. वैलो साइड बाई साइड रख लूँगा. मतलब ये स्ट्रीम साइड बाई साइड रख लूँगा. अरे स्क्रीन खाली हो गई. लमाओ. Ooh, look at this. Sheesh. वैसे मैंने आई डोंट थिंक मैंने कोई भी ओपनिंग सेरेमनी देखी होगी ढंग से पूरी. नो
G2 versus Gambit. I think G2 is going to take it, but Gambit का ना बहुत तगड़ा रहता है यार. I want to see a great game between this Defo and इसका कौन था G2 में कौन था? नहीं अरे हाँ वो तो सीनेट तो गया, वो तो एसेंट का था. लॉल अब क्या करेंगे? मे बी Gambit will win. Maybe Gambit can take it home. I believe so. अरे सोलो में घुस गया, ये सोलो में घुस गया. मैं नहीं खेल रहा फोर्टनाइट. छोड़ो. ओके लाइनअप्स क्या था? मैंने लाइनअप्स देखने दो. डेफो, नैट्स, क्रॉनिकल, शेडोस, रेड का. भाई क्या नाम है यार, सबके नाम ऐसे मतलब बढ़िया लग रहे हैं ना. यू नो हर बंदे नैट्स के बारे में सुना है मैंने, डेफो के बारे में सुना है मैंने, शेडोस के बारे में सुना है, रेड कर को तो मतलब इन सबको तो खेलते देखा है. क्रॉनिकल को मैंने इतना पॉप ऑफ करते हुए नहीं देखा, बट अदर देन दैट अच्छे हैं. मिक्सवेल का काफ़ी नाम सुना है, कोल्ड मेंटा का सुना है, नोक्विक का सुना है, केलॉग्स का भी सुना है. अब ओ G2 भी अच्छी है. It's going to be a nice game, but कितनी देर में शुरू होगा ये? डेथ मैच खेल लेंगे तब तक हालों में. It's a treat when you get to see them play Haven because it's just so wild, but it's not something they're super comfortable on, so it's not shocking they do that. G2 choosing to play in split. You mentioned sometimes they'll ban Breeze, sometimes they'll ban split. We've seen them play split against Sentinel. एंड मैं वो चालू कर रहा हूँ अपना पहलो. इसको मैं छोटू कर देता हूँ और पर डाल देता हूँ. वेट, इसको मैं ऐसे छोटा करके बना दूँ क्या? कैसा रहेगा ये? ओह क्यों डॉज करी थी मैंने. माय बैड. ये तो बहुत बड़ा है अभी भी. मैं कुछ सोच रहा हूँ क्या किया जाए. गेम का छोटू से बना दिया जाए स्क्रीन. कैन इट वर्क? Do I even have enough time for it? You know, like we get this, we get this, and we go play games. But yeah, this works, right? Just waiting for it. Perfect. थोड़ा गाना बंद करना पड़ेगा. बहुत सारी चीजें हो रही हैं आसपास. अरे मेरे को लेफ्ट से दिखना था यार, लेफ्ट से आ रहा था. साथ मैंने पूरे दिन सुबह से वैल्यू नहीं खेला तो ऐसा सा हो रहा है. चैट भी देख लो एक बार.
ब्रो लगा जंप मारेगा कुछ तो करेगा. If you see one of my creatures, it's a good thing, all right? We'll figure out what they do eventually. Fight! Don't give them ground. अरे बॉडी शॉट पे बॉडी शॉट. ओहो मर गया. Fireboy's gone. अरे भाई लेवल 1 वाले बंदे से हार गया मैं तो. नहीं Done with. मेरा किल चुरा तूने. No more Viper. मेरा किल चुरा तूने. Nice. Hi, gun diff, skin diff. ये तो मैंने ट्रोल किया. क्या हो गया मेरे को आज? Bro, where are you looking? Turn and kill me, no. Oh wait, शुरू हो गया. बंद करो. Leave. Side of their map choice, a surprise for G2 to be taking this battle on breeze, I'm sure. What a tough round. Browse this thing. Let's go. And team को बड़ा करो. They're holding forward, shutting him down, and leaving Kellogg's to do it all. Immediately, we're seeing that aggression. Yeah, get back. And आवाज बढ़ाओ. Together with Defo and Nats. Okay. And that kind of sets a scary tone for the rest of this map because G2 did not look prepared for that. No, and I like to see it. Like the fact that Gambit, a lot of the time when it comes to the defensive Nice sides, shot. are Okay, fairly passive. Defo with They're known for 4K how slow in they the first actually round play. itself. This time they've just gone, okay, let's just destroy them in this pistol round. Let's catch And them off guard. not only Gambit with the map taking choice, a but the style of play. massive lead. I think it's also 494 important का that we talk about ACS the two main एवरेज तो है ना. एक राउंड का तो एवरेज निकलेगा. 494 का डैमेज दिया बंदे ने. So far, for example, the only match that we actually saw Gambit lose, that was the worst Almost performance we've seen from Defo 500. in this entire Almost tournament. ace. Kellogg's has also been on इसने pretty चुरा much लिया. as one of the top like 5 players in the whole thing. So these two players are going to be a big focal point for this matchup, and because Breeze is so open, it makes it even more interesting. Now they're both making a big name for themselves when it comes to Masters 3. Over on Gambit's side, you see that full buy up, but it's the Marshall in the hands of Kellogg's that can cause a couple of problems for Gambit. No surprise that even though they don't want to invest many credits into this round, Okay, they decided Bulldog to for just give Chronicle that scope and over to Kellogg's, as you said, and such with an Guardian open for map with Red so Car. many long-range उन्होंने buy duels, किया यार but इस round. Gambit are trying to avoid giving any Proper. opportunities away at this point. But Red Guard को एक पड़ चुका है shot I think इसका. 59 पे है ना. Spotted out by that. Kellogg's is going to be able to find And Chronicle, though. Chronicle's That's the main man dead. on this A site. The Bulldog is dead. Nats is also going to be here, but a lot of his utility is on the other side Oh. of the map. A little bit Oh. close for comfort there. And we know that if they give too many opportunities for Kellogg's, in fact, the Vova's now found a gun. This is starting to fall apart. That Marshall, the Wait. one weapon invested into, comes out of the round Rifty with होगा 4 भाई. ये क्या kills. भाई? And you highlighted Kellogg's as one of Kellogg's the top versus- players in the tournament, someone to keep an eye Nice, on in this nice, series. nice. And he Kellogg's waits versus until Defo चल रहा round है. 2 to pull out that 411, kind of play. 410, 323 to 25. Pistol.
Kellogg's 4Ks round 2. दोनों I'm jet not OP. sure. Even though it's what, like 6 p.m. here in Germany, I don't think I've Nice woken up shots. yet to be able Nice to cope with that shots. sort of play this early on. How has that just happened? And Nice we also shots. said that maybe this looks a little bit worrying at the moment for G2. Well, that's even scarier. If you're on the side of Gambit, you've just lost a round to basically one player. Oh, hey, such an open True. map, such a long range one. That's where you think the rifles would have the advantage, or bulldogs and so forth. But G2 worked perfectly around Kellogg's to give him those opportunities to open up the map. Now we come into this round, and Gambit have decided to go for pretty much a full eco, similar to what we saw from G2. It's going to be 2 sheriffs invested up into, but for the most part, Oh. this is not a round that they expect to do anything in, and we're seeing Chronicle ये kill हो जाता, उसके पास totally shield shut नहीं down थी. by that split through mid. 101 का Got a damage से kill spike था. plant, and it's so hard for Gambit to get back in. Yeah, in the early fight, G2 spotted 4 players. So at that point, it's a fairly easy rotation back to A. They just had to deal with Chronicle, obviously one of the maps that we actually see him play the Viper because they actually pick up a Sentinel alongside it. You're not going to take Nats off a Cypher, even though he is 4v5, good 3v5. at that Viper play. For now, though, 3v5 retake, G2 just not earning possible. up not only credits, because of all the rifles they kept and stole from the previous Maybe round, they can get but a pick also some and... of those ultimates. Oh no. Nuclear. Okay, no, he Drop gets them. traded So, out. Maybe a little bit more costly than they would have liked. If Shadows can get away with a rifle, that'd be great. Oh, he's trapped though. He has to get all these Ah. kills to escape, and it's just going to be a little upgrade taken. I wonder if Kellogg's. कोई नहीं, gonna, one try casualty rifles, but and did just they about. keep their rifle, they Got a get bulldog their out of it. So, upgrades, everyone. In terms of econ lost, it's practically G2 is on G2. top They're gonna right be now. very Nice, happy with nice, that round, good, especially good. considering they did lose the pistol and now they're 2-1 up. Yeah, this is one of those maps as well. I feel like it's almost... It's the map in the series that's the most confusing, because we know that the last time we saw these two teams play on Ascent, which will be the last map, it was very dominant for Gambit, but it's also a very good map for G2. And then you've got इसके वजह किसी और stream देखूं क्या? I think G2 would probably look like the best Icebox team in the tournament so far. So I would almost say that if Gambit lose this, I'm a little bit worried for them, but if they can take this home and it goes to a third, the series would probably be theirs. Out of my way. Wait, इसके पास gun नहीं है क्या? Oh, इसके पास bulldog है. Used by Kellogg's to start the round out. He's popping the Blade Storm. Try and get some presence towards this A side, but they don't want to overcommit. Okay, yeah. For a moment They there, just probably started to contemplate pressed this a mixed bit flash through the wall. You and can updraft and try to grab a किल pick. गए यहाँ से. They decide they don't really want to fight this. Sky जो rotate करके आ गई थी from mid and B, वो चली गई. So there's a lurking arena जो mid पे बैठी हुई है. Just seeing कि कोई double door से आएगा तो मैं उसको मार दूंगी, and then you can commit. पर कोई आया नहीं तब तक. Yeah, So the scary thing is it's both yeah, the double door Viper से कोई and नहीं the है. Cypher here. So there's so much ये इतना utility. देर तक Kellogg's is उड़ते gonna be रहेगा, यही होएगा. out of the sky. Cage is being Nice popped shots as well. coming There's in. A little bit more time to play around some of these angles, but Nats is going to get dropped. Mixwell, he's found another, and an afterplant is inevitable. Really Yeah. good call by G2 there. They realized, okay, we've seen the Cypher, but there's probably Viper's still here, right? Has to be. Defo has an op. Earlier with Chronicle being Defo के ऊपर रखो भाई कैमरा अपना. What are you doing? Oh, that's incredibly unfortunate. UK. Walks forward, gets shut down through the door. I don't really see a way back in here. There has to be over-peeking. by Yeah, G2. that's a Give save. advantages and Gambit make the same Fine, read there. it's Just running fine. for the hills. We kill you. But look who's cutting them off. Nukia already coming up through middle. And he's going to go towards this B site to try and shut them down. He's hearing the steps. The rest of his team are rallying to his aid. And now he's going to try to stop those rifles from being carried Nice. through. The first dealt with. Nah. A shot to the back of the head takes Defo down. That might even be an all Okay. picked up for G2. At least they have So the G2 option. has a comfortable lead right now. Now उनका save होगा G1 G1 वाला का. G1 G2 Gambit का. Achieved the site looking a little bit vulnerable on A, especially. And like if you have both Viper and Cypher on a site and you get one Fine. kill and they Abhi just walk के लिए. in and plant, then I feel like that's not a very good setup. Like something's definitely gone a little bit wrong. And although I will say I think this is going to lean relatively heavily into the attack side for both sides. I don't think I've seen too many fantastic defensive So setups इस just yet. save round के अंदर I Nats am is still going to get a picking little up bit worried for Gambit if they go Bucky. that far Wait. down on their own map choice. No way. G2 have massively impressed Nice, me recently, Defo. but Mixwell won't be Oh, doing अरे हाँ, ये defend कर रहे हैं. Okay, yeah, they can get a Bucky and just sit down. 50 होंगे ये. Redguard gets a kill. That has given them massive Defo gets a control. kill. And now with a two-man advantage, Redguard gets an upgrade. Or like not an upgrade, actually a gun. This down, allow G2 to make the next move. Huge start. Again, the only rounds they've had any success have been based off heavy amounts of aggression, and
Now with the Blade Storm in play, a rifle retrieved, this is now looking like a very good spot for Gambit to be in. G2, however, they're going to get spotted, and the Empress comes into play. This is where Nukia closes in on the site. Nuki. To take Chronicle down, but he can't quite Nice match wall, the nice spray. flash. Moving in through that wall is Report always gonna be flash. a risk. The Hunter Go in. Fury trying to finish him off on the site, but nothing is to be connected by that. एक भी नहीं लगाया Kellogg's shot. surely not about to walk on through that wall. But there's a flank in play, and they Nice, Nuki. absolutely no. Wow. Never mind. Redgar Bye. gets dropped. The reaction on Coldamenta brings it into a pretty winnable round for G2. They're on the A site. The second flanker on his way. Nats 30 seconds so left. late to the party, but that might just be the timing that they need. Surely it can't go wrong twice. Nats is going to land the shot onto Nukia, but they need to now pick their battles. Which direction will they go in? Coldamenta again drops one of the flankers, but they should know that Nats is still here. Information to be garnered. Kellogg's to support him, but it's only going to be the trade onto Coldamenta, and Shados finds the final kill. Sheesh. It is a messy How round. did Gambit It's a win? shaky अरे मैं side में round, देख रहा but था, it's एक a में round एक- nonetheless. एक मैसेज का भेज दिया मैंने साइड में. Time starts to tick away, but still plenty. 3 flankers. Who has 3 flankers? You know, the thing was, they obviously found Wait, Defo, yeah, how but did they knew win that Nats this? was there 'cause he got Yeah. a kill earlier. If Wait, it had been the other way how did around, Gambit they might have win gotten this? cut by that third flanker as well. Like, this That was insane. I really adjustment don't was think they great. expected Redgar to be there. It looked like just god Coldamenta को भी मार दिया. Okay, then Shados gets a kill. holding down that flank. Oh, Ends up falling in the end. wait, Great recovery Rina by को क्या हुआ? Shados, but a fumbled round from Gambit that nearly And Rina cost them को heavily. न्यूकी को किसी ने मारा, but किसी ने उसकी वो नहीं ली, ट्रेड नहीं लिया. The thrifty. What is this? So it's good, but at the same time, in the manner that they won it, it definitely wasn't as clean as it could have been with the 2 opening frags that they found. I think maybe they're realizing that this has been a bit more shaky than they would have liked. So they're going to take Gambit themselves getting an early in time on, tactical that's pause. fine. Like, this is a team that I think everybody pretty much around the world in Valorant has been hugely impressed with. But the one problem we've had with Gambit is the fact that their mental can sometimes be a little bit off. Like, there's not many teams in this tournament that have been winning by a huge margin and lost 10 rounds in a row to lose the map. Like, that is, I think that's only happened to them, in fact. So, ठीक है मतलब good time to take a little bit of an You, early the pause, coach. give both coaches a little bit of time to talk. बातें Yeah, this चप is a चप great चप call चप by चप. Gambit as well, just to really hammer home the fact that it is not too common to see teams win a round and then call for that tag pause right away. Sometimes you let the momentum carry you away, but Gambit want to remain cyber focused. They know the team that they're up against. I mean, they know them pretty damn well, right? They're Yep. from the same region, and so you definitely don't want to underestimate them and fall into the trap of letting G2 have too much Okay, space. Because so the far, back I have end. to say, a lot of their attack rounds have looked very good. I liked what they did in particular on that A push, where they wanted to go, decided to fall back, and bait out the rotations to B, and then move back into A when it's that little bit easier. They've been conscious of where Chronicle might be, even without seeing him, Second, assuming audio they'll is be on fine the or A not? side. I just want So to see G2 have that. a pretty good read on Gambit's defense, at least to start things out. Both teams sending out the Tigers early. I believe they've spotted the luck. Actually, I was Yeah, going to say increase it just a bit. spotted the luck of Avobo. They've actually killed him in the first few seconds. Again, these aggressive pushes coming out of Defo. And because they've lost so much control, I wonder if G2 might have to just pick up the pace. They don't seem to be, though. And that play around middle by Coldamenta, I have my eyes on. These guys are playing more conventional, pushing towards the site, trying to see space. But I want to see what's Coldamenta going to be doing. Ooh, So that's Brian nice. goes on Kellogg's. with 2 kills in their G2. hands. I mean, now that Do question is entry null and picks. void. They've got the site and the plans. I was expecting much Yeah, more resistance out of retake, Gambit there. 3v4, Now we come into a 3v4 3v4 retake. I think they can still win. Defensive side, and still Coldamenta sitting down in mid wave. Nats के पास ultimate है, but that's not going to The do fact is, anything. even if he sees absolutely nothing, it lets Defo the has the remaining op and players he's know that peeking so wide. really be much coming from Nice, behind. Nice shot from Defo. Defo. This operator has been one of the saving graces that And he's he's got a had head so defense, far. he's gone. And the peak out from Defo! Nukia is going to meet the same fate. It's now starting to fall apart a little bit for G2. Yeah, Nats Oh, ultimate the को one thing they कमाएगा. had was Coldamenta's position being unknown, but in goes that ultimate from Cypher, the neural theft revealing him, and they'll shut him down immediately. The flash out does Nice. absolutely nothing Insane for retake. Mixwell, and just in the nick of time, they will get the defuse. Defo is Another carrying, one round for bhai. Gambit, and that one actually started quite poorly, considering they lose the A site so कौन से easily. इतनी आसानी से इन्होंने ये You have साइड to look at यूज Defo कर for लिया. that, was उसके on बाद point. फिर
It's not really been missing a beat so far. I think the only rounds that we've really seen them win, they've kill कैसे हुआ समझ में नहीं आया but हो गया. Well, they killed him on the flank once after the plant had already gone in. It is still a little bit worrying for me, though. Like, I'm looking at this from Gambit's perspective and saying, if it takes Defo getting 4 kills in one of the round, 3 kills on a retake in another round, they're not convincing. And their A-site hold has been really weak. They are just that round was dependent just on walking Defo. in. They didn't do anything else. He just went, oh, go on, lads. And just stroll into the site. Like, too easy. You saw now Gambit are fired up. We saw Shade us with the big let's go right after they win that round. Now they're looking for a little bit more in a mid-split, very quickly upping the pace. Nice. G2 looking at the B side for what feels like the first time in an early round, and they are not finding any success. Redgar shutting them down, and Nats sitting in mid, holding that control, is ready to take a fight, but he does not even need to support his teammate. I think he's going to get one. Just doing it all. Yeah, and that's fall it. in the end. Avova has a 1v3. The spike is down Nah, in he middle, can't so he win can't even 1v3. pop that Viper's No way. kit to try and maintain control. Instead, he has to push right into this Gambit hold. Yeah, this looks like an impossibility. That's Screen maybe trying to bait them into the fact that but Defo is pushing aware from a of it. different angle, trying to section off some of these spots, but Defo is just lasered in on the exact position he's going to be going. It's just He's like वो आगे आ नहीं He's got सकता the पीछे poison नहीं orb सकता again, मतलब maybe साइड में नहीं है तो क्या expecting it to split through कहाँ mid, होगा but यहीं पे ही they're होगा. watching this, they're ready for this, but Avova still connects the सिर्फ उसका shot. हल्का सा हेड दिख रहा होगा 1v4 turn Avova 2. को It's and he now snapped on it. possible for him to bring something back here. The snakebite down is actually going to stop them from peaking pretty much entirely. And if he gets Oh, to the they're side like, let him and plant, puts down that we'll ultimate, it 1v2. could be scary. The wall up, but Yeah. it's not in time. Nats shuts ये him down. kind of a across, throw वाला and वो 4 था. will be found from Gambit. These rounds are coming pretty Peak close. था but They're still getting them on the board, and there's a certain point where it just doesn't matter anymore for G2. They've got to start to find some success, especially considering how successful, not this one, but some of the other early rounds have been. I do really like the screen that's being placed as well on the B side. Like, it has a multitude of uses. Yo, Redgar One of them कैसे is बैठा able हुआ to है? section off that mid split, और- so that you're either going to have the players peeking in from Redgar mid, कैसे and बैठता then you है can इस fight पे? them, as we saw the run Monitor through the पे? screen coming out. But it also actually has an extra layer to it, because I've seen You're a players use dinosaur, it to Nick. almost cut off short in वाह, mid, आते so हैं that you time can out. just drop it whenever you like, and if there's somebody wrapping around the time elbow, out you basically anyway. have a free kill, because there's no way they're expecting you to do that. So it's a cool screen. It's definitely been used before. जैसे टाइम आउट होए या फिर कोई गाना बजे मैं अपना गाना बजा दूं क्या? Chaos and, well, G2 can quite handle it. It has been a swap up as well. The setups from Gambit have been consistent. That wall we've previously seen used on the A side as well. So it now becomes pretty difficult to predict exactly how Gambit are going to structure these. नहीं मैं बस Valorant में भी just check कर रहा था क्या चल रहा है. Timeout comes in. So you can't really figure भाई out मैंने सिर्फ और exactly सिर्फ how डेथ they're मैचेस ही going. खेले हैं इस अकाउंट पे. Now that they've had that little bit of a change up, Lol. it's time to figure out how you want to play and how to take that control yourself. Yeah, again, I think that maybe a little this bit of is a a nice throwing round for G2 to test the waters on the B side a bit. They don't want the A side to get too overly stacked and complacent after they've gone in that direction for a lot of the time. But I do think the A side's definitely been a little more vulnerable now. Although there's a weapon missing, at least you can see on the scoreboard, it's not going to be for long. Like, this A shop orb is one that it's pretty easy for the attackers to get. It normally is, yeah. I see Shados, though, sat outside A, possibly ready to pop a flash around there, and by the looks of it, he was going to put in his Tiger to try and catch them. No, a flash, in fact. Set to come around. He knows now they're going for the orb. Oh, unfortunately, Coldamenta was not Kellogg's able flashed. to dash away. Coldamenta covering, and they've got their orb, but they've also got a pick to start the round off. That is fantastic for G2. I feel like you had to do that as a team. Like, it just, the yeah. time it takes for you to दो flash दो and लोग peek, अगर there's फ्लैश कर already रहे थे somebody waiting on फिर the दो off लोग अगर angle, पिक करते हैं avoiding it smart वहाँ का for तो एक बंदा Coldamenta, and he's ट्रेड already होता तो managed to find a second opening. damn That's that's actually wins that duel. yeah. It looked like he was dead for sure. And well, thanks, speaking well, of that another lurked. player who's dead for sure, That lurked absolutely fantastic. We know him for Nice. this when it comes to Viper. 4v2 Strange but to they have see the on ultimate an though. agent like Sky, but I love it. Was that a connection? Nope. no, he got killed for a minute. I think. Oh, actually, no, it was No, no, no. from Avova. That was not a connection. Looked pretty He didn't get an spot on. assist, so I'm Yeah, going to go poor off the guy. assist. Poor guy. Either way, Nats on 30 HP after that mid-fight we saw earlier. The only player to find a kill in this round, and we said that G2 needed to figure out their attack. They got to decide exactly how they wanted to approach it. And to be honest, right here, I don't think they did anything special. They held for aggression coming out of A main, and they got 2 players, both Defo and Shados, just running and playing right into their hands.
Yeah, I think a lot of that, again, comes off... I would much rather see that sort of play come out from a couple of players, so you can have the setup flash rather than trying to do it yourself. I think the other thing as well is both teams just read into that. एक तो होगा, एक तो होगा, they're going to be एक going kill तो for an होगा. orb. Nice. I'm going to try and stop them, and Nice. we know we're going for an orb, they know we're going for an orb, so I'm also going to try and counter them. Yo, Corson, and then it what's goes up, down what's a million up? different Oh, roads, and you have a book that's 4,000 pages long. Yeah, oh, I've seen them. I've seen some What's of up, these bro? books. They run. I Kya like haal that you have chal? one of a couple of pages, though, right? Yeah, we just had a sticky notes. Try not to lose 1v4. Yeah. Yeah. I saw yours, like you were playing and were streaming. That was actually the only thing I wrote Fortnite. down, and it didn't work. तो Unfortunately. मैं भी खेल रहा था तब मैं जेनसमा के साथ सोलो खेल रहा था. I really did. I really did. I'm watching in my stream. Oh, It's kind of shaky. I think Corson's Chronicle's stream. having a tough time to start things So out. if you guys don't play Valorant No much, surprise, G2 are looking this to is like the pressure out semi-finals inside. of. They're spreading out into a deep, and this is a big change You from can what call we've seen this from some the of mini rounds worlds. previously, You know, the where they mini were world very championship. centered around an aggressive तो अभी दोनों EU की टीम्स हैं सेमीफाइनल्स के अंदर. G2 वर्सेस GMB गैम्बिट एंड डेफो बंदा है जो स्नाइपर के अंदर बहुत ही बढ़िया है एंड उनकी टीम के अंदर तो मतलब G2 की टीम में सारे अच्छे खेलते हैं. मैं तो बस डेफो को देखने के लिए आया हूँ, देखने के लिए मतलब क्या करते हैं ये. कोई नहीं अभी स्ट्रीम में. कोई नहीं क्या पता कोई भी आ जाए. A little bit unsure how he's managed to survive. Chronicle! The timing of that, he gets 2 kills off the back. Sure, he's traded out, but he was so low on HP. I don't think he'll care at all. Okay, that's a 3v4. A rough time. He certainly didn't this round. Yeah, Gambit lost. No, G2 lost another. Great timing and a Nice. great kill. Coming out of the Only one guy remaining. Shados falls, but a 3v1 Red guys are not going to pick, peek, right? With it all to do, a big clutch Yeah. needed, and Nats के पास angle है. on the flank is the one to close that out. I mean, you फिर Valo खुल नहीं रहा? Chronicle there and say there's क्या हो no गया? way he should have gotten away with that. He got tagged up by a drone, then he got Hunter's Fury. हुआ क्या? plays inside Error क्या आ रहा है? his orb, picks it up for that little bit of extra advantage. Installation वाला error है या फिर वो वाला error है? एक connection error है. It goes pretty quickly and you get that peeker's advantage. नहीं खुलता ही नहीं है या फिर अगर खुल नहीं रहा ना तो maybe you have to install Riot का वो जो Vanguard होता है ना वो इंस्टॉल करना पड़ेगा. नहीं तो जब लॉगिन स्क्रीन आती है ना, अगर लॉगिन स्क्रीन ही नहीं खुल रही तो मतलब कि पूरा गेम इंस्टॉल करना पड़ेगा. अगर लॉगिन स्क्रीन खुल रही है तो इसमें एक रिपेयर का ऑप्शन भी होता है. रिव्यूट करने के लिए बोल रहे हैं ना पीछे. हाँ वो वैनगार्ड के लिए है. क्या होता है अगर आपको वैनगार्ड इनके एंटी चीट सिस्टम है और वो कंप्यूटर में चालू होना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग द गेम. वो मतलब ड्राइवर्स के साथ चलता है गेम, कंप्यूटर के ड्राइवर्स के साथ इंटीग्रेटेड है वो. So you have to restart. वो उसका कुछ जुगाड़ है नहीं. Won out that previous round is going to completely stop them with this Viper utility. Yeah, this is the problem. Once the openers go Gambit's way, Yeah. it becomes a lot more. ये पहले CS:GO के साथ होता है ना कि बहुत cheaters मिले थे. Nice, Nats. Ooh, 140. Oh, that's heartbreaking. Almost the perfect round from Nats, but you know what? I think his teammates will clean that one up quite easily. Fortnite खेलोगे आज? I don't think so क्योंकि ये गेम्स खत्म होते होते like 1-2 बज जाएंगे. तो आज तो नहीं पर कल ऑफ स्ट्रीम खेल सकता हूँ मैं. कल शाम को या कल दोपहर को ऑफ स्ट्रीम खेल सकते हैं. Swinging out wide like that, showing them that he is not scared to take those aggressive fights. We know Gambit as a slow team. अभी वो खेल रहा होगा I guess. TJ खेल रहा होगा और जेनसमा को अगर बुला लो. जेनसमा को हमेशा Fortnite खेलने का मन रहता है. तो वो पूछ भी रहा था डिस्कॉर्ड के ऊपर. Almost hunkered down in the site, but we had that breakdown the other day where he sat still for a minute inside a Viper's pit. हमेशा मन करता है खेलने का. Very aggressive. Now we do have Kellogg's back on his Marshall, but it hasn't started quite the way they would have liked, and Shados doesn't look like he wants to. मैंने देखा लीथल स्नाइपर भी वो कर रहा था, स्ट्रीम कर रहा था. कोई TNT ना कब था कोई. Had some trouble in these anti-eco rounds, so क्या चैलेंज था कुछ ऐसा कुछ था. Careful here not to get overzealous. Mixwell doesn't manage to recover that weapon. It's a little bit too far out for him to risk it. Welcome to my world. What about now? Still doesn't actually let them get over towards that weapon, but they'll be facing out behind it. Kellogg suffering a little bit of damage. He'll fall back in, and look at this. They're just spraying away
Gambit looking to section them off रेड कार के पास ई है Players are put through, looking for them inside. रेड कार गेट ओ उन्होंने गन चेंज के लिए Collins is a great angle, but a whiff shot. डेफो ने वो ले लिया Finishes him off. Vandal. While waiting for these players to push on in. They'll take the fight on their Shadows terms, डेफो but खत्म Gambit will come out on top. 4 players एग्रेसिव alive खेल गया भाई coming into the final अरे round and a half. हिटर They're looking pretty strong in this यस defense. सर Yeah, it was starting off a lot shaky. What's up, what's up? I said that A site looked a bit rough, and in this round in particular, you do have to say that it was mostly just pistols. What's up, coming bro? in for G2, क्या चल so रहा है? It's not the end of the world, but it's the way that they've started to take map control away from their opponents that has started to excite me a little bit. As said, Nats starting कैसे to हो take सर fights in the middle. You've अरे seen मैं Defo I'm get good I'm aggressive good all around the map. आप बताओ Now for G2, as said, I आपका expect कैसे चल Gambit रहा to be है better आपका on the हेटर पार्ट 2 attack. कहाँ गया Not something I'll say very often. उसको गेम नहीं देखना अच्छा वैसे तो डिमोरलाइज हो गया था G2 को हारते हुए Now when it comes to देखते हैं Breeze, मतलब वो G2 सेंटिनल्स को हारते हुए देखते हुए And since then, things have been a little bit shaky. भाई As be Gambit hard start to take fights on be their own hard है terms. They start to play much more aggressive. अगर डेफो मर जाता है तो बड़ी दिक्कत हो जाती है Here, the updraft just about डेफो 12 saves HP Defo. पे है 20 HP. With an operator, he's still going to be very dangerous. That wall 3v3 going to be coming down पर डेफो के fairly पास heal soon. नहीं है Kellogg's wants an advanced position मिक्सवेल for के when पास it does अल्टीमेट fall. नहीं है किसी के पास अल्टीमेट नहीं है After, I love that free control. हम भी बस आपकी याद में मेरा हेटर रेस्ट कर रहा है आज उसने फोर्टनाइट की स्ट्रीम की ना इसलिए हाँ मैं देख रहा था कोई TNT ना कब कुछ कर रहा था मैं देख रहा था उसकी स्ट्रीम थोड़ी सी तो समझ में नहीं आया TNT ना कब करने के बाद वो फिर क्रिएटिव खेलने चला गया था ना तब मैं सोलो वो खेल रहा था क्या कहते हैं उसको क्रिएटिव नहीं तब मैं डुओ खेल रहा था जिनसमा के साथ 7 HP to try and pull off this clutch. A 1 versus 2 and the time is ticking. He has to go now. It's the last round. There's no value of keeping that operator anymore, and I don't think he stands a chance in hell. One player may be dropped, but he does not know where Avova lies, and he does not have the time. It'll be a 5th round on the board for G2, dragging things back a little bit, but still a solid half for Gambit. Yeah, I think उसका इंटरव्यू कैसे रहा आज उसका इंटरव्यू था कोई this is the worry, right? Any idea sir G2 decided to start there. Top Now मिल we गई इसको move into the second half where I feel like Gambit are going to be so much more comfortable. You said it as well earlier, Tom. And they're firing on all cylinders. We're seeing Defo start out the map in spectacular fashion. But even when Chronicle was stumbling towards the beginning, he really started to find his stride. Let's throw things over to the desk to get their opinions here. मुझे लगा कि वो मेरे साथ ही खेल रहा था Thank you very much, boys. Now, that last round we saw, Sean, was absolutely huge for G2. They had to win that. Yeah, they had to stem the bleeding, right? Nice. They got those 3 rounds early. अच्छा मेरे को भी एक चीज पूछनी थी Absolutely ham with the marshal. कौन सा वाला चैट सिस्टम बेटर है मैं ना स्क्रीन पे दूसरा चैट लेके आता हूं A couple grimy rounds throughout the half. But it looks like Gambit kind of बताना कि देखने में कैसी है मतलब देखने में कौन सा वाला बेटर है मैं चैट वर्जन 2 लेके आता हूं एक सेकंड took a time out and after that you saw that they changed the way they were using their Vipers browser when source they started repositioning them it made it a lot more of a commitment for G2 to make pushes especially over onto the A side and also the way they kind of pushed into mid as well would have meant that it's harder for G2 to go that way too and I think that started to restrict them somewhat एक सेकंड में दिखाता हूं ये स्ट्रीम लैब्स का कुछ है he got hit with the Hunter's Fury on that one round. He dropped his. क्या मेरा हेटर तो मेरे साथ खेलने के लिए पॉइंट में चाहिए ना the enemies before you and he gets 2 frags with like super low HP. That was a game changer in my eyes because G2 could have run away with the half with that round. I'm also Nats on our मैं बता नहीं वो आजकल टाइमिंग सही बैठ नहीं रही ना खेलने की also talk me through the benefits of having a Cypher on this map. Yeah, so this is where they're going to benefit. They're going to benefit. ये मैं वापस लगाता हूँ Valorant stream. Just kind of put his trips on A or B, leave a camera in mid, and they can ignore areas of this massive map. Whereas G2 had to spread the map or do very, very fast executes. अब कुछ लिखना जरा stream पे bleed the clock style. मैं लिखता हूँ कुछ hello hi लिखता हूँ hello. I think the nice thing as well about running a Cypher instead of a Killjoy on this map as well is you're not limited by space because Killjoy, you know, लिखा तो मैंने अच्छा मेरा खुद का मैं आया तो छोटा सा लिखा हुआ आया kind of the same deal whereas Nats can pretty much हाँ ये देखो बताओ कौन सा वाला बेटर लग रहा है लेफ्ट वाला राइट वाला Breeze was Gambit's pocket pick. Mitch and Tom, let's see what else they have in store for us. भाई Well, I'm sure there's plenty yet to be seen even just here on this map. Well, they've had a little bit of time to chill out, though. It's like that Teddy. He's having a good time.
समझ में नहीं आ रहा कौन सा वाला बेटर है. They're just so cute. राइट वाला बेटर है. I feel like everybody loves the little Easter eggs of them. But लेफ्ट वाले में ना फोटो आती है. Tea party. Yeah. It's all good, but we're back. मैं वो into सोच रहा था. It's serious stuff here. The G2 looking to try and make a comeback on their opponent's map choice. They got Icebox coming up. अगर ये बात है तो मैं राइट वाले लगा के रखूं. Almost managed to catch them off guard. राइट वाला तो लगाना भी इजी है, मतलब मैनेज करना इजी है. बस ये बात है कि ये ना जा नहीं रहा. मैंने हेलो इतनी देर पहले लिखा था. That one player about to come under pressure. Yeah, this is तो फोटो आती है, अच्छी बात है गंदी बात है. Gets dropped immediately. एक सेकंड. All they've got. This is insane. Gambit have done practically nothing by the way of heads-up duels, and they've got the A site, they've got the plan. In fact, they look like the defenders. I Platty boy photo you just need good liking chat. Good looking chat. तो right वाला looks better that you want to say. Okay. हल्की हल्की मेरे पास different designs भी हैं. एक second. Sure, it's traded out, but now they know where these players are going to be sitting. Kellogg's picks off another, but Chronicle and Nats are fighting strong. मैं different style लगाऊं के देखूं क्या? ये है boxed. Box लगा क्या? तो change ही नहीं हुआ. Copy करके फिर से लगाता हूँ. Refresh. Now, just a second away, and indeed, कुछ change हुआ? 1.09 नहीं. to be exact. That's going to be another round on the board for Gambit, winning out the pistol. But remember, the second round It didn't is my exactly opinion, go their ask way. others The too, problem वही is तो. This time around, G2 are on the defense, and things are about to get much more difficult because winning out these pistols. सबसे पूछूंगा, but वही है कि आप भी तो stream के viewer ही हो. आपकी opinion भी matter करता है. अरे ये तो कुछ change ही नहीं हुआ यार. ये तो box का same लग रहा है यार. ये क्या? What is this behavior? Things like mid control, for ये तो example, कहते चेंज हो जाएगा. ओ सेव सेटिंग का बटन दबाना पड़ेगा. सॉल. मैंने सेव ही नहीं किया था. अब कुछ लिखना पड़ेगा. आ. मैं भी पहली बार ही कर रहा हूँ ना ये सारी चीजें. मेरे को भी पता नहीं कौन सा अच्छा लग रहा है कौन सा अच्छा नहीं लग रहा. I'm loving the pace of Gambit. This is not something we're particularly used to, but Mixwell is already going to find the first shot. Defo looking to wrap around, but it'll be Chronicle to find the kill, evening things Hello, up once part again 2. and guaranteeing the afterplant. And of course, हाँ इसमें ही फायदा ये है. हाँ ये देखो. he's on the other side. हम तो आपके दोस्त है. आपके दोस्त है बस नो व्यूअर. Let's just say that. अरे मतलब everything. ये दोनों. ये दूसरा स्टाइल है. बताओ ये वाला कैसा लग रहा है? By the time Nats gets Guys, here, the let me round's flank. already over. Don't worry, I'm coming in behind. I'm behind them, boys, and the thing is, it really doesn't matter because he gets there. How is this? Well, where he was coming from Is as this well, any they can good? easily know that there could be a ये player थोड़ा there box वाला style है. 9-5. Gambit really steaming into the lead here, and this is, remember, their map pick. Now they're on the attack where we think they're going to look that little bit more comfortable, and so far it's definitely been the case. And they're not a bad. ना वो गंदा लग रहा है. फिर लेफ्ट वाला बेस्ट है. ओके 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 ठीक है. ये वाला गंदा है क्योंकि मेरे पास एक दो तीन और स्टाइल्स हैं. ट्विच वाला स्टाइल तो आई थिंक बहुत बोरिंग सा होगा. बहुत सेम सा होगा. I would favor G2, but only just. So if this is a blowout from here on, well, I would be a little bit worried for them. कैसे दिखाऊं? Always show messages. This looks to be Gambit's, right? And they won out the veto, and certainly with this surprise pick, let's see what G2 have in store. This is a round they desperately want, but they've lost Nuke. फिर से अब लिखूं Hello Part 3. The shot not quite going to connect. Mixwell spotted out, will be traded. Hello Part 3. That Hello. flank cut off completely. Shados now all alone. The bonus Now round, just but keep he's the managed left to one. get his Okay, teammates okay, okay. handle as he moves around मतलब the कि left वो side. box The वाला first बेकार kill था. goes his way, but Kellogg's is that little bit too quick. He starts And with a enjoy weak the shot, match. but he finishes with 3 kills, Okay, and okay, G2 okay. find a 6th. I think लेफ्ट वाला अभी तक मेरे को भी सही लगा. But मैं सोच रहा था कि अगर बेटर किया जा सकता है तो बेटर करो ना. और अगर मैं इसमें वो लिखूं तो ये मैं ये डालूं तो ये मिलेगा क्या? इमोट मिलेगा क्या? नहीं, LUL का LUL ही लिखता है. But obviously ओहो. that's going to remove a lot of the possibilities for taking those more aggressive operator duels. Yes sir, the box man is shit. Okay, okay. ये एक है. ये एकदम हो गया ओल्ड स्कूल वाला. मतलब क्या हो गया? मतलब टाइपराइटर वाला. ये वाला कैसा है? हेलो पार्ट 4 लिखता हूँ. एक सेकंड. एक बहुत बढ़िया हेल्प कर रहे हो आप मेरी.
They don't want to just run in blind. मेरे को बहुत ज़रूरत थी इसकी, मैं अपने आप से नहीं पता लगा पा रहा था ये कैसा है। A minute gone. I've got your trail. They're actually going to pop themselves. ये अरे है मेरे तो पूरा नाम भी नहीं आया इसमें, ये तो और भी बेकार है। बड़ा है बट बड़ा का तो छोटा मतलब किया जा सकता है, छोटे का बड़ा किया जा सकता है। Just keep sexy font, all you need is just that. वही तो मतलब Nice shot out of Kellogg's. Quick return though. Gambit right back in the fight. The spike is down, but it can be recovered. There's no one close by to punish for the side of G2. Okay, I think अभी तक के लिए तो मैं कुछ पता ही नहीं चला यार। Make those rotates in. एक ये वाला है, सबसे लास्ट है, ठीक है। मैं कल से Valorant की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अरे ब्रो आजा ब्रो, just पिंग मी कभी भी, मैसेज मी एनी टाइम, we'll play Valorant, भी मजा आएगा। हेलो पार्ट 4 यानी फिर पार्ट 5 ये वाले में भी लेफ्ट वन। ओके The Vandal in his hand, and he connects the instant headshot, but Mixwell, perfect flash to close out the round. 7 now found for G2. These rounds are getting close, but ultimately they're come going back to the game. way, and G2 are right back in like the game. अभी तो मैं साइड में मतलब अभी थोड़ा क्रूशियल राउंड्स होने वाले हैं, टक्कर का मुकाबला चलेगा, ये 9 9 10 10 11 11 तक जाएगा ये, तो इसलिए मैं ज़्यादा इस पे भी ध्यान लगा नहीं रहा। मैं तो देख रहा हूँ कि कौन सा चार्ट बेस्ट है, क्योंकि अभी मेरे पास आप दोस्त हो ना, मैं हाउस ऑफ पार्टी। नाइस नाइस। ओके इसके अंदर भी लेफ्ट वाला बेटर था ना, बट इसके अंदर ओके ये वाले में यू टोल्ड राइट वन इज बेटर राइट। This is the part 1 वाला, एक second. In my head at least a pretty low buy out of Gambit, nothing really to play with, and instead 3 their players have weapons. आएंगे यार, मतलब कभी साउथ में आना हुआ फिर से। Very strange over on that attack side, especially with the value that can be brought when you look at the Viper wall, but it's only going to be used. You streaming on Streamlab? No. This is OBS and Streamlabs के widgets use कर रहा हूँ उनकी वेबसाइट से उठा के, you know browser source में लगाकर। मेरा PC I don't think it can handle Streamlabs because मुन्ना भैया का तो PC इतना बढ़िया है, फिर भी उनका Streamlabs lag करता है। उनकी स्ट्रीम लैग करती है वगैरह वगैरह, तो मेरे को ना थोड़ा डर लग रहा है कि मैं स्ट्रीम लैब्स डाउनलोड करूँ भी कि ना करूँ। ओपी मेरा प्लैटी बॉय। अरे तुमने मेरी रील देखी अभी, रील नहीं इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाली और यहाँ पर शॉर्ट्स भी डाला, उसके अंदर भी मैंने प्लैटी बॉय करके नाम डाला। That was homage to you। तुम्हारा फीचर हुआ था उसके अंदर, मुन्ना ने मेरे को प्लैटी बॉय बोला तो फिर प्लैटी बॉय शुरू ही तुमने किया था। विजेस लगाने के स्ट्रीमलैब्स में लॉगिन तो कर रहे हो? हाँ लॉगिन कर रखे हैं, हाँ जी यस। स्ट्रीमलैब्स का चैटबॉट यूज करता हूँ, स्ट्रीमलैब्स की थोड़ा सा वो यूज करता हूँ पॉइंट्स सिस्टम, तो इफ यू डू पॉइंट्स चैट्स में आई थिंक तुम सबके पॉइंट्स दिखाएंगे। ओ मैं अभी देख के आया। स्ट्रीमलैब्स में लॉगिन मत रखो, अकाउंट हैक हो जाता है। ओह व्हाट इज दिस बिहेवियर, ये तो पता ही नहीं था। अब क्या करूं? बस 45 points है। Top shut down in the early round out of Gambit. We know their defaulty play, and I mean it was only the first couple of seconds. So Alpha Clasher का हैक हो गया था। The same thing is true of फिर क्या करें? पक्का वो Streamlabs की जगह से ही होता है। ओह कैरी का भी दिक्कत आया था। He's holding down basically half of the map, at least half of the avenues that they have to press on, if not more. फिर तो कुछ करना पड़ेगा। The rest of the team tries to work up through middle. Pressure in onto that B side. Still no intention of where they want to go. अरे noob gamer is with 97 points. OP. Defo is on one today. Like अच्छा ठीक है, फिर मैं ये chat V2 अभी के लिए हटा रहा हूँ, लेफ्ट वाला chat सही है। And let's come back to the game, and मैं फिर Streamlabs से भी लॉग आउट कर दूंगा। But कैसे यार, मतलब अगर स्ट्रीमलैब्स से लॉग आउट कर दूंगा या फिर इसको यूज नहीं करूंगा तो स्ट्रीमलैब्स के विजेट्स बहुत अच्छे हैं, कैसे उसको मतलब उसका रिप्लेसमेंट कहां से लाऊंगा मैं? अगर स्ट्रीमलैब्स ना यूज करूं तो फिर क्या यूज करूं? Maybe that was Kellogg's with the operator, right? So they try to jump peek around the corner. Doesn't really punish them in the end.
And this operator will just look to save on the back of the B site, but it's unlikely they allow that. And now they've spotted him as well. This gets so much more dangerous. Nats is already in their spawn. He's just running at him, knife out. Kellogg's knows that he's up close, so that's a free frag. But how much more can he get? He needs to find so many kills if he wants this weapon for the next round. The cloud burst to isolate some angles. This is something Kellogg's does so damn well. But in the end, doesn't look like he gets away with it. Double digits hit for Gambit. And that was I mean, there were a couple क्योंकि जब स्ट्रीम लैब में परमिशन में जाओगे लाइक उसमें ये परमिटेड है कि कोई थर्ड पार्टी का अकाउंट यूज कर सकता है कि नहीं कर सकता है ओके आपके अकाउंट भी डिलीट कर सकते हैं ओह शिट फिर तो मैं कुछ करता हूँ इसका हटाता हूँ और फिर करेंगे क्या ऑल्टरनेटिव क्या है भाई नो गेमर एंजॉय योर वीकेंड वैलो खेलने आने फोर्टनाइट खेलने आने तो बता देना फोर्टनाइट में तो थोड़ा सा मेरे को अभी बोरिंग लग रही है वैलो खेलने तो बता देना कोई भी हाँ तो इसका ऑल्टरनेटिव है क्या ब्रो पर्सन अगर मैं तो इसके लिए यूज करता हूँ स्ट्रीम लैब्स एक तो नाइट बॉट है चलो ठीक है नाइट बॉट है पॉइंट्स का तो चलो मैं चेंज कर दूंगा पॉइंट्स अभी कुछ ज़्यादा यूज कर भी नहीं रहा ये चैट का मैं सोच रहा था कि मैं इसी पे रख लूँ टीम लैब्स पे रख लूं और हाँ ये कोई बंदा सब्सक्राइब करता है तो ऊपर लिखा हुआ आता है अगर वो पब्लिक सब्सक्रिप्शन देता है ना तो लिखा हुआ आता है Have to keep that in mind when it comes to this late stage of the round, and it looks like again they'll look with favor towards the. Don't believe my words. YouTube में देखो Streamlabs में दिक्कत हुई है people की. No, I believe your words. I believe कि तुम जो कह रहे हो सही है, but अगर ये ना करें तो और क्या करें? क्योंकि Streamlabs पूरी दुनिया यूज करती है कैसे? क्या मतलब क्या ऑप्शन क्या है हमारे पास सब कहते हैं कि ये नहीं तो स्ट्रीमलैब्स यूज करो स्ट्रीमलैब्स यूज करो जस्ट सर्च YouTube has Streamlabs okay maybe there will be some way to prevent that कोई चीज कोई ऑफर बंद करना कोई ऑफर का मतलब क्या कह रहा था मैं कोई फीचर ऑफ करना पड़ेगा तब आपको थोड़ा सिक्योर हो जाओगे मे बी किसी फीचर के लिए आपको एक्स्ट्रा परमिशंस ऑन करनी पड़ती हैं शेडोस कैन स्टिल विन 1v2 come on right no but the spike is not planted for him he needs to win the first and he does indeed Avova bros don't say bros it doesn't matter Avova comes off it to take the duel and that is 9 rounds for let's use OBS it's completely safe and you don't have to use widgets okay but Gambit adapted to that perfectly यार वो बहुत बड़ा कूल रहता है यार कोई बंदा अगर सब्सक्राइब करता है लिखा हुआ आता है ना सब्सक्राइब और ये सिर्फ YouTube का हैक है या फिर Twitch में भी लोग हैक हो रहे हैं Gambit could have won it by now but G2 are just clinging to life in these last few scenarios and this was just ridiculously close I don't think that Shados was expecting क्या करेगा रे थोड़ा तो कोई नहीं इन वो रहती है फन रहता है ये जो लेफ्ट हैंड साइड में जो चैट चल रही है ना ये उससे नहीं है ये स्ट्रीमलैब से नहीं है जस्ट सब गोल्स रख दो दैट्स इट हाँ सब गोल्स के लिए भी वही रखना पड़ेगा ना स्ट्रीमलैब्स हाँ सॉल्यूशन बताओ we know just and we've seen just how pivotal this man can be in making those flank plays in the late round and really when you look at that B play they go in with 3 players बताओ solutions they immediately identify okay these guys are playing retake they've got a wall down मैं तो देख भी लेता हूँ we're dead we're going to get split up by that wall and taken down one at a time so what did they do instead they make that flank play YouTube in through the elbow and it almost gets them the round. I think the only unfortunate with that was the Redgar because Mixor came in on the flank. There was absolutely no way he was going to survive that. An extra second or two, maybe a single. And recover. Don't use Streamlabs. 940 views. ज़्यादा नहीं है. Maybe they're able to take that home. And he was the only one who had any vision onto the spike as well. Okay. Made it that little bit more difficult. Still though, 10-9. Crunch time again for either side. Economy hasn't been built up. The issue now though for Gambit is their weaponry is also a little bit weaker. It's सिर्फ एक बंदे की वीडियो है and it's a year ago. Welcome back to a brand new video. Maybe अब ठीक हो चुकी होगा क्योंकि एक साल पुराना है तो आउटडेट हो चुका है.
एक सोल्यूशन है, थम्स एंड चैट बॉक्स सारे डाउनलोड करके OBS में ट्रांसफर करके फिर लॉग आउट कर दो। ओ थीम्स, ओके थीम्स एंड चैट बॉक्स सारे डाउनलोड करके ट्रांसफर कर दो, लॉग आउट कर दो। सो बेसिकली वेबसाइट पे लॉग इन करने का मेल भी किया था। ओके तो मे बी वेबसाइट में लॉगिन करना इज मुश्किल, बट विजेट्स यूज करना मतलब मुश्किल नहीं, मतलब रिस्की, बट विजेट्स यूज करना इज नॉट दैट बैड, राइट? Okay. Okay. Oh, Defo. Oh, खेल गया, but ब्रा नहीं जीत गया, डेफो जीत गया। नहीं वो अल्फा क्लैश है जिसकी वीडियो है प्ले किए किसी और ने अपलोड किया है। ओह अच्छा, बट किसी और ने अपलोड क्यों किया? मतलब कि वो वीडियो क्या बैन हो गई, क्या हुआ क्या? मोटा बैन वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो जिसमें हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। एंड एक बात मैं बोलना चाहूँगा, ये मेरे यूट्यूब जर्नी का आज तक का सबसे डरावना दिन था, जिसमें मेरे हाथ में सब कुछ सिक्योर होने के बावजूद मेरे हाथ में कुछ नहीं था। तो बड़ा यूट्यूबर है। हाँ वही तो मुझे लगा कि ये पूरे दिन देखो ऐसा लग रहा है कि ये बात कर रहा है अपने स्ट्रीम से, अपने स्ट्रीम से बात कर रहा है, फिर अपने यूट्यूब चैनल बना रखा है। क्या हुआ तो उसने अपनी एक्चुअल वीडियो क्यों डिलीट करी है? मेरे चैनल पर वीडियोस अपलोड हो रहे हैं विदाउट माय परमिशन। मेरे चैनल पर ऐसा कंटेंट अपलोड हो रहा है जो कि कॉपीराइटेड है, जो कि मेरे चैनल को हार्म कर सकता है। बेसिकली मेरा चैनल 13 मई 2020 को हैक हो चुका था। ओके तो शुरू करते हैं। As you all guys know कि ओके ये देखता हूँ, ये ब्रेक में देखता हूँ अभी। ब्रेक तो चल रहा है, ब्रेक चल रहा है क्या? है ना? ओह हाउ डिड ही गेट दैट किल? अच्छा चलो रेड गेयर को मिल गया किल। सर्च अल्फा क्लैशर, ओके Seem to be closing this one out. Obviously, G2 only had the pistols, content to play for OT. Nice shot, Chronicle. Decent damage done. They dropped Shados. They almost dealt with Defo. वैंडल का हेडशॉट ना डिफरेंट ही आवाज देता है, डिफरेंट फीलिंग देता है यार, एकदम सैटिस्फाइंग क्लिप। That wouldn't be the case because Tom, they've got pistols. No one pushes holes against pistols. It's literally the only place that offers multiple close range angles, and Gambit of course did it. Oh, and I will say is some of the positions from the players on G2. Gambit 9-12 मेरे को लग रहा था कि G2 हारने नहीं देगी, मतलब हारेगी नहीं। Unless you know they can be behind you, it doesn't make any sense. Yeah, they also had a lot of people pushing out through mid, so it's like they knew. Time out होगा, time out. But then when it came, time out means video watching time. पूरा वीक स्ट्रीम करते हैं फ्रॉम संडे टू संडे, एंड मैं सिर्फ एक दिन ऑफ लेता हूँ जो कि होता है वेडनेसडे। एंड उस दिन पे मैं इसीलिए ऑफ लेता हूँ सो दैट मैं अपने फैमिली को ज़रा टाइम दे सकूँ, मैं खुद को ज़रा टाइम दे सकूँ, अपने जो पूरा वीक मेरा जा रहा है, मैं वो पूरा वीक कैसा जा रहा है मैं वो एनालाइज कर सकूँ। एंड बस यार थोड़ा मी टाइम, यार थोड़ा खुद को टाइम दे सकूँ मैं, क्योंकि पूरा वीक तीन टाइम स्ट्रीम करके इट बिकम्स वेरी टिक फॉर मी। तो इसीलिए मैं वेडनेसडे को ऑफ लेता हूँ। सो हुआ क्या था मैं आपको बताता हूँ अभी। सो ट्यूसडे का मैंने स्ट्रीम करके ख़त्म करा रात को, ठीक है। रात को स्ट्रीम खत्म करने के बाद वेडनेसडे को हम लोग सुबह हाईलाइट डालते हैं एग्जैक्टली 9 बजे को। तो रात को मैंने स्ट्रीम खत्म करी, खाना खाया, फ्रेश होने गया, नहाने गया, एंड मैं वापस वेडनेसडे की जो कि नेक्स्ट डे विच इज 13 मई, जिस दिन पे हैक हुआ ब्रो। 13 मई को सुबह को हम लोग हाईलाइट डालते हैं। तो मैं पूरी की पूरी रात जो 12 तारीख की रात है वो मैं हाईलाइट बनाने के लिए पूरी रात को मैं हाईलाइट बना रहा था। सो अराउंड मैं 2 या 3 बजे को हाईलाइट इसी का वीडियो है। तो हाईलाइट रेडी करके मैं सो गया। मेरे को लगा कि चलो ठीक है, फिर अभी सुबह आराम से 9:30 बजे उठेंगे, सभी का नोटिफिकेशन देखेंगे, कमेंट्स वगैरह रीड करेंगे और अपना नॉर्मल रूटीन चालू हो जाएगा। तो हुआ क्या, 3 बजे मैं सोने गया रात को। अराउंड 5 to 5:30 को मुझे देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉल सिर्फ स्ट्रीम जब मेरा ऑफ होता है तभी आते हैं, बिकॉज जो भी मुझसे जुड़े हुए हैं जिनको मुझसे कॉल पे बात करनी रहती है उन सभी को मालूम है कि मेरा स्ट्रीम टाइम क्या है।
तो मैं आप लोगों को बता दूं कि तो रात को 3 बजे को मैंने ये भी क्रूशियल राउंड चल रहा है 9-12 का, गैम्बिट जीत सकती है यहाँ पर या फिर G2 अपना होल्ड दिखा सकती है। दोनों के पास सेव मतलब बाय राउंड है दोनों का। रेड कार के पास अल्टीमेट है और क्रॉनिकल के पास अल्टीमेट है एंड केलॉग्स के पास एक अल्टीमेट है, सो ज्यादा अल्टीमेट्स नहीं है। FO के पास अल्टीमेट आ जाएगा बट दैट्स द ओनली थिंग। डैम ओके एंड स्पाइक डाउन हो चुका है तो नाइस G2 केलॉग्स only 1v5 actually. Yeah, Nat's left alone. He somehow still manages to get a flank play. Yeah, go on, shoot your arrow out. Yeah, good luck. But now it's a 1v4. Okay, and even with Kellogg's is 4 HP. Just needs the one bullet. Turning from the flash doesn't help all too much. Yeah, when Kellogg's his teammates to help him. G2 still has life in them. G2 just 2 away from OT. Save round होगा probably इसका Gambit का. Or Gambit has the money. I think Gambit's had the money, right? Right now, this guy is showing up on the side. 9-8 या 9-11 से जीतते हुए आ रहे हैं. Just the ability he comes in with when it comes to dueling. Okay, उसमें वाला नया वो असली वीडियो मिल जाएगा आपको क्या do? But wait. I'll do it after कोई break मिलेगा ना तब हम करते हैं. जब तक crucial time आ गया. अब सब एकदम try hard करेंगे. Incredible round from Kellogg. Nice He's starting to get that a little bit more confident. The Blade Storm throwing अभी क्या दिखा रहे हो तुम? And they're going to go for a fast push into B once again. Ultimate लगाया अभी उसने. Drone हो रहा है. Kellogg's is here waiting for them though. Hunter's Fury deployed to Vova. Good to get one kill, but he'll be taken down right after. Quick trade by Kellogg's. Trade हो गया. And he's actually repositioning. They I will think never G2 expect him to be here. अभी अच्छी position में, काफी अच्छी position में. As he even closes in the distance, that operator going in for the aggressive pick. But Chronicle is a little bit too quick. 3v3, numbers evened up. You have to ask yourself, was that aggression necessary out of G2? They might just pay for that mistake. इसके वेट कर रहे हैं. Oh, same position as the previous round. Nice G2, nice मतलब nuke. और तेरे को वापस आना पड़ेगा. Shados expects the corner. It goes back to a 2v2, and now Coldamenta is actually alone. They know that he's still here. Now they're gonna plant. Okay, that's a great shock dart. Will do at least a little bit of damage. Okay. Tickling them up, but here come the Seekers. They know that there's still a player within the side. Dart नहीं use कर because उसको wait करना है कि वो आ जाए. Reyna आ जाए. Now dart use करेगा. Shados is so nasty. That wall up, Nuki is going to have to push that right wall through is actually and just insane. Oh, he's going to be spotted. Great angle from Chronicle. And he's just buying time at this stage. Shados now coming around to play this together. They drop it in and close it Insanely out. 3 played. kills from Chronicle and Very 13 nice. rounds for Gambit. They take the first map, the surprise pick of Breed. वो Shados ने जो भी वो क्या था कौन बंदा था जो वाइपर था ना उसने जो वॉल लगा के बैठा हुआ था. That was insane. That was really well played. Okay, मुझे कोई बिल्कुल चांस ही नहीं दिया यार. अरे पवन ब्रो आजा, देखते हैं. और तेरे इंटरव्यू कैसे किया वो भी उसके बारे में भी बात करते हैं. अल्फा क्लैशर. ओके, और एक्सपोज क्या लिखा है? एक्सपोज क्या है? हैकिंग एक्सपोज. हाइड्रा अल्फा इज हैकर. वो कोई कंट्रोवर्सी चल रही होगी. खाना खा के आता हूँ. अरे मैं भी खाना ही खा रहा हूँ. खाना खाते आता है ना. मैं तो खेल थोड़ा ना बातें करते रहेंगे. इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करने वाले हैं. अगर तेरे को वैसे खाना खा के आ रहा है तो आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है. जो कि मेरे चैनल को हार्म कर सकता है क्योंकि मेरे को इसके कमेंट्स वगैरह भी पढ़ने हैं. मेरा चैनल हम कहाँ थे? ट्यूसडे का मैंने स्ट्रीम करके खत्म करा रात को. ठीक है, रात को हाथ धोया, पानी किया, सपोर्ट करी. जिनको मुझसे कॉल पे बात करनी रहती है उन सभी को मालूम है कि मेरा स्ट्रीम टाइम क्या है. तो मैं आप लोगों को बता दूं कि तो रात को 3 बजे पीसी स्लीप पे डाल के जा रहा हूँ. ओके. और मैंने सोचा कि सुबह को 9 बजे उठेंगे एग्जैक्टली जब हाईलाइट अपने आप पब्लिक हो जाएगा तब हम कमेंट्स लाइक करेंगे एंड वी विल इंटरैक्ट विद. ही वाज अ गुड गाय भाई. मतलब मर गया क्या? न्यूक्लिया का सुबह को अराउंड 5:15 to 5:30 के आसपास उसका कॉल आया था. आई थिंक पढ़ना पड़ेगा, मतलब देखना पड़ेगा. उस कॉल में वो मुझे बोल रहा है कि भाई तेरे चैनल पर क्या वीडियो अपलोड हो रहा है. मैंने बोला मैंने कुछ वीडियो अपलोड करने के लिए रखा नहीं था और मुझे लगा कि मैंने गलती से शायद 9 बजे के बदले मैंने 6 बजे कर दिया होगा उसका
टाइम। मेरे को पता नहीं क्या हो गया था, बट मैंने ऐसा सोचा था कि चलो 6 बजे हो गया होगा अपलोड। तो न्यूक्लिया ने बोला नहीं ब्रो, तू बहुत ही मेरे को गलत फीलिंग आ रही है। तो न्यूक्लिया ने बोला कि जल्दी जल्दी वीडियो चेक कर और डिस्कॉर्ड अपने पीसी से आ। तो मैं फटाफट अपना फ़ोन खोला, माई वीडियोस पे क्लिक किया और माई वीडियोस में मुझे देखो यहाँ पे आप लोग को दिखेगा मेरे को कौन सा थोड़ा स्किप करके देखो पे डाल दूंगा। तो तुम उस वीडियो 15-20 मिनट में सही है ने कैसे बहुत हेल्प करी वहाँ पर एंड बताया। अच्छा थोड़ा ना क्या स्पीड बढ़ा पीसी चेक करके तेरा पीसी तूने कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड तो नहीं किया, कोई फ्रॉड एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया, तूने कहीं पे अपना आईडी पासवर्ड डाला कि नहीं, सब चेक करवाया न्यूक्लिया ने मेरे से। एंड न्यूक्लिया था एंशिएंट था सुबह को, पता नहीं ये लोग कैसे यार, पता नहीं मैं इतना खुश नसीब हूं कि मुझे कोई भी जब मेरे अरे हाँ बस तलवे चाटना बंद कर भाई। डिस्कॉर्ड को पूरा मैनेज करता है। तो उसने डिस्कॉर्ड पर बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे थे वहां पर, क्योंकि सुबह जब 9 मिनट बताओ तो हैक के बारे में 300 to 400 व्यूज आपको दिखा रहे होंगे वहां पर। तो 9 मिनट ऐसे लग रहा है कि 10 मिनट का टाइमलाइन पूरा करना चाहता है। वो वीडियो में 300 लोग थे, वो लोग को लगा कि कुछ गड़बड़ है चैनल को, तो उन लोग ने सभी डिस्कॉर्ड पे टैग किया। तो डिस्कॉर्ड पर फिर एंशिएंट को देखा कि भाई सब क्या चल रहा है। तो न्यूक्लिया और एंशिएंट ने सब कुछ चेक करवाया और तब तक देखा तो बीटी भी आ गया था, न्यूक्लिया आ गया था। ओवरऑल देखा तब तक कौन-कौन मेरे साथ हेल्प करने आया था, वो बीटी, न्यूक्लिया, मिश्रा जी, हां और साइड वाला कॉकरोच और उसके बहन और उसके भाई सब आ गए थे। भाई तेरा क्या है, हम लोग देखते हैं, तो टेंशन मत ले, चल कर यूट्यूब को मैसेज कर, मेल कर, कुछ नहीं होगा। देखो देखा जाए तो मुझे इतना ज्यादा कुछ डर नहीं लग रहा था, बिकॉज़ हम लोग का 1 मिलियन का चैनल है, इतनी मेहनत करके 1 मिलियन पहुंचे हैं। जितना इसको डर नहीं लग रहा था उतना इसको डर लग रहा है बताने में सारी चीजें। बताऊं ऑब्वियसली होगा, बिकॉज़ जिस YouTube चैनल पर हम लोग दिन में 3-3 बार 9-9 घंटे काम करते हैं, जिस YouTube चैनल पर, वो YouTube चैनल किसी और के हाथ में हो, वो सोचकर ही कितना डर लगता है। तो द थिंग मैं सोच के डर लग रहा है एक्चुअली, में तब डर नहीं लग रहा था इसको। मैंने वीडियो प्राइवेट कर डाली, बट आई डोंट नो हाउ, जैसे मैंने वीडियो प्राइवेट करी उसके 2 या 3 मिनट बाद ही उस बंदे ने वो वीडियो डिलीट कर दी। तो तब तक तो भाई साहब मेरा तो पूरा दिमाग खाली हो गया, कुछ चल नहीं रहा था, बिकॉज़ मैंने 2 स्टेप डाला था, मैंने आईडी पासवर्ड सब किसी को नहीं दिया था, मैंने अपना आईडी पासवर्ड ना ही मैं कहीं नोटपैड वगैरह में सेव करता हूं, मैं अगर भूल जाता तो मैं रीसेट कर देता हूं, मैं कहीं नोटपैड वगैरह में सेव नहीं करता, मैं किसी को देता भी नहीं आईडी पासवर्ड, कुछ भी मेरी तरफ से कोई फॉल्ट नहीं था। और अभी तक बंदे ने अपना पासवर्ड रीसेट नहीं किया क्या? मतलब इतनी सारी बातें चल रही हैं, सबसे पहली बात तो ये होनी चाहिए कि अपना पासवर्ड रीसेट करो। मेरा भी अकाउंट अभी वैलोरेंट का हैक हुआ था, मैंने बोला कि अब तो गेम के अंदर अब क्या करूँगा, तो गेम से बाहर निकल के मैंने आती उसको वो किया था, रीसेट किया था। बिकॉज़ मैं अराउंड ये YouTube में मैं 2-3 साल से हूँ और ऑलरेडी जब न्यूक्लिया वगैरह का जब YouTube चैनल किसी सबका बैन हुआ था, तभी मैंने सभी चीज़ें एक बार अच्छे से सेट कर दी थी कि इनको ऑलरेडी प्रॉब्लम हुई है तो वो प्रॉब्लम मुझे ना हो। तो मैंने बोला ठीक है, तो अभी क्या करूँ मैंने, तो फिर मेरे को एंशिएंट ने सजेस्ट किया कि आप YouTube पे जाओ और YouTube को मेल करो कि आपके साथ ये हुआ है। तो फिर मैंने YouTube को मेल करा वहाँ पर, फिर मैंने बोला कि चलो तो मैं अभी सोच के कुछ फायदा नहीं, बिकॉज़ मेरे हाथ में भी और कुछ नहीं है, जो मैंने जितना कर सकता था मैंने सब कर दिया, मैंने आईडी चेंज कर, मैंने पासवर्ड चेंज कर दिया, रिकवरी ईमेल चेंज कर दिया, सब कुछ चेंज कर दिया मैंने अपना पूरा ईमेल, ठीक है। तो उसके बाद फिर मेरे को टेंशन तो हो ही रही थी, फिर मैं थोड़ा रेस्ट लिया, मैंने थोड़े दोस्तों की बात सुनी, चलो बातें कर रहे थे, तो बग हाईलाइट 9 बजे तक अपलोड हो चुका था। फिर तो 9 बजे हाईलाइट अपलोड हो गया, वो वीडियो डिलीट हो गया था वो बंदे का, बट अभी भी मेरे माइंड में तो था ही कि जब मेरा अकाउंट फुल सिक्योर था उसने वीडियो अपलोड कर दिया, तो अभी भी क्या चांसेस है, अभी भी चांसेस तो है कि वो वीडियो अपलोड कर ही सकता है। तो पूरा दिन चला गया, अराउंड 9 बजे हो गया, 9 से मैं फिर मैं सोने चला गया, पूरी रात सोया नहीं था, बट फिर भी मेरे माइंड में वही चल रहा था कि अभी फोन आएगा किसी का और वीडियो अपलोड हुआ, अभी फोन आएगा किसी और वीडियो अपलोड हुआ। तो वैसे दोपहर को 2:30 को मैं उठा, 2:30 को उठने के बाद मैंने अपने इंस्टाग्राम हाईलाइट पे ध्यान दिया, क्या हम लोग और नया कर सकते हैं, मैंने अपनी स्ट्रीम्स वापस देखी कि क्या हम लोग और कर सकते हैं। फिर अराउंड 5:30-6 बजे को मैं जैसे फ्रेश होकर नाश्ता पानी कर रहा था, मॉडरेटर का बैठा था, मेरे को एक फोन आया मेरे मॉडरेटर का, जो कि हमारे पूर्व पटेल है, जो कि हमारे मॉडरेटर हमेशा रहते हैं, उसका कॉल आया, भाई मुझे नोटिफिकेशन है और एक वीडियो अपलोड हुई। मैंने बोला कि क्या हो रहा है, ये 6 बजे एक्जैक्टली 6 बजे थे, मुझे मालूम है ये एक्जैक्टली 6 बजे थे, और उसने तुरंत मुझे फोन लगाया था एक्जैक्टली 6 बजे को एक और वीडियो अपलोड हुई। मैं भी उसका भी आपको मैं खुद एक और बार पढ़ के बता देता हूं। तो जब उसका कॉल आया कि नया वीडियो अपलोड हुआ है, मेरी पूरी मैंने अपना बेस्ट कर दिया था, मैंने अपना कंप्यूटर का भी पासवर्ड, जो मतलब स्टार्ट पर जो अपना सीपीयू पे प्रेस करते हैं बटन, जिससे पूरा कंप्यूटर बूट अप होता है, फिर आईडी पासवर्ड मांगता है, फिर कंप्यूटर में एक्सेस एंटर करते हैं हम लोग, तो मैंने वो पासवर्ड तक चेंज कर दिया था कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए इसके बाद ऐसा कुछ अपलोड हो। फिर भी एक्जैक्टली 6 बजे अराउंड 5:53 को वीडियो अपलोड हुआ, पूरी फट गई थी मेरी। तो वो वीडियो का टाइटल आपको यहाँ कहीं डाल दूंगा, यहाँ जगह, तो वहाँ पे उस बंदे ने टाइटल डाला, इट्स नॉट योर फॉल्ट दैट आई कैन डू दैट, मतलब उसका वो मुझे बोल रहा है कि अल्फा तेरी गलती नहीं है कि मैं ये वीडियो अपलोड कर सकता हूं, आई वांट टू हेल्प, ये टाइटल उसने डाला आई वांट टू हेल्प, एंड उसने डिस्क्रिप्शन में भी डाला आई वांट टू हेल्प। उसके पहले भी उसने मुझे बोला था कि आई वांट टू टॉक, लेट्स टॉक, आई एम अ गुड हैकर। तो कहीं ना कहीं लग रहा था कि यार इस बंदे को अगर मुझे प्रॉब्लम करनी होती तो या तो फोन वीडियोस डाल सकता था, या फिर अब तक बहुत सारी चीजें कर सकता था जिससे मेरी चैनल को ऐसे ही प्रॉब्लम हो जाती, 3 स्ट्राइक आ जा सकती थी, 3 वीडियो अपलोड कर सकता था। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि एटलीस्ट अब मैं क्या करूं, क्योंकि फिर मैंने अपने सभी मेरे जो कॉन्टैक्ट्स हैं मैंने उन सभी को कॉल किया, क्या हो रहा है, किसी को कुछ आइडिया कि नहीं है। तो उसी टाइम पर ऐसा कुछ हुआ कि ये जो बंदा है, ये जो हैकर है जिसने ये 2 वीडियोस अपलोड करी है, इस टाइम तक मुझे माइंड में क्या था, इस टाइम तक मुझे मेरे माइंड में ये था कि ये बंदा कर क्या रहा है एटलीस्ट, क्योंकि ये बंदा मेरे चैनल को कुछ प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, मेरा आईडी पासवर्ड चेंज नहीं कर रहा है, ना ही मेरा अकाउंट पूरा यूट्यूब का किसी और अकाउंट में सेट कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ वीडियो अपलोड कर रहा है। तो मुझे समझ में आता कि बंदा एक्चुअली चाहता क्या है। तो और प्लस ऊपर से वो हेल्प लिख रहा था, तो ये पूरे मेरे माइंड में एक मिस्ट्री बन चुकी थी क्या हो रहा है एक्चुअली। तो तभी हम लोग ने सर्च किया, वापस यूट्यूब को मेल किया कि देखो भाई जस्ट अभी एक और वीडियो अपलोड हुआ है, ये देखो मैं आपको यूट्यूब का ईमेल भी बता दूं एक्चुअली हम लोग ने करा था मेल 6:25 को, 6 बजे को मैं प्राइवेट करा वीडियो, वो भी अपने आप डिलीट हो गई, सेकंड वीडियो जो मैंने प्राइवेट करी थी वो भी अपने आप डिलीट हो गई। 6:25 को मैंने यूट्यूब को वापस मेल करा कि भाई ये 2 फोटोज लो, ये सुबह की वीडियो है, शाम की वीडियो है, सुबह को ऐसा हुआ, शाम को ऐसा हुआ, सभी मैंने यूट्यूब को भेज दिया लिखकर। सो तब तक हुआ क्या था कि सुबह को ये हुआ था, सुबह को बहुत सारे लोगों ने नोटिस नहीं किया था ये कि मेरे चैनल पे ऐसा वीडियो अपलोड है जो कि मेरे परमिशन के बिना हो रहा है। तो बट हुआ क्या, शाम की जो वीडियो थी ना वो थोड़ी लेट रिकॉग्नाइज करी मैंने, 7 मिनट हो गए थे और ये 7 मिनट में 4700 व्यूज आ गए थे। तो वो 4000 लोगों को इतना तो मालूम पड़ चुका था कि ये बंदे के चैनल में कुछ तो प्रॉब्लम है। तो उन सभी लोगों ने मेरे डिस्कॉर्ड पर आए एंड डिस्कॉर्ड पर स्पैम करना चालू कर दिया कि अल्फा के चैनल को कुछ हो गया है, प्लीज उसके मॉडरेटर्स उसको इन्फॉर्म करो। तो सभी लोगों ने कर दिया इन्फॉर्म, बट ये जब स्पैम हो रहा था
तभी एक बंदा ऐसा था जिसने सेम कैट इमोजी डाला था, जो कि मेरे फर्स्ट वीडियो पे था, जिसका कैट का पियानो बजाने वाला था, वो सेम डीपी रखा था उसने, एंड उसका प्रोफाइल पिक्चर भी ऐसा था, सेम ही था पूरा। तो उसने लिखा भी था कि आई एम द वन हु कैन हेल्प अल्फा क्लैशर, एंड उसने वो भी लिखा आई एम द वन हु हैज अपलोडेड अ वीडियो। तो हमको लगा कि भाई ये कोई भी यार ट्रोल कर रहा है हम लोग को, डिस्कॉर्ड कर सकता है कोई भी हो सकता है, जान देते हैं। बट फिर भी मैंने मेरे एक मॉडरेटर है यशराज करके, उसने बोला कि नहीं भाई जस्ट इन केस अपन बात कर लेते हैं क्या जाए। तो हम लोगों ने उनसे बात करी, यशराज ने जो है उनसे बात करी, एंड वो बंदा लिटरली बोल रहा है कि मेरे पास ये जो वीडियो अपलोड करी है वो मैंने करी है, एंड आई कैन डू मोर, आई कुड हैव अपलोडेड पॉर्न एज वेल, आई कुड हैव अपलोडेड कॉपीराइटेड कंटेंट एज वेल, एंड मैं बहुत कुछ कर सकता था चैनल को, ऐसा वो बोलना चाहता था। तो वो बंदा जर्मनी से, बाय द वे मैं आपको बता देता हूं, अभी मुझे पता है बिकॉज़ मैंने उससे बात भी करी है। तो हुआ क्या था, वो बंदे ने बोला कि मेरे पास मैंने चैनल पे वीडियो अपलोड करा है। तो एट दिस टाइम जो मेरा मॉडरेटर है वो ऑब्वियसली कॉमन सेंस लगाएगा कि कोई भी बंदा ट्रोल करने के लिए तो बोल ही सकता है कि भाई मैंने वीडियो अपलोड करा है। तो मेरे बंदे ने जो मॉडरेटर है उसने बोला कि भाई कुछ तो मुझे प्रूफ दिखा कि तूने वो वीडियो डाला है। तो भाई उसने प्रूफ दिखाया है भाई मेरी, अच्छा हाँ बीप 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 प्रूफ मांगा, उसने तो प्रूफ दिखाई है, मेरी पूरी फट गई। मैं बोला कि इतना लूप होल कैसे कोई ढूंढ सकता है। तो हुआ क्या था एग्जैक्टली, जब प्रूफ मांगा मैंने हैकर से, जब प्रूफ मांगा हमारी टीम ने, जो कि यशराज है, उन्होंने हैकर से, तो सो हुआ क्या, उस हैकर ने एक लाइव स्ट्रीम का लिंक भेजा, जो कि वो रहती है 1 साल की लाइव स्ट्रीम जो कंटिन्यूस चलती रहती है, उस स्ट्रीम का लिंक भेजा, और उसको मेरे जो मॉनिटर है उसको बोला कि आप ये स्ट्रीम पे जाओ। मेरा मॉनिटर स्ट्रीम पे गया और उसने बोला कि आप देखो चैट देखो। तो थोड़ी देर हुई ना, सेकंड्स हुई, उसके बाद चैट, उसके बाद मेरे मॉनिटर ने कुछ ये देखो यहाँ पर अल्फा क्लैशर से वहां पर मैसेज हो रहा है, और उसने लिखा है, देखो मैं बताता हूं क्या लिखा है, कंफर्म बोलता ना पूरा। उसने देखा कि वहां पे चैट में लिखा हुआ है प्रूफ इनफ, आई जस्ट वांटेड टू प्रोटेक्ट योर ब्रदर्स अकाउंट, प्लीज इन्फॉर्म हिम। तो मेरी अब तक तो भाई कि मेरे को थोड़ा अच्छा भी लग रहा था, बट मेरे को डर भी लग रहा था कि ये अब तक मुझे कुछ मालूम नहीं था कि इस बंदे की इंटेंशन क्या है, और इस बंदे ने ये तक प्रूफ कर लिया कि ये सब इसने करा है। प्लस साथ ही साथ इसने यशराज को एक और स्क्रीनशॉट भेजा, आपको वो भी यहीं पे दिख जाएगा। स्क्रीनशॉट में लिखा है कि ऊपर देखोगे आप एकदम टॉप लेफ्ट में, तो वहां लिखा है लॉग्ड इन एज अल्फा क्लैशर, ये दूसरे लैंग्वेज में लिखा है, बट ये लॉग्ड इन एज अल्फा क्लैशर लिखा है। उसमें रिसेंट वीडियो दिखा रहा है जो कि अपलोड्स है मेरे, देखो आप ट्रांसलेशन देखोगे ना, तो वहां पे लिखा है अपलोड्स। तो ये सब देख के मेरे को लिटरली इतना ज्यादा वो हो रहा है ना कि टेंशन हो रहा है कि भाई ये बंदा क्या क्या कर सकता है मेरे चैनल के साथ। तो इसका नाम क्यों ब्लर्ड है, हम लोग को इसका कांटेक्ट मिल गया कहीं ना कहीं, ठीक है बात है। फिर मेरे मॉडरेटर्स में क्या ऐसा हो गया, यशराज हो गया, मैं हो गया, मिश्रा हो गया, फिर हम सब मिलकर उससे बात करने कि भाई क्या हो गया, आपको क्या चाहिए मुझे हमें बताओ। इफ हम लोग की तरफ से कुछ प्रॉब्लम हुई आपको, तो हम लोग जो भी होगा हम लोग बात करके निपटा लेंगे। तो हम लोग के साथ बात करेंगे। तो वो जो बंदा था वो थोड़ा टेंशन में गया, बोलता मैं इतने सारे लोगों से बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ अल्फा क्लैशर से बात करूंगा। तो ब्रो दिस इज सो डिस्ट्रैक्टिंग। मैंने बात करी, उससे बात करने गया मैं, फिर उसने जो मुझे बताया चल क्या रहा है मेरे लिए कि कैसे हो गया ये, क्यों हो गया ये, तो समझ में नहीं आ रहा अभी ये जो बोल रहा है वो सच बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, बट छोटे मोटे प्रूफ्स है कि जिससे मुझे यकीन हो रहा है इस बंदे पे। तो मैं आपको बता देता हूँ। तो मैंने इससे बात करी, रिकॉर्डिंग वगैरह कुछ करी है, वो मैं रिकॉर्डिंग जितनी भी मुझे लगेगी मुझे आपको बतानी चाहिए उतनी मैं भी कटआउट करके आपकी स्क्रीन पे दिख जाएगी अभी। तो इस बंदे ने बेसिकली मुझे ये बताया कि अगर आप किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट को एक्सेस देते हो, लिंक देते हो अपने YouTube के साथ कुछ छेड़खानी करने का, तो आप इजीली ये सब हो सकता है तुम्हारे अकाउंट के साथ। मैंने बोला कि मैं समझ नहीं रहा एक्जेक्टली क्या हो रहा है। तो उसने बोला कि हो रहा है स्ट्रीम लैब्स की वजह से, जो तुम्हारा स्ट्रीम लैब्स से, इफ यू गाइस डोंट नो व्हाट इज स्ट्रीम लैब्स, अगर आपको नहीं पता मैं आपको सिंपल भाषा में बता देता हूं। स्ट्रीम लैब्स एक ऐसा एप्लीकेशन है जो डोनेशन स्ट्रीम ऐसा ऑन स्क्रीन दिखाता है, किसी ने डोनेट किया ना तो आएगा कि XYZ डोनेटेड 10 रुपीस ऑन सुपर थ्रू सुपर चैट, एंड फिर अगर किसी ने सब्सक्राइब किया मेरे चैनल को तो उसमें लिखा आएगा कि XYZ हैज जस्ट सब्सक्राइब टू योर चैनल। तो ये सब काम करता है स्ट्रीम लैब्स, और बाद में जो एनालिटिक्स होती है स्ट्रीम की वो सब स्ट्रीम लैब्स में दिखती है। तो मुझे तो लगा था कि इतना ट्रस्टेड वेबसाइट है, आई डोंट थिंक कुछ होगा। उसने बहुत सारी इंटरनल चीजें बताई मुझे कि ये हो सकता है, ये टोकन निकाले मैंने, और वो बंदा लिटरली एक जो प्लेटफॉर्म होता है ना लिनक्स वगैरह, उस प्लेटफॉर्म पे भी था। तो मुझे और डर लगा था कि ये बंदे को लिटरली कुछ ना कुछ, क्योंकि ये बंदे को थोड़ा तो नॉलेज है, बिकॉज़ वो लिनक्स वगैरह डाउनलोड करके बैठा है, वो थोड़ा कोड्स निकाल रहा है यहाँ वहां से। फिर उसके खुद ने वेबसाइट एक एप्लीकेशन डाउनलोड किया है, उसने मेरे सामने लॉगिन करा, और उसने मेरे पास जो मेरे लाइक वीडियोस थे ना, अभी पिछले जो कैरी मिनट का टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब का वीडियो था वो मैंने लाइक करा हुआ है, तो वो भी वहां पे स्क्रॉल में उसने दिखाया। फिर एक म्यूजिक था जो कि मैंने लाइक करा हुआ है, वो भी उसने दिखाया। अरे भाई अगर लॉग्ड इन है तो मैंने उसको सिंपली पूछा कि आपको चाहिए क्या, मेरे से क्या चाहिए। तो उस बंदे ने मेरे को, मैं सोच रहा था उस बंदा ऐसा रिप्लाई देगा, उस बंदे ने इतना बोला मुझे कि भाई मुझे पता है YouTube पे आप इतनी रीच है आपकी, इंग्लिश में बोला सब उसने। तो उसने बोला कि भाई YouTube पे आपकी इतनी रीच है, आप YouTube से कमाते हो, इतनी अच्छी फैन फॉलोइंग है आपकी, तो मैं नहीं चाहता कि कोई बुरा बंदा एक अच्छे बंदे के साथ या फिर एक अच्छे मेहनत करने वाले बंदे के साथ कुछ बुरा करे। एंड मैं यहाँ पर बुरा नहीं हूँ, अगर मुझे बुरा करना होता, अगर मुझे मेरा कुछ फायदा करना होता, तो मैं अपने दोनों वीडियो अपलोड करे हैं उसके डिस्क्रिप्शन में अपना प्रमोशन कर दिया होता, या फिर मैंने पॉर्न अपलोड कर दिया होता। तो मैंने बोला कि ठीक है। तो एक्जैक्टली उसने फिर मैंने बोला कि अभी एक्जैक्टली ये लूप होल आपको कहाँ मिला है। तो उसने बोला कि ये लूप होल मिला है मुझे स्ट्रीम लैब्स में, आपने स्ट्रीम लैब्स कनेक्ट करा है, और स्ट्रीम लैब्स कनेक्ट करने के टाइम आपसे स्ट्रीम लैब्स कुछ एक्सेस मांगता है। तो एक्सेस मैं आपको बता रहा हूँ, और मैंने खुद ये देखा कि मैं पूरा शॉक हो गया था कि भाई ये क्या एक्सेस टोकन होता है। तो लॉगिन करने के बाद यहाँ पे हम लोग YouTube पे लॉगिन करते हैं, एज यू गाइस नो, एंड यहाँ पर हम लोग अपना यहाँ पे ईमेल आईडी सिलेक्ट कर लूंगा मैं अपना। सो अभी ये मेन चीज है जो उसने मुझे बताई, ठीक है। तो स्ट्रीम लैब्स वांट टू एक्सेस योर गूगल अकाउंट, मैंने बोला ठीक है। फिर उसने बोला कि पढ़ो नीचे क्या लिखा है, दिस विल अलाउ स्ट्रीम लैब्स टू सी एडिट permanently delete your YouTube video rating, comments and captions। तो ये उसने मुझे बताया। ये उसको ब्लर करना हो कि मुझे अभी तक ब्लर का ध्यान आ रहा है, ये उसको ब्लर करना था, बट पता नहीं जो एडिटर था इस वीडियो का, जो भी एडिट कर रहा था इस वीडियो को, वो भूल गया कि पुराना वाला हटाना था ब्लर। ये मुझे रीजन अभी तक चल रहा है स्ट्रीम लैब्स। तो मैंने बोला कि आई डोंट नो उस रीजन की वजह से ये ब्लर था। आप एक बार उसके नाक किसने ब्लर हो रखे थे, अनलिंक कर दो, ठीक है। तो मुझे बेसिकली ये बोला कि देखो आप द ब्लर इज गॉन नाउ को एडिट करने का एक्सेस दे रहे हो, परमानेंटली डिलीट करने का, YouTube वीडियो को डिलीट करने का एक्सेस दे रहे हो, ये सब एक्सेस आप किसी की थर्ड पार्टी को नहीं देना चाहिए। तो मैंने बोला बात तो इसकी सही है। फिर इसने मुझे बोला कि आप एक बार अपने YouTube अकाउंट पे जाओ और ये स्ट्रीम लैब्स जो है ना उसको डिस्कनेक्ट कर दो एक बार। तो मैंने सोचा कि ये कोई इसका मूव तो नहीं हो सकता, तो फिर मैंने सोचा समझा, और मुझे लगा कि इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो मैंने सिर्फ अपना स्ट्रीम लैब्स अकाउंट डिस्कनेक्ट कर दिया YouTube से। उसके बाद उसने मुझे एप्लीकेशन में दिखाया उसके कि वो कुछ कर नहीं पा रहा, इतना कुछ भी नहीं कर पा रहा है, मेरे चैनल को एक्सेस नहीं कर पा रहा है, वो मुझे वापस वो लाइव वीडियोस नहीं दिखा पा रहा है, वो मुझे मेरे रीसेंट अपलोड्स नहीं दिखा पा रहा है। उसने पहले जब हम लोग मिले थे डिस्कॉर्ड कॉल पे बात करी, उसने स्क्रीन शेयर करा मेरे साथ
साथ, उसने मुझे हर एक चीज दिखाई स्टार्टिंग से एंड तक, उसने कैसे मेरे लाइव वीडियोस तक पहुंचा, मेरे अपलोड्स तक पहुंचा, कैसे उसने वीडियो अपलोड करा, सब बताया उसने। I got जैसे ही मैंने स्ट्रीम बोला कि it. वो बात है, मुझे अभी भी 100% भरोसा नहीं हो रहा है इस बंदे पे, कुछ लॉगिन नहीं करा मैंने आपका, क्योंकि भी तक चैनल को पूरे 13th of May 2020। So basically what happens is there's something called the OAuth 2 protocol, okay? OAuth 2, ठीक है, ये ऑथराइजेशन वर्कफ्लो होता है। तो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इज, अगर आप चाहते हो कि आपका स्ट्रीमलैब्स का अकाउंट आपके यूट्यूब के अकाउंट से कनेक्ट हो जाए, तो यू कैन डू इट इन मल्टीपल वेज। एक तो ये हो गया कि यू कैन आस्क द यूजर टू क्रिएट योर ओन अकाउंट। तो अगर आप अभी स्ट्रीमलैब्स पे आते हो एंड इफ यू कम हियर एंड यू सी द लॉगिन वाला बटन था ना, आई विल ओपन इट इन इनकॉग्निटो एंड शो यू गाइस। स्ट्रीमलैब्स के अंदर इफ आई कैन कैप्चर दैट विंडो, वेट 1 second, Streamlabs, can I capture it? Maybe I cannot, so I'll have to move to display capture for now. Okay, कौन सा display capture हो रहा है? ये वाला नहीं, ये वाला। हाँ, if you see ये incognito window है edge की, तो इसके अंदर यहाँ पर लॉगिन का बटन है ना, ये लॉगिन के बटन के दबाने के बाद यहाँ पर लॉगिन, मान लो यहाँ पर लॉगिन का बटन नहीं होता है, यहाँ पर होता है साइन अप का बटन। यहाँ पर तो साइन अप कर सकते हो, कंटिन्यू विद कर सकते हो, ना, यू हैव दीज ऑप्शंस। अगर ये नहीं होता है, लाइक यहाँ पर अगर आप अपना खुद का अकाउंट नहीं बनाओगे, जो बनेगा @streamlabs.com, देन यू कैन डू वन थिंग, यू कैन कनेक्ट विद योर एग्जिस्टिंग अकाउंट। नाउ एग्जिस्टिंग अकाउंट में कनेक्ट करने के लिए देयर इज लाइक वन ऑप्शन विच आई शोड यू प्रीवियसली, कि वो यहाँ पर आपका वो रहता है ना OAuth 2 वाला। इसमें क्या होता है, एक एप्लीकेशन आपके दूसरे एप्लीकेशन को जो पासवर्ड और यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं भेजेगी, वो कुछ सीक्रेट टोकन भेजेगा, ठीक है। तो यूट्यूब आपके स्ट्रीमलैब्स को सीक्रेट टोकन भेजेगा। अगर वो सीक्रेट टोकन कहीं किसी के हाथ में लग जाता है, देन देयर इज़ अ चांस कि वो सीक्रेट टोकन जो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रीमलैब्स को जाना था, वो उस बंदे के पास चला गया एंड वो अपने स्ट्रीमलैब्स के अकाउंट से ये कनेक्ट कर सकता है, यू नो, आपके यूट्यूब चैनल को एक्सेस कर सकता है। उसने अपने स्ट्रीमलैब्स का अकाउंट नहीं यूज़ किया, उसने एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन बनाई, जो ये बंदा बता रहा था कि हैकर ने क्या किया, अपना ही एप्लीकेशन बनाई जो स्ट्रीमलैब्स को वो मिमिक करता है, ठीक है, उसको ऐसा बिहेव करता है कि स्ट्रीमलैब्स है वो। एंड दैट एप्लीकेशन हैड द कोड, द सीक्रेट टोकन। सो हमेशा ऑप्शन रहते हैं वेन एवर यू ट्राई टू, यू नो, अभी मैं दिखाऊँ इस पर डिस्प्ले कैप्चर पे करके। यहाँ पर जैसे आप कंटिन्यू विद यूट्यूब करोगे ना, ये देख रहे हो, ये सारी ऊपर आइडेंटिफायर OAuth 2 से शुरू होता है, ये OAuth 2 ऑथ आइडेंटिफायर रिस्पॉन्स कोड, ये सारी चीज़ें ना, ये आपको बताता है कि ओके आप कहाँ पर लॉगिन कर रहे हो एंड ये जो हम कोड आप बना के देंगे वो किसको जाना चाहिए। तो किसी तरीके से उसके ब्राउज़र पे उसके पास एक्सेस था या किसी और चीज़ के साथ उसके साथ एक्सेस था कि उसने वो वाला कोड चुरा लिया। Now this video was made कितने साल पहले बनी थी, कितने महीने पहले बनी थी ये वीडियो? This was made at 2020, so more than a year. I think कि अब तक तो OAuth 2 और Streamlabs ने अपना अपग्रेड कर लिया होगा and this is a old video actually. So I think अभी तक ठीक हो चुका होगा। एंड बात यह है कि यही सेम वाला टेक्नोलॉजी, सेम वाली कोड, यू यूज़ इट एवरी टाइम, यू यूज़ इट एवरीवेयर। अगर आप Valorant में जाओ एंड यहाँ पर आपका रहता है, तो दैट्स अनदर लाइक, यू नो, OAuth 2 वाला इंटीग्रेशन में टॉप राइट में रहता है। डिस्कॉर्ड को आप अपने यूट्यूब से कनेक्ट करके रखते हो, तो वो तो आप करके रखना ही पड़ेगा ना आपको, मतलब यू नीड द नोटिफिकेशन, यू नीड एवरीथिंग। तो अब उसका क्या ऑल्टरनेटिव? देयर इज़ नो ऑल्टरनेटिव फॉर दैट। तो I think this is a old video and we should be good to go, and you should also like not worry about it so much. I believe so, because software technology के उसमें बहुत जल्दी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, like बहुत जल्दी अपडेट्स आ जाते हैं। So IT डिपार्टमेंट के अंदर, you know. Okay, coming back to the game. Give me 1 second. Very little room for error, rather. 30 seconds left. Yeah.
Mixwell can drop another one here. It's already a successful round. The worry, though, is that Shados already has his Empress online, and although with most weapons, like, you wouldn't really be too worried. Like, it's not going to be the most impactful ultimate in the world. Yeah. When you go into a bonus round with a Spectre, I start to worry a little bit more. He can be very aggressive. Gambit the weapons fire rate gets even higher than it already is, and he heals up and escapes. Shados is on Reyna. Shados is a Reyna he's been doing player. pretty well for himself. Starting this one out. Okay. Never mind. Never mind, it's not Spectre anymore. That's a slightly better Spectre, isn't it? Vandal to play with. Now that's something else. And look at Gambit, 2-0 up. This round would mean so much for them. And on the attack side, they can set the pace with this Vandal, look to pick it up if it goes down. We're going to keep an eye on Shados for this early fight. Because you can see there's aggression coming out of Nukia. He's gone up on top on the pipes, and Shados is looking to shut him down. The aim looking right for an now, angle onto some of these players. Of course, no info on exactly where I they like are. the Reyna pick. And also Reyna is good at icebox, you know. You can just get one kill, you can go super aggro, get one kill and then run all the way back keeping them at bay for now. into safety. Yeah, I like the fact that they've also deep walled into mid. We know how much shenanigans Nats likes to get up to, and speaking of shenanigans, he's trying to push a probe on the B side, make some space for the rest of his team. Kellogg's has got to get the timing right here. If he misses the move, that could be the end of the round, and I almost wonder if his teammates are going to come true and try and bait a little bit for him here. Give him that extra space while Kellogg's is fighting on the other side. I think that's it. Just kind of act like they don't know what's going on. They don't know that Kellogg's is around this area. Well, they're actually maybe they actually back. don't know. Yeah, looks like it. Kellogg's backing off, though, still. They have managed to get an ult orb over on the Gambit side. Shut down to Defo. Little bit more, maybe. But that's Spectre picking up the frag. This sells a fake completely. They've used their ice wall. Multiple players were spotted, and now the pressure is on. Nukia needs to make a big hold as his teammates rotate around to help him. If he's caught up on top, he will be putting his team in a pretty rough position because he's now fallen, and Mixwell trying to fight his way back in. It's lit so heavy, he can't even try to make that fight. He does manage to escape, though. I believe that might be some extra HP given over via Vova. The only problem is that Redgar's also found that remaining player looking to try and push through. Shados above, he's spotted. Oh, he's going to jump almost directly onto his head, going for the Goomba stop and leaving Mixwell to try and save this. It's a bonus round victory for Gambit. Another stellar I think he was thinking of knifing him. Yeah, that was gorgeous. Just drop shot. Shados with right up behind Shados, legendary 8-1, performance. and kicking it off with a 3-0 start. Like you said, Tom, that is not ideal. This is a round where damage, 3 kills, for example, would have been pretty much enough for Gambit. They would have been happy, especially because the ult they did commit was the Empress. It's not the biggest of deals to commit that and lose out on the round, especially when you've got Spectres. But now G2 are left on pistols, and this should be a stellar start to Gambit's attack. Yeah, they have a couple of ultimates being close to being online. I think Mixwell's just going to use his poison orb. That's good, that's good. That's a dart to break the at least a little bit different. Now, I think they were going to try and 3-man fight for the other one at the same time, but that's not exactly gone to plan. They're getting slaughtered, leaving Kellogg's alone, and that is a beautiful hold coming out from that attacking side to make sure game शुरू होगा next round now, से. the rotations come in, unfortunately, not really in a spot where the ultimate is now worth using. Yeah, that wall's going to be put down as well, so any sort of spam potential of Vova had completely out of the question. And a ranged fight. Not going to be ideal for Mixwell. He's not putting his wall down. He thought about it, was going to just push up, but he goes for the fights, just heads up. He was like, अगर मैं wall डाल देता हूँ तो मेरी information तो पक्का पता चली जाएगी. फिर 1v1 है तो घुमा फिरा के मार देंगे. Maybe if I peek right now, I can get someone who's not looking at his screen. You know, कीबोर्ड माउस से हाथ डाल लिया हो किसी ने अपने आंखें बंद कर लिया, किसी को छींक आ गई हो. And a lot of the time, he's the difference maker. He's got 10 kills already, Mitch. We're going into round 5. That happens. So. Like, if he could somehow keep up this pace, well, we could be looking at the semi-final over within the next 10 minutes. That's a pretty ridiculous thought, actually. Now that way. Yeah, a lot of us care. Nice saying the Gambit were going to be our saviors for EMEA Valorant, and G2 sure did put on one hell of a show up against Sentinels. They really won our hearts in that one. So this series up in the air when you think about who should be walking away with it. Well, as we're seeing right now, Gambit looking like the much stronger team in these formative rounds, already up a map and up a man advantage as well. Nats creeping through that Viper's pit, and he's walked right by Mixwell.
It could go one of two ways. Okay. If they don't check for Mixo and he gets a couple of kills, he gives them a way back into the round. If he somehow spots Nats, it gives them a way back into the round. Instead, it just comes down to this moment, and they've seen it, but he's still managed to come out with 3! Ridiculous from Mixwell, leaving just Nats. He thought he'd given his team a free pass in towards the A side. Instead, he sent them to their death. We thought Nats had snuck by Mixwell. It turns out it was the other way around. Nats now having to clutch this one out. No idea where Mixwell is, and the snake bite not quite clearing the angle. He's about to run the site, reloading, and Mixwell completely whips. Nats knocks it out. 3 kills, 5 rounds. There seems to be no way for G2 to get off the starting point. This is absolutely ridiculous. Mixwell killed 3 people there. Up to this और इस बंदे को क्यों नहीं मार पाया? यहाँ से 2 को कोलैट ले गया था. अगर ये बंदा शूट नहीं करता ना पीछे वाला, I think G2 Kellogg's. हाँ. अगर वो शूट नहीं करता. How is he not? Look at his face. Look, Shados is screaming, and Nats is like. I was like, how did Mixwell lose that? How did Mixwell lose that? Mixwell की गलती थी, पूरी Mixwell की गलती थी. नहीं पूरी तो नहीं, हल्की सी उसकी भी थी. गलती तो नहीं कहीं है Kellogg's की. जो चीजें हुई हैं ना इस गेम के अंदर, क्या बताएं? जब उसने उसको मारा, क्या रुक जाए, मैं थोड़ा ब्रेक डाउन करूँ इसको. तो एक्चुअली हुआ क्या? मैं उसमें जाऊँ क्या? 1 मिनट में YouTube पे जाता हूँ, जिसमें दिखा सकता हूँ तुम्हें. 1 second. We're asking, well, I break it down one by one. कैसे इसने क्लच निकाला? पहली सबसे बात शुरू हुई कि मिक्सवेल पता नहीं जादू से एंड लक से उस पोजीशन में पहुंच गया जहाँ पर उसने 3 बंदों को मार दिया. Then it became 1-2 like 1 versus 3. अब ये नैट्स को पता है कि मिक्सवेल ने तो वहीं से मारा है इस बंदे को. ओल्ड मेंटा को पक्का तरीके से नहीं पता कि Nats यहीं पर ही है. So he was just looking at this angle and he found old Menta. इसको मारते ही Nats did not expect कि कोई यहाँ पर होगा. And पता चला कि Kellogg's ने just shoot किया ना, देखो he didn't even यहाँ पर मार के he just went like 180 degree, है ना, ये 180 degree कर दिया, but पीछे से ऑफ शॉट चला. बस अब इसको पता लग गया, Nats को पता लग गया, एक बंदा पीछे एक बंदा आगे. It's snuck by Mixwell. It turns out it was the other way around. Nats now having to clutch this one out. No idea where Mixwell is. अब बात ये है कि बंदा पूरे टाइम आवाज करके जा रहा था. इसने 3-4 गोली यहाँ पे चला दी, फिर रीलोड कर रहा है. Mixwell को आवाज आ रही है कि बंदा रीलोड कर रहा है. He's about to run to उसके सामने बंदा है, उसने damn, this jump and then this regress. This is nice. अगर मिक्सवेल को ढंग से खेलना होता तो if I would have done this, अगर मेरे को ट्राई हार्ड कर रहा होता ना, ये वाला शॉट लेने के बाद मैं पीक नहीं करता फिर से, या फिर मिक्सवेल को भी पीक नहीं करना चाहिए था यहाँ पर. बट ही जस्ट ट्राइड टू स्प्रे थ्रू द वॉल के हो सकता है वो लो हो एंड वो मर जाए बंदा, बट नहीं. A clean headshot by Nats. Drop me a gun. Someone drop me a gun. Listen, if you're Mixwell, everyone else on share still. Plenty of potential damage to be done. It starts with Mixwell by the looks of things. Defo's holding it with an off, and that's going to be the rifle dropped. Look at this, but I mean, get out of here. The ruddiest player I've ever seen in my life. The fact that he can look 2 kills, why not? Yeah, Nats is not Nats. He's a rat right spawn, now. Tom. What? You rarely see that in a ranked game if someone's actually Come here, you little shit. And there's guys walking past me. Nice. Guys, I'm gonna go to the toilet. I'll BRB. So, oh look, okay. I've cut off कैसे करते हैं deal with your blade storm, the final remaining beacon of hope in the round after losing the van. No, Nats again? Not again. Not again. How slow Not again. Okay, there is some good left in the world. I'm a big fan of Nats. We had the tweet the other day, if Nats has 1 million fans, I am one, and so on. We know how the copy pasta goes. Did you come up with that? I'm very happy that he's died out in this round. It's just 3 kills from spawn would be a little bit too much. Oh, God. You could even see the way Avo was walking through there. He was like, yeah, वो कि भाई 6th sense चल रही थी. कोई हो सकता है यहाँ पर. Nats ही हो सकता है यहाँ पर. Because you're constantly trying to work out. Yeah, it's like you're working out what he's doing,
And the second that enters your mind, you've already lost. I mean, the second that somebody said, like, Mixwell's Oh, going to be like, all right, what Kellogg's, dikha? can you What go for dikha? a flank this What round? He's dikha? going to get PTSD immediately. Every corner is going to be checked 3 यहाँ times. से wall लगा के I mean, I don't even It's know. like अजीब the सा idea, peak you ले know, सकते हैं. the game. Nah. That's going to annoy a lot of Okay. people in Twitch chat. But it's the second you think That's about the fine. game, you've lost. Oh, wow, That's, Tom, come on. What is this? That's the 20 concept. 5 Yeah, HP. exactly. That is the concept with Nats. The Full second you Winter think about what Nats 06. is doing, you've already lost. Maxwell Made 6 many- by 6. Oh, Many they're references. That's the worst one. Yeah, no, I could tell I there's think a lot that's of people an who hate easy me right dub now. by And, GMB. honestly, Gambit I का read- easy 2-0. Back to childhood with that one, Tom. You know what? Well, you just lost, bitch. You just lost. Okay, wait. Not really going to get I'm away with going back anything to for now. live. How? No, but how? How? How is he there? How is he there? Not I don't again. understand. How does he manage to do that? And he's gonna get the kill on Mixers. What is this man doing? That's one of the most ridiculous things I've That's ever the seen. rat. This guy, he's defining the word flag. 5 ulte, हाँ, that's true. It's not even a flag. I don't He just walked up understand. behind them. By Nat is a rat, Absolutely bro. obscene. Oh, G2, my heart goes out. You are playing Gambit's game at this sit point. down. Nats, he's even Again, he's come up behind and for the third again, kill. bhai, He's come up this behind guy's for the third kill. movement. How has he managed to do that? 3 kills in a round. Hey, The previous one he did the same. Can somebody stop this उसने guy? Viper It's की ball डाली and it's बस 0 luckily for चला Gambit. गया. This is G2's map pick. Right, वो I know रुका you're नहीं. listening, obviously. POV demos, please. Release them, because But इस बार इसने क्या How किया? does he इसने find the wait किया space? पूरा के I could watch him play. I've watched Nice. probably This- hundreds of hours of Nats at was this good. point, and I could watch hundreds more. I still wouldn't understand what goes through his brain. It's unbelievable. he's like this guy, this rat of a guy. Prime Gaming flawless, by the way, just in case anyone was Well, of wondering. course G2. it is. Nats, they didn't even see the dude the whole round. He's an enigma. Okay. Coming back. हुआ कैसे? How? I think इसने वही किया होगा इसने. If you see, अभी wall लगाकर, he's just going there. Generally लोग क्या करते हैं यहाँ पर wall लगाते हैं and fake out करते हैं. But ये उल्टा counter strategy you can do कि अगर लोग opposition वालों को लग रहा है कि तुम सिर्फ wall लगा के सिर्फ fake कर रहे हो यहाँ पर, then just push the wall. King evades them. So they put, if you see, वो धीरे-धीरे push कर रहा है, and now he calls out everyone from his team. Okay, dude, I'm pushing into B and everything is clear. Just rotate back. Kellogg's not really going to get away with anything for now. So that's why like How? everyone is just No, holding it. but how? And then How is he he gets there? a kill. How is he he there? ults and he calls everyone back. आ जाओ भाई, आ जाओ, वापस आ जाओ. Don't understand. And they all just How run does he manage to do that? And he's going to Where get a the kill fuck on did he Mixers. come from? What is this man doing? That's one of the most ridiculous things I've ever seen. This guy, he's defining Nice. the word flank. He's 3-0. Okay. Brain. G2's map choice. Okay. Nice little breakdown for you guys. So the positive. But here, yeah, that was a Gambit very chose the like attack. basic strategy. Let's ये तो look on the हम right उसमें side. करते हैं, you know, कॉम्पी के अंदर करते हैं इतना तो. Oh god. Close recon this time. Like Look ये at तो what उनके you लिए see कॉम्पी normally. चल रहा है Sometimes it भाई. goes around the corner, so you They're can like spot them as they they're come so through the door. confident This right now. time, Gambit. Gambit. Look at wanna play a this. more passive one Jet because they're diff. ensuring nobody's Jet pushed up A. diff. Defo shuts down the B push. Again, Kellogg's trying to go for a flank. And this is a player we know feeds off energy, feeds off momentum. We've seen him every time he makes those clutch plays. He's jumping up, he's making noise, and so far, whenever he tries to move off the B side, अरे पिछले he राउंड is में shut चार down, whether it's तीन by लोगों ने Nat's अपना ultimate use AFK कर लिया था क्या? spawn or by Defo's operator now. And look, Yeah. they're still just waiting. This is a textbook Gambit round, and G2, they're 7 rounds behind. They're getting a little bit antsy. They've got weaker weapons. They want to push forward and initiate some combat, and I suppose in a way they have initiated combat, but ultimately it's their execution. But that is the Oh, beauty now this Avova of plays Gambit good attack side. because he His just last cleared round it saw with the Nats flash. fighting them So he thinks कि यहाँ पर कोई नहीं है. Is he going to flank Nats? Is he about to flank Nats? But Oh no. turn around. oh, Shadows. Okay, fine. Because, and Tom, this is the ridiculous thing. They left the spike in spawn. If they didn't leave it in spawn, he wouldn't have been there. He wouldn't have turned around. He wouldn't have spotted the flank, and Avova probably would have killed Nats. But instead, timing on the turnaround, Coldament has gone. Mixwell's got a rifle. There's not really much you can do in this. He almost got taken down by a wall. Nice, Defo, of course, Defo. wins that duel right afterwards. This is unbelievable. G2, Defo's one of op the is most like solid one of teams the that we most have, frightening not just things in regionally, Valorant. but now top 4 in the world, placing at least in this event. And they're just being embarrassed. And a headshot by to the top CIS it off. squad. Top it off, you know. Prime Gaming flawless. Easy. By the way. Oh, was it, Tom? Yeah, just like Yeah, you know. I haven't actually seen that. That's the first one of the game, isn't it? I think so, maybe.
I feel like maybe So the round fast, before- so fast. They had weaker weapons, so I want to give them a little bit of room on that. It is only 8-0. But this If why they it was win all 4, it's Nice, still this is Chepo. what I was almost saying. It's like the thing I've loved about this attack side so Look far at is it hasn't this. just been that static default. Like as said, like a couple of rounds ago, Nats was all the way through with तो कह रहे भाई क्या bronze players के against खिलवा रहे हो यार? at the back of B. There is no right move now for G2 Easy. because if they get aggressive and try Red guard के पास वापस अपना ultimate पे आ गया. and if they नहीं, don't, I they think take the उसने space use किया ही away नहीं from them था. instead. This is a perfect जरूरत ही नहीं attack पड़ती, side. flawless पे It flawless हो genuinely रहा है. doesn't get any Use better तो than this. If करे you तो can कहाँ करे? find me a team that do it better. And Gambit takes some time out Send now. it. I want to see it. Oh. Gambit have called attack timeout. अब क्या tactics लगा रहे हैं ये? This almost feels like it's one of those moments where you're Red like, Guard just gonna be staring them down. this feels like one of those moments where, yeah, you are just calling that pause. Sure, you'll have a little bit Goal of to chat, be. but for the most part, you're just letting them stew in it. You're 8-0 down. Everything you've tried has failed, and now, hey, take a minute, try and figure us out. The only problem Yeah. with doing this, if there ये isn't तो something else बड़ी combi we game don't चल रही है know अभी. about, is if you then I lose need from map here, pick किसका था ये? you look like an absolute fool. Sure. So there's always that side of the coin. It also gives Neilzinho a little bit of extra time. Breeze was to talk Gambit का through pick, things. ये वाला I don't think was G2 are gonna be too G2 का unhappy pick, with it this okay. point. They're going to get it before G2 going के into a pick bye के अंदर round. ही उसको I हरा रहे genuinely हैं. think if they can get That's this back good. to 4 rounds, G2 have a chance. I think their attack side versus But Sentinels, G2 they have इतनी 8 rounds outclass and तो 9 कभी नहीं rounds the लगेंगे second time इनको. around. So Now Gambit they have to are be getting careful here, and outclassed. I actually don't mind this pause, even if it is अब just for G2 that के Twitter में क्या reason. होगा? Guys, don't get overconfident. कितने don't get toxic होने वाले carried G2 के away. Let's Twitter? make sure we're getting like an 11-1 at worst. And remember, Sentinels के against इतने ज़्यादा toxic हुए थे. I think Sentinels को toxic होना चाहिए. Starts out with a Hunter's Fury tag, but no finish off the wall. Throw, come on! Ew. No. Come on! He walks through his own poison Oh, orb Odin. and Odin gets is the there, kill. no? Cole Dementa puts out the recon, just confirming they're still here. Oh They my walled God, up, this they're wall. pursuing him. Gambit are looking so confident, Kellogg's. but Kellogg's, he only gets the one. A res straight away onto Nats. They'll try to shut him down. Cole Dementa with the Odin, and he gets F40 dropped की और right Sen throw कर afterwards. रही थी. Nats falls, but comes right back to life. I think and I don't think breathes it's life Sen into the throw कर game रही of थी, Gambit but here. yeah. 8-0, looking for a 9th. They got And it is a 3 versus 2. They need to deal with Nats. He's out-aimed, in I their would say. spawn right now, and he's the only player isolated as they try to go through tube. Down goes Newcastle Mixwell. will this. He can win this. The He can jump win across this. by Chronicle. Then क्या बोल रहा हूँ मैं? Just about saving his life. बहुत Does he have तेज है any इसके पास. idea that पूरी Defo बात is समझनी going to be पड़ेगी. here, though? That was a close spam. This is a dirty point to play on the cross. Looking to try and take him out with a single bullet. And they're almost going to move in a crossfire. It is perfect again. The 9-0. interplay between these players has been I remember, I fantastic. think the 4th round, game two of at least fighting Icebox, back a little I bit was in this down one, but 1 or like we were down में बादशाह वगैरह के साथ खेल रहा था, and it was like 2-9 or 2-9 or 2-10. 2-10 या फिर 1-11 था, ऐसा कुछ स्कोर था, and we won that round. And we won that match पूरा का पूरा. 1-11 पे we came back. And we talk about Mixwell's lurk when it comes to playing Viper. And on But this वो map in चलो वो तो particular, I early think days of he Icebox था, shines जब लोगों को Icebox खेलना नहीं आता था. 9-0. Gambit क्या have angle been लेने हैं वो no पता नहीं था. G2 have got to be feeling locked बहुत down. बातें We लगे. talked about the pressure. But yeah, Their best chance comeback of is making real, the guys. champion is winning this game. Otherwise, it's LCQ they have to go through, and that is going to be a much, much tougher bracket, and indeed put them many more BO3s away from securing that spot. वो गेम प्ले देख के लग रहा है कि वो सेन का गेम प्ले नहीं, वैसे लग तो नहीं रहा था. अरे क्या होता है जब पहले 3-4 राउंड्स के अंदर आपके पास अच्छी किल्स आ जाती है ना, तो आपको वो आ जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ठीक है ये वाला अगर मैंने डूल लिया ये तो मैं जीत जाऊंगा. सेंटिनल्स के साथ वो हुआ है नहीं. सेंटिनल्स पहले के राउंड में हार गए एंड देन दे वर जस्ट लूजिंग डुअल्स. उसके बाद उनका कॉन्फिडेंस इतना डाउन हो गया. Okay, Mixwell at least trades it back, but here's Defo. Look at that sky, man. And he was out of there. बंदा लैंड किया भी नहीं था, and he was dead. He comes close, but he's just too low. With Mixwell walking through the Viper's pit, Oh. even after he finds the first, he's Dead. going to run right into Chronicle, putting double digits on the board. Gambit are just unstoppable Dead. on Dead. G2's map Dead. pick, and Dead. they talked about it on the desk. It was mentioned many times. The Breeze was a pocket pick out of Gambit, and the other two defend नहीं maps कर सकता looked उनको. damn good for Gambit as well. They won the veto right away. नहीं मैं ये नहीं कह रहा कि अरे मैं डिफेंड ही तो कर रहा हूँ. अच्छा ये तू कह रहा है कि मैं डिफेंड नहीं कर सकता कि वो बहुत बेकार खेल थे.
If you're new to I Valorant, you don't know, think they'll come back from a 12-0. I think they were playing fine. सच बताऊं, उनके tactics इतने बुरे नहीं लग रहे थे. kind of tough actually, yeah. अगर एक तुम duelist को देखो, True. तो So did Gambit. रेस खेल रहा है, it's like very aggressive duelist, right? अगर आपके shots नहीं लग रहे हैं, तो क्या आप This is a frankly ridiculous रेस की तरह play खेलना बंद कर of दोगे? just a That's flawless not good, attacks. right? And Absolutely. And they started out that is what clicking Tenzo was off, doing. the Wo, confidence is he running. didn't stop Gambit, playing race known like for a their race. slow He was defaults, making instead that they're like taking very crazy early fights peaks, as a 5-round crazy range, style and था G2 उसका rotated उसके fully अंदर. in. I think that was fine. At this point, take अगर risks, आप take crazy down नहीं खेलोगे, everything even though you are can, losing, all the rounds and Exactly. you have to play your role. the res still- And his role was to seek out engagements and play like a duelist. It's not an awful spot. Been able to I get didn't back into find a that like workable position. aim उसका नहीं लग रहा था. That was his off day. Looking for the fight. कल का देख के तो मान ही नहीं सकता. ये बात है कि their aim was really off. It seems like every single thing that G2 कुछ राउंड्स के अंदर उनका एम ऐसा बहुत बढ़िया लग रहा था, बट मैं ये कहूँगा एनवी ने बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छा खेला. तो ये तरीका होता है ऑप गिराने का. Just beautiful play right now, looking for 11, getting rid of that operator and moving towards the B site where they're just going to इवन डैपर को भी करते हुए देखा था एक बार. their plan, post plan play, and Nats has हाँ, so much स्ट्रैटेजी space चेंज to करो, work, वही which बात है, is an यही बात है. incredibly scary अब एक्चुअल में क्या होता है कि जब मैंने भी अपने वो टूर्नामेंट खेला था ना, तो एक बार अगर आपने स्ट्रैटेजी सेट कर ली, इट्स लाइक रियली हार्ड टू चेंज योर स्ट्रैटेजी और मेक इट ऑन द स्पॉट. और वो आईजे का काम होता है. If IJ can do that, then good. He gets the first kill. He's being shot in the back. 1v3? Behind. Kellogg's? It's almost a miracle in itself, but I don't think it's going to One save bullet him. and a He needs dream? to find 3 more players. Ah, he's and- dead. No! Okay. Oh. At least gets a couple, but it doesn't matter Close. for Gambit. But 11-0. Have we haven't had a 13. उन्होंने हाँ अपनी स्ट्रैटेजी चेंज नहीं करी. बात मुझे भी ये लगी. उन्होंने कभी वो नहीं किया, रोटेट फेक नहीं किया, रोटेट गए नहीं, उनको परेशान नहीं किया, कोई डिफरेंट गन्स नहीं यूज करी, अजीब अजीब चीजें नहीं ट्राई करी. It just went in and died. But वो that's I think Shazam ऐसे ही खेलता है. Like he plays with the box. Like क्या कहते हैं, he plays by the book. हाँ, with the box खेलेगा. He plays by the book. So exactly जो उन्होंने प्लान कर रखा है ना, he is going to play it like that. Coming into this semi-final, this, as we said, was their chance, or still is, to make it to Masters, or to make it to Champions at the end of the year. Oh, Oops. careful. Is that a whiff shot? He's human. मैंने जब टूर्नामेंट खेला था तब मैं भी डुएल लेके ऐसा नहीं जाता था, बस रन कर रहा था. No, come on! Come on! Give them something! Finally, of over, he's managed to get rid of Nats. Yeah. It might be But a lifeline, I it might think be so too. something to Oh, at the least push make out of this Cole not a Demento. flawless half. They see the players on B, they कोई want to नहीं. try to make the space up, so they walk into A. बात ये And भी of है, course, what do you know? उनका एम जो है वो चैंपियंस है, and they're going to go in champions anyways. So the depth and versatility. I think they don't mind right now. So No, beautiful. no, And no, play. they still think that they can push Gambit. They still think that they can try to flank this team. And Tom, they fundamentally cannot. Final player alive, Nukia, trying. Hey, look to at win this Gambit's round aim out. right now. A 1v4. What can you do against I think them? I saw that. You know what? If it takes Therefore, 12 straight rounds for him to इतना सही खेल रहे. smile, You need someone to we'll see a whiff, lot more of right? that. कोई ना कोई तो डुएल जीतना ही पड़ेगा, but they're not. Already looking at champions, they've got so much time to prepare ahead of that. And हुक को फिर रीड भी कर सकते हैं. वही तो यही तो that doesn't बात scare थी कि you they were after what getting you're seeing red here every today. single I don't time. know what will. That was a mistake from Shazam's side, maybe, if that's the case. He's left in a 1v4 mid. He's not going to win. अगर Shazam का call था कि ठीक है, we are going to still going to do the same thing. Let's do what we practice. Let's not even try, Then Tom. I'm through with having hope. G2 That was have Shazam's just fault. been beaten 12-0 on their map pick. Now we're going to throw things over to the desk. क्या लग रहा है? And, G2 good luck. Good luck, guys. Good G2 को एक भी राउंड मिलेगा. Yeah, thank you very much. एंड तब तक मैं तुम वो दिखाता हूँ G2 का ट्विटर. आज मेरे को पवन ने दिखाया था ये, हमारे लीथल स्नाइपर .com. Playing NV right after this Gambit match in semi-final, winner not only goes to grand final but also secures a second champion spot for NA. Should be playing in either 1 or 2 hours from now. Okay, so this is really important because first spot is taken by Sentinels. So Sentinels के लिए कुछ जा नहीं रहा.
वर्ल्ड चैम्पियनशिप में खेलने वाले हैं। पर वो G2 के खिलाफ भी हुआ था, कुछ मेजर चेंज नहीं था पर मैंने था। ओके, आई थिंक G2 इज लाइक अ वेरी अडेप्टिव केस में, बट आज क्या करते हैं, लेट्स सी कुछ हो पाता है कि नहीं हो पाता। ओके, दिस इज लीग ऑफ लेजेंड्स का। आई एम जस्ट हैप्पी आवर रीजन इज गुड। ओके, रैंडम, अरे मैं उसको दिखा रहा था, G2 ये देख, बैनर देख, ठीक है। इसके बाद ये आइस बॉक्स के ऊपर /FF कर दे भाई, कर दे FF कर दो यार। हैज एनीवन सीन G2? और एक ये वाला था, कहाँ गया ये वाला, फुल ऑन टॉक्सिक मोड, चेक W सेंटिनल्स। Around. This guy is so वो तो focused इतने on winning this टॉक्सिक win, हो जाते हैं, and not only getting the and this is good actually. I like this. I like the toxicity and I like this banter. This is basically banter, you know. 13-0, let's go. वही तो, अब तो दुश्मनी शुरू हो गई होगी G2 के अगेंस्ट। सेंटिनल्स का क्या हाल था? सेंटिनल्स ज़्यादा कुछ नहीं करेगी, मतलब है ना। सेन वर्सेस दिस द वर्ल्ड, दिस इवेंट 76 days to champions, वही तो चैंपियंस के लिए जाएंगे वो। the win. Absolutely. I really don't want it to be. 13-0, only one round, एक राउंड है उनके पास। This is an EMEA NA game? Sure, yeah. Whip at the 13 zeros. Show them what you got. But Gambit, God, really just showing G2 that, you know what? This is why you're 4th seed. You might be able to beat the best in NA, Okay, but this is Redgar the NBA, is like baby. very low, And Gambit, but he the heals kings of himself. this region, looking for the 13-0. They're on the defensive side. Normally, that means that teams play slow. They defend. Gambit, though, after such a convincing first half, I wouldn't be surprised if they play a little bit more aggressive. They're going towards Nats. Okay, they know कि B hit होने वाला है, वो भाग के आएंगे, सारे भाग के आएंगे। Yeah, Nats playing in Nats, for anybody wondering. सारे A से भाग के आएंगे। Oh, Gambit, like वही तो यार, अगर किसी का aim इतना बढ़िया चल रहा है, what can you They're do? losing their lives. 3 What players can you remain. do? G2. At the end of the day, you have to kill someone, right? Humiliated. They'll get themselves a spike plant. They'll give themselves Okay, this a is bit good. of hope. But Shados looking to drop more players. Another one falls. It is looking all but over. Okay, It's on to one, Keros that's to give them it. anything. And G2 13-0. have been humiliated as 13-0. Gambit make their way through to the final. And who the hell will doubt them now? Oh, watch out, NA, because these guys, they do not come to play around. They came to win. What an incredible showing from the Kings of EMEA, showing that even if G2 beat the best in the world, they won't beat the new Kings. Absolutely spectacular. I think that's one of the most dominant 2-0 games that I've and seen. 13. And Oh. the fact that it is in the semi-finals Defo काफी अच्छा of खेला। Masters 3. It's यार absolutely डेफो वर्सेस ridiculous. वो अच्छा रहता है यार। I don't think we have. डेफो वर्सेस सीनेट अच्छा रहता है, बट insane. Might get a little bit one-sided. Yeah, do you reckon इनका there's a एम chance इतना that क्रिस्प चल रहा है यार अभी। ये वाला तो इतना हंसने वाला राउंड था ना, come on. Okay, so yeah, his 3K isn't even in. Only the end of the round. And there it is. Oh, look, we won. Not even a smile. There's so many things about Defo, this match I man. don't think I've ever seen before. Nuclear, 2 kills in the entirety of the map. It was not the Lol performance कर दिया। that G2 were looking for today. I will say, coming into this tournament, Revenge ले लिया भाई, more revenge. from them is an Toxicity का aggressive revenge. showing. It's just Look a at manner this of guy, which they got man. manhandled. They beat Sentinels to make it through top of their group. They got through Crew. भाई in रेडगर fairly कैसे easy खेलता है यार? fashion. ये And then ये they कौन सा came स्टैंस up हुआ यार again बैठने का, ये बताना जरा। through Crew in fairly एक सेकंड, beat Sentinels to make it through top of their group. ये कैसा स्टैंस है भाई? पीछे वाली चेयर भी लाइक मेरे को कब छूओगे? मेरा काम क्या है फिर? बिना बैकरेस्ट के ले लेते ना भाई। इतना ऊपर मॉनिटर कर रखा है। मुझे बताऊँ क्या कर रहा है, मुझे लग रहा है बचपन में ये और इसका भाई खेलते थे कंप्यूटर पे। उनके पास कंप्यूटर में मॉनिटर नहीं था, तो उनको टीवी पे खेलना पड़ता था, और टीवी लगा हुआ था हाइट के ऊपर। तब से इसकी आदत ऐसे पड़ गई
कि इसको इतने हाइट पे स्क्रीन चाहिए ही चाहिए, वो भी इस एंगल पे चाहिए. That's how he grew up. In fairly easy fashion, and then they came up against this Russian. और उड़ा हवा में, वही तो. Discord आजा bro. The amount of space that they can garner. That's bullying. Reported for bullying. The holes in your plan, and they will tear them wide open. This has been an absolute masterclass in how to play Valorant. Hey, what is this? This has been an absolute masterclass in how to play Valorant. And you know what? That's the man who just beat G2 30-0. It was a piece of art, so I'm glad they're emulating. Wait, ये सोच के आए थे. G2 in this moment and seeing this. You've just been. अरे ये हाथी पोज बना रखा है, you know? ये वाला हाथी है, ये वाला हाथी है. More ways than one. Oh, it's impossible not to love this team. It really is. Now we heard those whispers again. You know फेविकॉल वाला पोज, बस वो उल्टा कर दो. Something to behold when it came to scrims. We'd seen it again and again. वो ये कोच है इनका. We're seeing it here on the international stage. They have not disappointed. We all pinned them as the best in our region. We said if anyone has a chance. मुझको तो लगता था कि सेंट का बेट था ये. हैं? And now they get that chance in the grand final. भाई बंदा जोकर जैसे दिखता है. I said I think midway through the map. You're never going to see anything like this ever again. Discord. 13-0 in a semi-final. I think if we do see it, we're going to be waiting an incredibly long time. You know what, Tom? The players will do it, but I Yo, think hello? they deserve their own. Hello? I think we have to Yo, yo, yo. them now. I think all of the EMEA regions. क्या मारी भाई? पकड़ के मारी. We'll give है them ना? that praise. हाँ. कर्मा भाई जो इतना ट्विटर पे उड़ रहे थे ना ये लोग. वही. Don't even look at these guys. You're not good enough. That's for damn sure. I don't. ग्लव था और आपने असली गेम प्ले जान अपना अपना असली गेम प्ले जान के लिए बचाया, वही तो. Are your first grand finalists and you really couldn't ask for a. मगर तो चाहिए था G2 नहीं चाहिए. क्योंकि सेंटिनेल्स के साथ इतना टॉक्सिक हो रही थी वो. हाँ ना भाई, कुछ तो लोगों को मिलना चाहिए ना. That's true. मतलब ठीक है, चल तू जीत रही है, बेटर टीम मान के खुश रहना, इतना टॉक्सिक होने की क्या जरूरत है. पहले भी टिकटॉक बनाया था सेंटिनल्स के अगेंस्ट. बट ये चलता है यार, ये बैंटर है, फ्रेंडली बैंटर है ये. हाँ फ्रेंडली बैंटर है, बट देन ऐसा ना यू वर्सेस एनए वाला सीन. हाँ कोई नहीं, छोड़. लीग ऑफ लेजेंड्स में हमेशा ईओ एनए से ऊपर रही है और एनए हमेशा जोक बन के रहा है. यहाँ पर इस ये वैलोरेंट और एफपीएस शूटर गेम्स के अंदर, सीएसगो के अंदर हमेशा एनए ऊपर रही है. अमेजिंग. तूने ये वाला वो ट्वीट देखा है G2 का जिसमें वो /FF लिखा हुआ है उसने आइस बॉक्स के ऊपर? नहीं. देखता हूँ. G2 की उस पे 22 मिनट्स अगो वाला है. No access to site. एक्चुअली अब भी खाना खा रहा हूँ. ओके. मतलब पास्ता बनाया. अरे बढ़िया. खुद बनाया या मम्मा? हाँ, नहीं खुद बना लेता थोड़ा बहुत. सही है. अब क्या आ रहा तेरा इंटरव्यू का? अभी बात नहीं है, बाद में बतानी है, कोई दिक्कत नहीं है. बताने के लिए कुछ नहीं, इतना कुछ खास था नहीं. मतलब ने इतना कुछ नहीं पूछा कि जितना मैं ऐसा सोच रहा था ना पूछेगा. ज़्यादा कुछ नहीं पूछा, बस बताया कि ऐसा ऐसा उनका ये है, ये काम करते हैं लोग, एक तुम्हें भी ये करना है, बस ऐसे ही. बाकी बोला इतना पे रहेगा, ये काम रहेगा, इतने दिन का टारगेट है. बस. तो ले रहा है कि नहीं ले रहा? अभी तूने डिसाइड कर लिया? सोच रहा हूँ कि ले ही लो, लाइक अच्छा पे कर रहे लो. बट ये कि मतलब काम में एक्यूरेट रहना, नहीं तो लाइक डेटा एंट्री है ना, अगर तू मिस्टेक कर रहा ना, लाइक 80% एक्यूरेट नहीं है तो इट्स लाइक नो पे, 0. हाँ बात तो है. ओके गुड. शैडो कह रहे G2 के खिलाफ पे जो पहला मैच था उसमें स्टैक्स हाई थे, वो जीत गई और फिर वो ब्लफ करने लग गई टीम्स को. वही तो. अभी तो क्या कितना 2 मिनट में न्यू मैप है, नहीं हो गया ना अभी तो 2-0 खत्म. अब तो आई थिंक 20 मिनट लगेंगे. थीव्स और एनवी है ना. हाँ 20 मिनट से भी ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि ये इतने जल्दी मैच हो गए. तो अभी एक कॉम्पी या फिर एक वो अनरेटेड खेलने तो खेल सकते हैं.
मैं ऑनलाइन हूँ। पूर्ण जैसे स्पाइक रश में तो उसके साथ भी अनरेटेड खेला जा सकता है। अनरेटेड खेल लेते ना, पूनच को बुला ले। जब मैं भी गेम ऑन कर देता तब तक। मैं तो आराम से खाऊंगा पास्ता मस्त टाइम लेके। हाँ तो बहुत सारा बन गया तो आराम से खाऊंगा। पूर्णज को बुला लिया मैंने। तब तक डिस्कॉर्ड पे कनेक्टेड हूँ मैं फिलहाल। Okay. जब तक खा रहा हूँ आराम से। नो इश्यूज। अरे यार ये गाना चलता है, रुक जा। ये तो मेरा कॉपीराइट स्ट्राइक देगा। अरे नहीं, ये तो मेरा गाना है, बच गए। ठीक है। मुझे लगा मैंने जो स्ट्रीम पे गाना बजा रखा है वो उसका है। अच्छा। और आज मैंने अपनी थोड़ी प्लेलिस्ट चेंज कर रखी है, थोड़ा हाइप म्यूजिक है उसमें। कल वाले सुने गाने? नहीं, कल वाली मुझे टाइम भी नहीं मिला, बिल्कुल भी नहीं। तो भी लगा सकता है ना स्ट्रीम पे, मेरे को तो क्योंकि कभी आया नहीं ऐसा कॉपीराइट स्ट्राइक या कुछ। मेरे पीसी में नहीं है, स्पॉटिफाई मोबाइल में ही है सिर्फ। कोई मोबाइल में भी क्रैक एपी के। पूर्णज को भी भेज दे वो रिक्वेस्ट। एक सेकेंड, मे बी चेंज द स्ट्रेटजी। अब तो चलो छोड़ो, ये EU वाली गेम्स तो मेरे को इतनी ज़्यादा पसंद थी भी नहीं। हो गया जो होना था, थोड़े हवा में उड़ रहे थे, उनको अब अपनी असलियत पता चल गई। अब क्या, चिल मारो। मैं एक चीज कर सकता हूँ, मैं अपना रेजोल्यूशन थोड़ा कम कर सकता कुछ लगाना देखो गेम में लगा दे। मैं वो देख रहा था कि पूर्ण जा रहा है कि नहीं आ रहा। अच्छा, मैसेज करूँ उसको मैं रिप्लाई करना आता है मैसेज को। नहीं कोई करता वो से रहता। नो भाई तब तक वो कर करता तो है, मैं उसको लिखता हूँ नहीं हो रहा है तो नहीं लिखते। अच्छा। अरे आज मेरे को जो कॉर्सन है ना वो बता रहा था कि स्ट्रीम लैब्स के अंदर वो है, दिक्कत है। मतलब स्ट्रीम लैब्स के अंदर चांसेस हैं कि आपका वो हो जाए अकाउंट हैक। चीट्स ऑन है तो जेट कर सकते हैं। करो इसको थोड़ा और छोटू कर देता हूँ एक से। क्वालिटी और Let's go. बढ़िया, मैंने तो अपने ना स्ट्रीम के ऊपर ही वो चला दिया है। मैच मतलब गेम भी चल रहा है और मैच भी चल रहा है स्ट्रीम पे साइड बाय साइड में। हाँ, ट्यूटोरियल सा बना के डाल दिया। नाइस। तो क्या आज मैंने क्या किया, मैंने अपने लैपटॉप का स्क्रीन खोल ही लिया। मतलब मैं हमेशा लैपटॉप का स्क्रीन बंद रखता था I ना। know your tricks, Wind Girl. You're not मैंने faster खोल than दिया। me. चीट्स ऑन। My ult's ready. रुक जाइए मत ऑन रख। क्या नहीं कर दिया मैंने, कर दिया। उससे क्या फर्क पड़ता है? अनलिमिटेड रहेगा तेरा, गोलियां खत्म ही नहीं होगी। अनलिमिटेड मैगजीन्स रखने का। नहीं, एमोस में भी तेरा वो चक्कू का कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं चक्कू का फर्क नहीं पड़ता, ऐसे नॉर्मल बोल रहा हूँ मैं। Get out of my way. Get out of my way. My भाई मेरे ऊपर से नीचे कूदा, 7 की हेल्थ बची है मेरे पास अब। Let's blow them over.
Stay safe. Get out of my way. What's this? अरे मुंह पे आ गया यार। Damn. I'm amped. Let's go. I got the spike. Get out of my way. What's this? Get out of my way. Get out of my way. We get a pick, we move in. I got the spike. Get out of my way! आई गया बोनच। What's this? Get out of my way! Get out of my way! Get out of my way! What's this? अरे यार किल नहीं लिया था? ने लिया था, उसने मारा मेरे को पहले। I got her. ओके मेरे को पता ही नहीं चला। What's this? Get out of my way! Get out of my way! There you are. What's this? मेरे को मारा तूने, वही 2 मारे तूने मेरे को। Nice, but not nice. I get out of my way! What's this? What's this? Get out of my way! What's this? मेरी यार मेरे गोली Get out of my way! को खत्म हो गई मेरी। Get out of my way! Race it to the spike sites! I got the spike. What's this? Get out of my way! तो जाओ ऊपर। क्या है? What's this? Come on. मेरा ऊपर ही नहीं जा रहा है, क्या सीन है? हाँ मेरा भी बहुत मुश्किल से ऊपर गया। Woo! We got this. Get out of my way! What's this? Outrun me. I got your back. लीव करने का Just, बोनस भी है। you know. करना Get क्या? out of my way. What's this? कर ले ली। कर दे। हाँ करते हैं क्या? यो हेलो पूर्ण। अरे उस इन गेम बात करनी है या फिर इन गेम बात करते हैं? डिस्कॉर्ड बंद करते हैं यार, बहुत वो रहता है। ठीक है। डिस्कॉर्ड बंद। हेलो यो हेलो हेलो, क्या हाल चाल? एक रुकते ना, मेरा फ्रेंड 612 में है, उसको पूछता हूँ आएगा क्या। अरे पूरा गेम खेलना है क्या? मुझे तो लगा था हम बीच में छोड़ देंगे बट ओके फिर लगा ले। वैसे हाँ अगर रुकना तो कर सकते हैं, रुक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी बुला लेते हैं, सब जेट लेके मिड पे आ जाते हैं। अच्छा कस्टम खेलना है? नहीं अभी अभी के लिए, अगर तेरा दोस्त 612 है ना, वो पता नहीं 712 912 1212 तक पहुंच जाए। पूछो ना उसको, कॉल करता हूँ। हाँ हो गया 712 हो गया। 712 हो गया, वही कह रहा हूँ। क्या शुरू करना है, क्या करना है? छोड़ लगा दे अनरेटेड। ओके। और तेरा कब का कह रहा है? फोर्टनाइट कब जीता हारा? तेरे कब का क्या हुआ? फोर्टनाइट कब कोई खेल रहा था ना तू? मैं? हाँ टिंटीना कप। नहीं नहीं टीएनटी ना कप नहीं, वो फ्रेंड का नाम हमने टीएनटी ना रखा है। अच्छा हम लोग चैम्प्स है ना, 6000 है ना पॉइंट्स। अच्छा मैच फाउंड, तो उसको भी रीच करा देते, वो 4000 पे है। ओह अरे
रैंडम होने सेलेक्ट मजा आएगा। अरे रैंडम अब तो रैंडम नहीं होगा। इस पे रहना था आप। हाँ एक काम कर सेज सेलेक्ट कर और पुनेट को सेज सेलेक्ट करने दे फिर। हाँ सेज सेलेक्ट कर ले, लॉक इन कर ले पुनेट बढ़िया। क्या लगता है क्या आएगा? मेरे को लग रहा है आएगा फिनिक्स। फिनिक्स लग रहा है। अरे मुझे अपनी स्ट्रीम का टाइटल भी चेंज करना है राइट। वो तो खत्म हो गया G2 वर्सेस गैम्बिट। सोबा है ओके ओके। YouTube लाइव स्ट्रीमिंग। अबे 100 Thieves वर्सेस एनवी है ना। यहाँ पे ना मेरे को सोवा का एक ये पता है रिव्यू। इधर ओके इधर बता मैप पे मार्क देख वो ये रिवील करता है। Here, ये going B. ओके। अब थोड़ा ये है यहाँ पे खड़े रह के ना इधर ये पहाड़ के इधर एम करने का है। कहाँ पर? Here. ओके और कितना चार्ज? चार्ज Scanning ahead. अबे चार्ज तो बता दे। अरे फुल सॉरी। अरे Enemy spotted B. अरे मैं ये तो लगा डिस्कॉर्ड पे ओ मैं चार्ज फुल बोला बट देखा फिर पुश टू का बटन। Reloading. 26 Reloading. फ्लैंक Spike planted. Last player standing. तो यहाँ पर अगर हमें पुश टू हटाना है तो वो भी कर सकते हैं। हाँ मैं भी हटा रहा हूँ। One enemy remaining. Don't insult me. I think बहुत तेज होगी गेम की आवाज। अभी मैं थोड़ा Clutch. They're nothing to me. that should be better. Reina, no amor. What happened? Who hurt you? नहीं मुझे तो ए साइड खेलने में मजा आता है। हाँ तो फन है के बट साथ मैं ऐसे वो एक टाइप पास के लिए बता रहा था। ये तूने खुद ढूंढा है या फिर तूने देखा है पड़ा? रैंडम यूट्यूब वीडियो आ जाता ना बस वैसे ही कुछ। Revealing area. Multiple enemies A. टैग दे। Reloading. मैंने टैग किया उसको। Reloading. Shock dart. कहाँ जा रहे हैं शॉक डॉट? Reloading. Reloading. Spike spotted A. Spike down A. ऐसा मेरा ऊपर है Right here. यहाँ पर ब्रिज वॉल्स। हट जा। 101 साइफर। Fuck. Scanning ahead. There they are. One
enemy remaining. कर ले That is home, friend. पूरने दिन ना साइफर को छोड़ के उसके आजू बाजू सब जगह गोली You see? और वो स्टिल बैठा है क्राउच करके और पूर्णज कैसा है हाँ भाई बताता नहीं है कैसे चल रहे तेरे रैंक ये रैंक ग्राइंड तो नहीं कर रहा। अरे रात सुबह के 6 बजे खेल रहा होता है बंदा। हाँ मतलब सो नहीं रहा हूँ मतलब हाँ सो नहीं रहा है गेम खेल रहा है उसको ग्राइंड ही कहते हैं नहीं मतलब सुबह क्लासेस स्टार्ट हो गए ना। Revealing area. I've got your trail. हेल्प मी Deploying drone. यहाँ पर एक बंदा है। Spike down A. अरे 114 ये स्काई को मारना Shock dart. अरे विफ कर दिया मैंने। One enemy remaining. 114 है लास्ट इनसाइड ए साइड स्लेस Don't worry, your life won't go to waste. On my way. my way Gone here. my way There. वो तो ले वैंडल ले ब्रो Need a drop. वैंडल Thanks. थैंक यू Let them. Scanning ahead. There they are. Shock dart. साइड आ गए क्या नहीं और है पीछे साइड पे भी Spike down A. One साइड पे enemy पीछे remaining. साइड पीछे अपना स्पॉन Revealing area. हमारे स्पॉन से वो मिड जा रहा था बीच आ रहा था मिड से आ सकता है साइक नहीं है उसके पास नहीं बस बता रहा हूँ ऐसी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ मिड डोज आ सकता है मे बी Enemy. ऑफ लेना ना उसकी ऑफ वो एल्डर है 30 seconds left. वो नहीं पीती वो लेना ऑफ लेना मुझे चलानी है ये वाली प्लीज मैं तेरे को रुक वैंडल बाय करके फेंकूंगा दे देना ओके मेरे पास पैसे हैं ले दे जल्दी दे पैसे हैं मेरे पास पैसे अभी तो मैंने अपने माउस को एंड्योरेंस मोड पे चला रखा है तो उसमें मतलब इनपुट लैग आ जाता है थोड़ा क्योंकि इसमें क्या है कि तेरी बैटरी लाइफ 10 गुना बढ़ जाती है परफॉर्मेंस के चक्कर में हाँ Revealing area. I've got your trail. इधर हाँ मिड से मिड डोर से हील देना पूछना Down. हील देना प्लांट हो रहा है Take flight. Spike planted. Enemy mark. I am the hunter. One enemy remaining. अरे इधर है मैकडॉन Scanning ahead. तो डिफ्यूज टिक कर सकते हैं फैंटम उस पे
अरे पूर्ण सोच लगा सेव कर ले पीछे पीछे Clutch. If you're not a good shot today, don't worry. There are other ways to be useful. क्या चाहिए तेरे को बता माँ बाय माँ मेरे का साइपर है यार मुझे क्यों लगा साइपर है हाँ तू दिला अब वैंडल दिला वैंडल Need a drop. Thanks. Scanning ahead. मिड करता हूँ रिव्यू Deploying drone. ए पे स्पाइक Spike down B. मिड डोर्स क्लियर है तू आजा पूर्ण मिड डोर्स के थ्रू आ अरे क्लियर नहीं था लॉल विंडोज क्लियर और क्या चाहिए ड्रोन मार दिया था मैंने It is done. The enemy only looks composed. Their hearts tell a different story. अभी भी पोस्ट मैच एनालिसिस ही चल रही है 12 बजे चालू करेंगे लगता है मैप सिलेक्ट और नहीं बता नहीं कौन सा एनालिसिस चल रहा है 100 थीव्स के गैम्बिट वर्सेस एनवी 100 थीव्स ही चाहिए नहीं हाँ 100 थीव्स चाहिए Revealing area. इमेजिन 100 थीव्स जीत गए बर्लिन तो हाँ जीत सकती है मतलब इमेजिन क्या बहुत बड़ा चांस है मतलब वो जो टीम के ऐसा है अगेंस्ट ये टीम कुछ नहीं कर सकती सोचना ऐसा ही रहेगा नहीं 100 थीव्स को कभी किसी ने नहीं बोला कि वो कुछ नहीं कर सकते भाई बोलते हैं कौन बोला पुणे उधर जा राइट हाँ यहाँ कोई नहीं है बाकी बंदे ये पे हैं यहाँ पे एक है सोवा का एंगल होल्ड करके बैठा हूँ मैं ओके प्लांट हो रहा है ये पे प्लांट है Spike planted. One enemy remaining. बहुत दूर है बंदा Scanning ahead. You failed. बढ़िया You're going to scatter from my stuff. Super easy to pick off. मिड से आ रहे हैं Enemy down. Revealing area. Nowhere to run. Spike down mid. मैं ड्रोन कर रहा हूँ तो उसके पीछे चले जा पूरा यहाँ कोई नहीं दिखा मेरे को ओह राइट में अरे Last player standing. अरे ओमन पे भाई Shot that. फॉलो कर रहा है
Spike down A. Found them. Come on. ठंडे हाथ. फंतम दे फंतम. नहीं मेरा ही एम गलत है पीछे. यूट्यूब गंदी लाइयो वैंडल फिर से. Need a drop. Thanks. वो कह रहे वॉल करने को. तू यहीं पर वॉल लगा दे. ओए इसके अंदर ना वॉल घुसा दे ऐसे. तीन अंदर तीन बार. Scanning ahead. I've got your trail. अरे ब्रो हम क्या वॉच कर रहे हैं. हाँ ए पे 2 हैं. ए में 2 हैं. भाई Wrong, buddy. Here comes the party. Satchel out. Spike planted. प्लांट कहीं और हुआ है. Satchel out. प्लांट वहाँ हुआ है. सेव कर रहे क्या. नो वे. Watching here. भाई क्या कर रही है रेना. आराम से टाइम लेना. Reloading. न्यू प्लेयर हो. हाँ वैसे नाम ही न्यू प्लेयर है. Reloading. None of my नहीं stuff has हिल not क्यों रही है. loaded yet. जरूरी थोड़ी ना हर शॉट फ्लिक को. ये नॉर्मल वाले शॉट को भी फ्लिक करके मारेगी. लोगों को सेंटिनल्स में जाना है. हाँ यार ट्रिपल ड्रॉप. हाँ दियो वो दियो ऑफ दियो. Need a drop. Thanks. अरे यार इसने वो मेरे को रिवाइव दे दे. पीछे 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 पीछे. इस हाँ यहाँ से जा. यहाँ से राइट जा. राइट राइट राइट. और जहाँ पे मुन्ना है ना वहीं पर ही हूँ. वो Enemy They spotted should A. have dug a deeper. Shot down. Spike planted. Right here. Revealing area. अरे ऊपर ही रह गया. Enemy Take spotted. flight. वो ट्रिप है यहाँ पर. Last player standing. वो करके आएगा वहाँ से शायद. पीछे. As much as this world hurt बहुत दूर है वो तो. it's mine, and I will kill to defend it. ये सिर्फ तेरे को दूसरे साइड जाना तो दूसरे साइड जा सकता है. आई थिंक ये सिर्फ रीना यहाँ पर रहती है ऑफ लगा के. वही पूर्ण जहाँ जा. अरे तू मिड डोर जा रहा है ना. अच्छा चल ठीक है तू उस साइड है. ठीक है मिड डोर जा रहा है ना. मिड डोर के अंदर अपनी वॉल घुमा दे. मतलब वॉल निकाल सीन कर और फिर सी एक और बार दबाएगा ना तो वॉल लंबी हो जाएगी. Scanning ahead. लंबी करके डालूं. हाँ लंबी करके. अबे यार. Deploying drone. Right here. I am the hunter.
कम ऑन, क्लोज आ गया था बंदा। See ya. I know exactly where you are. रीना वहाँ पर है, Down B. हमारे साइड है। One enemy remaining. Last player अरे standing. कहाँ से आ जाते भाई? अरे आई थिंक शुरू हो गया मैच। Spike planted. 100 थी उसका। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं हुआ। रिप्लेस लिखी जरा लो है। बोल दी, मैं तो सिर्फ काउंटिंग कर रहा था, काउंटिंग आते नहीं मेरे को, मैं क्या कर Last round before the switch. Save nothing. Scanning ahead. मिड से आ रहा है सारे आई 120 ऑल्ट 4 कर दूं क्या मैं? क्यों? भाई मैं बता नहीं सकता। ओए पुणे से लेफ्ट में बंदा। हाँ मेन पे। अरे यार हेड मिस हो गया। अरे पीछे तेरे पूर्णज। हाँ यहाँ पर। मेरा क्लिप था। हाँ यहाँ पर। तू दिन आवाज कर रहा है पूर्णज, तब भागने का। मेरा क्लिप था यार। नहीं तेरा क्लिप अच्छा नहीं होगा, तेरे माइक से बहुत आवाज आ रही है। हाँ बट ठीक है, अभी क्या मेरे माइक? हाँ तेरे को अपना थ्रेशोल्ड थोड़ा बढ़ाना चाहिए आई थिंक। नहीं मेरा माइक का आवाज नहीं है। तू देख, तू कुछ मत बोल और लेफ्ट हैंड साइड पे देख, तेरा नाम आएगा। अच्छा पूर्णज है, पूर्णज का है। अच्छा पूर्णज का है, पूर्णज का है। पूर्णज ब्रो माइक समथिंग ठीक है। 30 seconds left. आई थिंक देख उसमें ना सेटिंग में जा, और होता है ऑडियो में, वॉइस चैट में होता है सेंसिटिविटी, माइक थ्रेशोल्ड सेंसिटिविटी, उसको थोड़ा सा बढ़ा दे, राइट कर दे थोड़ी तरफ। यार मस्ती नहीं कर रहा, डस्ट अब आ रहा था यार। Spike planted. अभी भी आ रहा है। और बड़ा पूरा कर दिया। अभी पंखे का आवाज आता है। हाँ अरे सिंपल सी बात है, आगे बैठी रहेगी। नेवर माइंड। सरेंडर कर सकते हैं हम, 3 तो है और 1 तो करना है अगर मैच चालू हो गई तो। मैच चालू हुआ नहीं, मतलब अभी शुरू नहीं हुआ। फिर तो टाइम पास करके भाई। मैं तो क्लिप दिखाऊंगा डिस्कॉर्ड पे आना। ओके अभी वाली। हाँ अभी वाली। ओके गेम हो जाएगी तभी दिखाऊंगा। मैं मस्ती नहीं कर रहा, मेरा ध्यान नहीं था। मैं पता मिनी मैप देख रहा हूँ, स्काई मैं देखा स्काई कहाँ से आ रही है मिनी मैप पे, देखा मुंह सामने 1 टैप, फिर इसको मारा 1 टैप साइफर को, और फिर ओमेन को भी मस्त 1 टैप। अच्छा तू वो नहीं कर रहा था, ऑफ नहीं कर रहा था? नहीं अच्छा 3 1 टैप और ना तू देखना, मैंने ना सोवा के ऊपर कैसा हेड मिस किया, मेरे को ऐसा लगा। मैं अभी रिप्ले में देखूंगा कैसे। अच्छा वो दियो शरीफ Just dead loose. Need a drop. Thanks. अब भी आ रहा है Right here. अब नहीं आ रहा। Revealing area. अरे मैंने मारा था। Enemy spotted B. There. Someone's in defender spot. One enemy remaining. Where is C? My kill. Ditch. Here. Careful.
Scanning ahead. No one escapes my sight. No one. Headshot. Okay, we know the drill. Stick to your roles and we'll crush it. इस अभी भी आ रहा है पूर्णच आ रहा है कर ले ना, वैसे भी कुछ बात नहीं कर रहा, तो कुछ बात करेगा तो समझ में आएगा। बात करेगा ना तो वो शायद आवाज भी कम हो जाएगी, तो कुछ बात तो कर। हाँ वैसे बात करते तो आवाज कम हो जाती है। Deploying drone. Enemy spotted B. घर पे Enemy tag. Enemy spotted B. Revealing area. Reloading. Bomb buddy out. Many enemies dead. Spike planted. One enemy remaining. ये फ्लैंक पोस्ट इधर है। नहीं फ्लैंक नहीं है। Now this is worth celebrating. Now this is worth celebrating. Prime gaming flawless. They don't have a single life worth saving. पहला मैप है इवन। Oh. नहीं अच्छा अभी मैप डिसाइड हो रहा है। वो लोग घूम रहे हैं भाई मैप के उसमें स्टेडियम के बीचों बीच। एक दो लाल हैं और तीन ग्रीन नहीं मतलब पता नहीं, छोटी स्क्रीन में नजर नहीं आ रहा मेरे को। Scanning ahead. Take flight. Enemy spotted B. वेट कर रहा हूँ, खुद तो मार लो। Reloading. Shock dart. Here. Taken out. अरे यार। अरे One enemy बहुत तो है remaining. बढ़िया। भाई क्या हो गया तू सुनना मेरा? अरे मदद क्या बताओ देखो। Careful here. Feeling sight. अरे मैं ओपी सोल बैठी थी। हाँ और वो जंप पिक ना कम से कम 6 जंप पिक किया, बस उसने 2 शॉट उस पे मिस किया, फिर रेस दे जाके उसको मारा। बढ़िया क्या मस्त जंप पिक्स। और भाई कैसे हो? सोल वाइपर लाइट। मैं बढ़िया, आप बताओ। ये देख इधर देख, यहाँ हाँ क्या हो गया? देख मेरे को देख ना। तू कहाँ है? ऐसे दिखे वाले। ओ मैं बढ़िया, आप बताओ सर जी। Deploying drone. Enemy mark. Enemy spotted mid. Okay. Reloading. Plant the spike. Revealing area. Spike down. स्पैम पे तो आ गए इतना। स्पैम पे आ गए यार, स्पैम। ओके Shock dart. Silence. Enemy spotted mid. Last player standing. पता था मेरे को करने वाला। लेफ्ट में आ चुका है वो। लेफ्ट में आ चुका है। ओला वेलकम भाई। अरे से हेलो टू माय लवली हेटर। ओए न्यू गेमर आगे चैट के अंदर ही सिंग से हेलो टू माय लवली हेटर। सर मैं भी बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। एनेक्स कैसे हो? क्या हाल चाल? हम तो बस वेट कर रहे हैं प्रो गेम शुरू हुए।
शरीफ क्यों शरीफ शरीफ नहीं वैंडल फैंटम पैसा नहीं है अरे है मेरे पास फैंटम दे दे कल आपने स्ट्रीम नहीं किया था कल किया था स्ट्रीम किया था ना 5-5.5 घंटे की स्ट्रीम थी वो तो पैसे रहेगा मेरे पास ओके Take flight. अरे बॉडी ब्लॉक यार I've got your trail. लेफ्ट में पूर्ण लेफ्ट में पीछे पीछे और ले पहले और ले इसको और पता ना किधर है डस्क जहाँ खड़ा है ना वहाँ उससे थोड़ा पहले लेफ्ट में I dropped the spike. देख इधर लेफ्ट अंदर ही और ले लिया Satchel out. अरे और क्यों नहीं रहे और क्यों नहीं रहे भाइयों पूर्णज ब्रो अच्छा और ले लिया था क्या किसी ने कल आपने सर फेस कैम वर्स वो वाला कर लो फेस कैम नहीं होता है ब्रो मेरे से फेस कैम का वही है ना पीछे बैकग्राउंड नहीं है तो अभी घर वाले सो रहे हैं अबे गेम शुरू हो गई ओए क्या करना है सरेंडर कर ले Time to stock back सरेंडर up. कर लेते हैं चार्ज चाहिए ना एक पूर्ण टू बीएस करते मैं कर रहा हूँ मैंने नहीं किया Defenders win. एक सेकंड डिस्कॉर्ड पे आते हैं क्या ये इसी गेम के अंदर का रहना है गेम के अंदर भी रह सकते हैं ना ओके डिस्कॉर्ड पूर्ण सर को भी आना है प्रो प्ले देख ले आजा मजा आएगा ठीक है हाँ ओके एक सेकेंड OBS बन was just a little too late. The defuse comes through. Pros don't. इसी के वेट करते गाइस हम एंड डिस्कॉर्ड ऑन These teams matching up in all of those meetings. क्योंकि ये बहुत बढ़िया गेम रहने वाला है बहुत बढ़िया बहुत रोमांचक मुकाबला रहने वाला है ये वाला And a cool stat about this is the first time they played on Haven this year, it was a 13-4 for 100 Thieves. The last time, most recently, they played on Haven, it was a 13-5 for Envy. The script has been flipped. And can Envy continue that potential? Our second round here, again, pressure towards mid. Envy just wants to give 100 Thieves something to think about right away. Then they spread the map and go back to playing. You're still seeing a bit कितने पे अभी ये रिफ्रेश कर रहा हूँ 14 13 of crashies, and it looks like this time it's not just a little bit of eye candy to make him think about stuff. They do get the spike down, they get it down mid. Okay guys, nice thing for 100 Thieves is they do have some presence down तुमने long, stream on down करके क्या? They're sending to that way. That should open up garage a bit more, or excuse me, window B window a bit more for them to work with, and for the remaining members of Envy, you're gonna have to split your attention, right? Because 100 Thieves are gonna push out from B. You're gonna be sandwiched in from the other side. Where do you turn your attention to for FNS? First attention goes over to Asuna, but Marv come up big. He's already gotten 2. One enemy remaining. Envy these first few rounds pushing One hit? the ticket to just see how 100 Thieves react. They are reacting pretty well, especially on this eco. 4 kill for Nitro. The Marshall उसका एक और बार उसका असल्ट आ गया सर आप जीटे खेलते हो नहीं ब्रो एनेक्स मैंने देखा था आप जीटे की स्ट्रीम कर रहे थे बट नहीं मैं अभी खेलता नहीं मैंने मेरे पास है भी नहीं डाउनलोड नहीं करी थी मैंने परचेज नहीं करी थी मेरे को वही तो आई थिंक 200 वगैरह पूरी पार्टी वार्टी चाहिए ना जीटे खेलने के लिए सोलो खेलेंगे तो थोड़ा सा स्लो रहेगा या मज़ा नहीं आया तो ये मेरे दोस्तों ने शुरू नहीं करी GTA 5 तो हमने भी वो लाइक ओके फाइन
वैल्यू पे स्टिक करते हैं फिर। Well, this is the thing. You follow up with one of those sheriffs, see if you can get somebody behind a marshal. It's kind of रोल प्ले देखा है मैंने कुछ होता है बट पूरा समझ में नहीं आया। ओके वेट, रोल प्ले इज नथिंग बट जैसा तू रियल लाइफ में करता है वो तेको एक गेम में करना है। लाइक अगर तू पुलिस वाला बनता तो देखो रियल लाइफ में तू कैसे एक्ट करेगा वैसे एक्ट करना है। वो जो थोड़ा ऐसे एंटरटेनिंग होना चाहिए ना यार, वो एंटरटेनिंग है ओनली विद फ्रेंड्स। अगर देखो पे तेरे दोस्तों से सब खेलने वाले यार जान पहचान है। नहीं मतलब इम्प्रॉम्प्टू हो गया ना, इम्प्रॉम्प्टू कॉमेडी मतलब ऑन द स्पॉट तेरे को कुछ डायलॉग वायलॉग सोच के रखने हैं, पुलिस वाला कैसा करेगा, थोड़ा एंटरटेनिंग कैसे होना। अभी जैसे बैंक रॉबरी भी करते लोग, तो अभी देखो तू क्या समझेगा गेम है मार दे तो ऐसा नहीं चलता है। लोग बैंक रॉबरी भी ऐसा करेंगे हॉस्टेज लेके आएंगे और लोग बोलेंगे कि हम हमारे पास हॉस्टेज है, तुम लोग हम लोग को मार नहीं सकते, हम लोग को या हमारी गाड़ी में बैठ के जाने दो फिर और तुम हॉस्टेज ले लो अगर हम गाड़ी में बैठेंगे। तो फिर ऐसा बैठ के दे कैन रन हॉस्टेज रूल का रहेगा, फिर पुलिस उनको चेज करती है लाइक रियल लाइफ। और मार दिया तो वो गेम ही नहीं होती, फिर सर्वर से बैन मिल जाएगा उनको। सर्वर रहते हैं हर एक रोल प्ले के, एक सर्वर ज्वाइन करना पड़ेगा जो जिसमें तेरे दोस्त लोग खेलते हैं। आई सी आपके साथ खेलता तो तू खेलता है क्या? नहीं मैं देखता था पहले, स्ट्रीम देखता था, बाहर के लोग को देखता था और अपने इंडिया में से राकर्स जोन गेमिंग है ना, हाँ उसको पहले मतलब उसके हाइलाइट्स देखता था। ओके यार बट GTA 5 का ना फॉलोइंग काफी इंडिया के अंदर काफी हो गई है बहुत, वो तो लोगों को पसंद आता है। असुना को देख, हाँ ट्रेड हो गया। नहीं लाइक उसने देखा कैसे वो फैंटम घुमाया और वो हेड कनेक्ट हुआ। भाई ईथन भाई खेलने आए ईथन, आज मारे हारने नहीं आए, खेलने आए। Still with the Ares, still with the Spectre versus the Vandals. Yay and Crashy set up quite nicely. nicely. 2v2 कैसे गए? Oh! Will he get spammed? So close, backing off from the shock dart. Definitely would have taken out. Deal. But Hiko, if Hiko can wrap around, if attention's drawn over to Steel, Hiko can have some room to work with. They double up. Depends on Ye. Okay, this is a good smoke actually. Well, Steel's the first one to go. He drops. Hiko yet again. In a clutch situation. अगर यही उसके हाथ में वो होती ना, एरीज होती, अरे एरीज होती तो मार लेता। स्पेक्टर के जगह हाँ कुछ भी होता है इसके अलावा, कोई AR होती ना, कोई भी ढंग की ऑटोमेटिक गन होती। जज को छोड़ के, जज भी ऑटोमेटिक ही है। भैया ले लो, अक्षत खेलेंगे मजा आएगा। अच्छा एक साथ खेलेंगे? अरे लगा अक्षत मेरे दोस्त का नाम है ना, तो मैंने लगा कि अक्षत कहाँ से आ गया। एक साथ खेलेंगे ठीक है। GTA को कोई ना कोई ऑफर चल रहा होगा, खरीदना पड़ेगी यार गेम। बता तेरे को प्लान है क्या? तो मैंने तो फ्री में ली थी जब बीच में एपिक गेम्स पे फ्री था ना। हाँ नहीं तो देखो 1500 तो खर्चा करना ही पड़ेगा। ये तो 1500 या 1100 का खर्चा है। अभी वैसे सेल आने वाली है आई थिंक, मैंने सुना है। विंटर सेल भी आया, लाइक विंटर सेल को तो टाइम पे बढ़ाती है, ये टाइम पे सेल आती है। तेरे को खेलने का प्लान है क्या? क्या प्लान है क्या खेलने का? मतलब रह गए लोग तो व्हाई नॉट खेल सकते हैं ना। हाँ मतलब मेरे पास तो गेम पड़ी भी है ना, कि मैं फिर जुगाड़ करता हूँ। मे भी हो सकता है मैं किसी और का अकाउंट ले लूँ। प्लेस्टेशन है तेरे पास? नो बट PS भी था। और फ्लैशेस मतलब मेरे पास CD पड़ी है PS4 में और PC में भी ओरिजिनल खरीदी हुई है। तो अगर तेरे पास एक भी कोई चीज़ होती तो अभी ट्रेंडिंग में है GTA 5। हाँ एनेक्स प्रो है तो मैंने देखा है, उसकी क्लिप्स बहुत पॉपुलर हो जाती हैं। Sees the tip of the barrel. Yay, coming up with 2 huge frags. Drops the operator, drops Hiko. 1v3, but वो है ultimate है इसका, there is a chance तो। Now he does have his own lockdown. ना but उनको पता है कि यही वो है, जिंदा है। He really has an opening. The benefit for him. इसके पास कोई आइडिया भी नहीं है प्लान कौन कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो he's just going to VCT होगा क्या? ना नहीं हो सकता है। सील का एम मेरे को इतना अच्छा नहीं लगता जितना लोग कहते हैं। फिनिश का लगता है। Okay. That helps. Took no damage either. So it looks like it's just going to be a bit of economy damage onto Envy.
FNS was able to pick. अच्छा ये शॉट्स मार रहे क्या? क्या स्कोर चल रहा है अभी? Next round, 100 Thieves still with the lead, but Envy, I like what we saw out of them there. क्या वो चल रहा है? कितने kills point of track कर रहे हैं? Any idea? There might have been a push down from Ethan after the Killjoy turret was removed, and really not being kind of deterred by the fact that the gravity well was A. They had a mid-round call to go for, and good double kill cleanups around the map helped them secure round 2 as we move into round 6 here. Ultimates on both sides are starting to mount. This is going to get spicier and spicier here. That was Ye's Blade Storm that went off, so he's back on the operator. As we said, 2-3 on okay and eco इनका. 4 pistols, 1 rifle. But they can still win eco as soon as ना ultimate पे. Here the Blade Storm has been used as well. ये लोग डिफेंस में इतना पुश क्यों करके खेल रहे हैं aggressive मतलब? I think eco है ना तो उनको close sides लेने पड़ेंगे. क्या तो एक क्लासिक की राइट लेग या फ्रेंजी का 2 हेडशॉट कनेक्ट हो गए. Are we going to get Sheriff pushed real fast and just get laser beamed in the head here? Let's see this squad doing. Nice shot by Finesse to drop. तेरे को पता है वैंडल और फैंटम का जितना टाइम लगता है ना वो गोली चलने में 2 गोली निकलने में उतने में मेरे 11 वॉचिंग आ रही है. कोई 11 की वॉचिंग कैसे आ रही है? 4 की लिखा है. 5 की आया था ला काढ़िया काढ़िया. Just get the timing. No, he's rotating back off. Asuna's gonna have a read on this. Look at where Asuna is. He's already working his way back towards mid. Everybody's being a rat here. Finesse is in A. Asuna, however, moving down. They have the bigger impact frag. He can get around. He'll be able to now hear them, I think, running up towards that right side. You can see Steel already rotating out of Okay, yeah, पूरा सी खाली है उनका ही है. 4 or 5 different flanks going on there, and that was one of the more important fine. ones. This is an equal round, right? Swings around, knocks Asuna out, leaving Steel alone in a 1v5. There was so much macro rotations to break down in that round. Riv, where do you start? I don't know, but Oh, indeed. Envy's just sixth sense right now. भाई 3-3 टक्कर का मुकाबला चल रहा है. Flawless prime. Saving them in these आया था एक दिन वो कार गेम है. And then he just creates pressure. He plays his life and does not show. अरे हाँ वो अरे हाँ I remember वो रॉकेट लीग खेल रहे थे हम. उस दिन आए थे आप. We had Finesse in that round, so there was always an option for Envy. But I remember. कर सकते हैं. मैं कोई फिर जुगाड़ करता हूँ. मे बी मेरे भाई के पास होगा GTA 5 कोई तरीका होगा उसको उसका अकाउंट लेने का. मे बी Super chaotic round again for 100 Thieves. They had pistols, so they should be able to bring in a bit more, and that is the case. You've got rifles. कार से आप फुटबॉल खेल रहे हो. हाँ रॉकेट लीग था. रॉकेट लीग समझ गया मैं. Ye's going to be rocking the same. सही था वो भी सही था. मजा आ रहा था इसके अंदर भी. अगर आपको खेलने आना तो बताओ. उसकी भी आती है. उसकी भी वॉचिंग आती है. ऐसी बात नहीं है. क्या की वॉचिंग क्या की नहीं मेरे को क्या possible cosmic divide down long C if that's where they need to take it back. मेरे को तो 3 दिखा रहा है. ओह चलो 11 की वॉचिंग आपकी. ओह विक्टर वेट व्हाट देखा मैंने. They had no idea who he was, and you pop out of that flash, you just get blinded. There's nowhere to look, there's nowhere to go. It's just Ethan that remains. On around for long. आपको आ रही होगी कि ब्रो 11 की वॉचिंग. Annex. Normally do not go down or do not. अगर noob gamer लिख रहा हो तो उसके बाद भी सुन रहा है. They know where you are. They're peeking you as you're resetting your recoil. Victor. अच्छा उस दिन आया था 11 की वॉचिंग. अरे हाँ अरे ओके नाउ आई गेट इट. हाँ उस दिन भाई उस दिन की मैं अगर व्यूज देखूं और अपना वॉच टाइम देखूं ना क्या बढ़िया आया था भाई. नूब गेमर लिख रहा है माय हेटेड नो स्ट्रीम. On the side of 100 Thieves against Steel. बोला मैंने. A pistol, and they do have plenty of ults, but the number one ultimate that Hater bro, तेरी stream चल रही है. Like this is the Blade Storm not online. 100 Thieves looking to dial up a bit of pressure across mid, but Ethan is already dropped. हाँ उस टाइम का वॉच टाइम मेरे काफी याद है. तेरे को पता है उसके अंदर मेरे I think 60 वो हैं व्यूज हैं. Even once they peak, it's just Envy tearing them down on this eco round. Victor wants more. हाँ वही 60 के अराउंड लग रहे थे. विक्टर का एम आज बहुत क्रिस्प है. फिर ना हाँ. अरे सबका क्रिस्प था यार एनवी का पिछले उस गेम में भी. इसमें वो थोड़ा एग्रो खेल रहे हैं वो. 100 Thieves के अगेंस्ट. पहले वाले में वो काफी रिस्पेक्ट कर रहे थे.
Well, and I think you felt a little swag Jump peak, in that round nice. from Envy, right? Like you felt Yeah, yeah, it's 13 and 3. Send a message. And guess what? मेरे को नहीं दिख रहा. अरे ब्रो तेरा स्ट्रीम देख एक बारी, तेरे को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? मैं भी देखता हूँ. तेरी स्ट्रीम चालू हुई है कि नहीं है? Pulled some of that pressure to try to dial up from the Hater को नहीं दिख defensive रहा. side around mid to try to catch. नहीं चल रहा है ओए. देख बर्लिन VCT वॉच पार्टी. आ गया अभी आ गया. All the big fan है. अरे मैं अपना व्यूज चेक करके दिखाता हूँ एक बारी कितने आए उसके अंदर. अरे तू भी रॉकेट लीग स्ट्रीम किया कर. रॉकेट लीग में काफी लोग आते हैं. आई थिंक रॉकेट लीग में काफी लोग आते हैं. फिर एनिक्स का था ये. ऐसे एनिक्स की वो थी, ये देन थी. They're switching it up a little bit as you come back to the map. You will see पहला हमने रॉकेट लीग का किया था ना 78 व्यूज भाई. ओहो हाँ बोल. तो उस दिन इसने शायद से ये किया था, रेड किया था. देखो हाँ towards the A side. Ladies and gentlemen, हो सकता है 11 व्यूज आफ्टर पब्लिशिंग एंड ऑन द स्पॉट. वहाँ पर पूरे 20 घंटे की वो आई है वॉच टाइम. in this match. I mean, we're I still OP, in the OP. first half and it's punch Noob Gamer का चैनल क्या है? Noob Gamer is not channel. Noob है, उसका चैनल नहीं है कोई. वो सब्सक्राइबर नहीं है. वो सब्सक्राइबर वो नहीं है. स्ट्रीमर नहीं है. सब्सक्राइबर OP. Before, right? And you've got those two Astra stars set up on Nitros. You can possibly drop out with that op. I just don't know that he's going to get a shot at anyone. I don't know. बाकी लोगों का एम कैसा लग रहा है? मैंने ध्यान नहीं दिया अभी. मैं तो जितना जिस हिसाब से देख रहा हूँ ये और विक्टर का एम बहुत मस्त चल रहा है. वो तो चलो एनवी हो गए. 100 थी में कौन देखा नहीं यार. मतलब वही है ना, फाइट लेने से पहले मर जा रही है बराबर. 20 घंटा 1v1 नहीं हो रहा. वो जो काफी लोगों ने रॉकेट स्ट्रीम वाले रॉकेट लीग की स्ट्रीम देखी एंड इवन गेम खत्म होने के बाद भी, मतलब स्ट्रीम खत्म होने के बाद भी थोड़े लोगों ने वीडियोस देखे, वो वाली स्ट्रीम देखी, मतलब हाइलाइट्स देखे या फिर. ओ भाई क्या शॉट था. क्या शॉट था. Slows down Envy considerably. You can see that Marv has to watch the backside. The turret's gone. They lost finesse in his utility, so it's now a forward commitment with just these members. Bro, next आपका वीडियो आने वाली है ना, आपकी बर्थडे स्पेशल वीडियो. To make this actually work, remember that lockdown is there. Waiting for it. Decide to use it for 100 Thieves. Yeah, the thing is, so Seal's just now going to show up. So there was not a lurk, there was not a rat play, there wasn't anything that's normally customary out of Steel in a situation like that. He stayed at home. Now he's going to show up. You mentioned he has that 4v4 retake ultimate है. Oh, counter ultimate. Right on time. You've also got the Cosmic Divide. Nice, yeah. Okay, great. Nitro looking for more. Crashies getting a little bit of info with his util, and he got more than he bargained for. Marv though is in a great spot, drops things down to 1v1. बर्थडे कब आता है? नोट गेमर पूछ रहा है. हाँ मैंने बताया नहीं किसी को भी. तो फेब में आता है कभी. अभी फेब में. फेब में बस आता है. अभी बताया नहीं मुझे. Under the radar for this event, we've seen the stats. It's Marv topping those stats. अगला पर एक प्रॉब्लम हो गया. क्या हो गया? अच्छा अगला वीडियो आ रहा है. हाँ प्रॉब्लम क्या हो गया बताओ. एनेक्स क्या बर्थडे आ रहा है, वो उस पे ना कोई ओपी मीम वीडियो बनाने वाले हैं. हाँ तेरे को बोल रहा था कोई मीम वीडियो बनाना. हाँ ओपी मीम वीडियो पूरी फुल ऑन एडिटिंग करके. अभी तुमने इसकी वीडियो देखी है ना मीम वाली, तो थोड़ी सी मतलब उससे भी ज्यादा एडिटिंग, उससे भी ज्यादा इफेक्ट्स डाल के. बर्थडे तो ऑफ कोर्स. हाँ बर्थडे स्पेशल मीम. कब है बर्थडे? ये बताया था या नहीं बताया था मेरे को याद नहीं आ रहा. ए मार catches 100 Thieves. Oh, Marv, what are you in a brutal spot as Marv is just continuing to pile it on. He is just saucing people right now with these frags. They are not deterred. क्या वन टैप हो सकता है वो. There is a one नाइट्रो हो गया वन टैप. right now for Envy. वो Nitro, however, bringing a bit of that momentum from their games yesterday into this. ये नूब गेमर बोल रहा है डस्क कुछ तो बोल ले. उस दिन सैलरी नहीं बता रहा था, अब बर्थडे नहीं बता दे. अरे सैलरी में बता नहीं सकता, वो एनडीए कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना. नहीं वो नहीं, मतलब
ऐसा नहीं बोल रहे कि सैलरी बता, बोल रहे सैलरी नहीं बता रहा था, ऑफ कोर्स बर्थडे तो बताते हैं। बर्थडे का अकाउंट हैक हो जाते हैं बहुत इजी तरीके से, अगर बर्थडे बता लेते हैं ना तो थोड़ा मुझे डर लगता है उसमें। अच्छा मैं एडिट करने गया था लास्ट वीडियो में, डिलीट हो गया। ओहो सेव ही नहीं हुआ, लाइट चला गया। अरे भाई ये ना पीसी की दिक्कत रहती है मेरे को, यूपीएस लगाओ उसके अंदर। लैपटॉप में कभी दिक्कत नहीं आती है। लैपटॉप में तो मेरा अभी स्ट्रीम बंद हो जाए तो भी मेरा स्ट्रीम चलता रहेगा, मतलब क्योंकि इवन इंटरनेट भी है वो उससे कनेक्टेड है, उसका इन्वर्टर है अलग सा। ओ आसन नाइस, he got one kill and got out clean. Oh shit, right में कोई नहीं देखेगा। The up is there. Nope. Asuna felt that one. He's got the blade storm to work with too. यार राइट में नहीं देख रहा अभी। भाई डेफो ने क्या खेला भाई, क्या खेला डेफो ने उस पिछले वाले गेम के अंदर, फोड़ ही दिया भाई। So now this is a retake of space, and mentioning Steel at the beginning of last round, it may seem less impactful now, but we saw him spray through double ये भाई doors तुम to क्या take बोल down रहे कि Finesse's सॉफ्टवेयर turret. इंजीनियर Very का heavy दिमाग play ना at the लगाओ, beginning of नॉर्मल last आदमी का round. दिमाग। Like you said, अरे नॉर्मल आदमी का दिमाग लगाएंगे तो अकाउंट हैक तो नॉर्मल आदमियों का ही होता है ना। the top of the strategies of Nitro and 100 Thieves, he goes down as Ye enters. कॉम्प्रोमाइज तो उन्हीं का होता है, हमें तो पता है ना, मतलब ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए थोड़ी ना होती है अकाउंट हैक करने के लिए। मेरा बर्थडे खत्म कब था? To planning B, Ye still holding link with the op. हो गया? Steel's alone on C right now, and there was a round. Marv tried creeping his way through. He gets punished at the hands of Ethan. Asuna leg shot gets one on FNS as well. Yay! What a shot! Victor gets one as well. भाई एनवी भाई क्रिस्प है भाई। It's a straight up 2v2. It's just Ye who has an ultimate. Steal. अरे ब्रो आपको अच्छा वही तो आप अपने वीडियो एडिट कर रहे थे बट सेव या एक्सपोर्ट करने जा रहे थे और डिलीट हो गई। तो 5 दिन पहले था। अरे अच्छा मुझे लगा कि ये कह रहे थे कि आप अपने बर्थडे वाले दिन राउंड देख भाई। हाँ देख रहा था मैं साइड में, और क्या काफी सही खेला। और ये 2v4 कर गए ना, ये completely in the heads of 100 Thieves 2v4 था आई थिंक ये उसका विक्टर एंड ये लास्ट में ये दोनों वैसे थे। top of the scoreboard for Envy. Absolutely incredible as Ye continues to pick up these frags. Push peeking with the operator against an automatic, picks up that phantom and then just drops Steel. Incredible play, incredible awareness right now from Envy in their post plans and their execution. यही भाई क्या खेल रहा है Shadow welcome to the stream. Blade storm out from Asuna. I like that early on, trying to take some space away, apply some pressure, and it does not seem to matter as Asuna and the rest of 100 Thieves reach a little bit deeper. वो नहीं कर पाया, नीचे नहीं खींच पाया मैं उसको, वैसे सही था पर वो क्राउच हो गया ना। Finesse has the ult here if they want to secure final round. They get मेरे साथ भी बहुत होता है। Is that gravity well? They just threw into Cubby to make sure. जाओ और जाओ मारो। Recall star. Making sure that Marv is ready to play. ये एकदम हाई ऑन कॉन्फिडेंस आए हैं एनवी up as well for Envy. बहुत ज्यादा। There it is. Pushing out Ethan. He still wants to stay. He gets gravity wells as he decides. तेरे को पता है हुआ क्या एक्चुअली में, जब वो फ्लैश हुआ और वो जंप मार के वापस आ गया ना, उसको लग रहा है कि वो आ चुका है। Gosh, that was close. But they invested in to try to clear it out. Not able to do so with the shock dart, so 100 Thieves has to. उसको पता भी नहीं चला वो ग्रेविटी वेल के अंदर था। Nice. But he's got to judge. He's gonna have to get so much closer in order to make it sing. Spots one, swings around, alarm bot. Okay, FNS GG everything in front of him. FNS playing down tight. Oh, and I don't know that Nitro knows. Oh no. Oh no. FNS was there. Victor was there भाई as आज well. तो कुछ और खा के आए हैं भाई ये। On Haven to start off this best of 3. You talked Riv leading. अच्छा ये मैप सिलेक्शन किसका था वगैरह। Right, historically, Let me check. they go toe to toe a lot. 9 it's of the often maps. Close. 9 of the times that they've played on maps 13, 7 or closer. Haven पिक था एनवी का, नेक्स्ट एसेंट है उसका 100 थीव्स का, फिर आइसबॉक्स है एनवी का। And it looks like they have that same बैन क्या हुआ फिर वही मतलब वही बैन हो गया। on these teams being even at 2-2 on Haven. बैन से लिखे आते यार, तो तेरे को बैन्स का कैसे पता लगता है? उधर रेड कलर में जो 2 मैप्स है वो बैंड है।
Thank you very much, Doug. मैं स्पाइक डॉट डीजी में देख रहा हूँ ना. The mental will उसमें वही as Envy puts 9 तो स्ट्रीम पे तो पीछे जाके देखता है. together straight to close out that half. 9-3 fashion. And that is Yes, bro, Delhi रहता हूँ Delhi. मैं इसे नॉर्मली स्ट्रीम पे देखा था कल, इसलिए पता चला था. Okay. मैं पीछे जाता हूँ जब मैम घूम रहे थे ना. रुक जा मैं देख रहा हूँ, तू मत जा. देख लिया, अब तो पहुँच भी गया. ब्रीज और बाइंड है. बाइंड बैन किया है 100 Thieves ने और ब्रीज बैन किया है एनवी ने. You called it 9 Yes, bro, Delhi रहता हूँ bro. You talk about mentals being tested. I honestly, those other times when you're playing against Gambit, when you're playing against Ascend yesterday, But अभी तो it felt like 100 Thieves still had some ये डिफेंस था ना. right? It felt like they had गलत हो गया. डिफेंस में कैसे हार गई 100 Thieves? मेरे को लग रहा है गया ये 2-0 होगा, clean 2-0 होगा. Weren't getting executed or CNED popped off or something like that. Here, yes, he's popping off, but they are not in control. Look at that scoreline. He's got 20 kills in a single half. 24 471 ACS. देखो पता है ये ऊपर चल रहा है सबसे टॉप फ्रैगर उसमें. पहले 10 था ना, अब यही लग रहा है. 10 वाले नशे करके आया है ये भाई. Once he started picking up the op, I'm questioning even before this, to be honest. But ये बहुत precise खेलते हैं यार ये. If you can't do it with the op, you do it with the classic, right? It's ridiculous. Like he wins the round in anyways, right? He is literally embarrassing people. This round with the 1v3 clutch, he took out Osman when he's like mid-air with the class. Like, what is that? And let's not forget how this half started. Okay, we saw. If you remember that pistol round, that was kind of like a mess. And now the teams control the situation. Almost from head to toe with that diffuse in front of everybody. So maybe if that hadn't happened, where would we be? Well, Envy is looking clean right now, and it's up to 100 Thieves to contain Ye as we head back over to Riven Doug to get into the second half. Ooh. Thank you so much. Here they have. It's still an anything can happen moment, but for a lot, I don't think it feels like that, Doug. Envy have been on such a roll to get that many rounds consistently, and if they get pistol, that is going to be tough for 100 Thieves to find a way back. They can place now where they want the members. Attack side is considered the more aggressive, the easier to be able to initiate onto that site and hold it. So we'll see what they can do. This is a C hit through and through. You've got the drone that's made its way up long. You also had the Trailblazer to work their way into Garage. They've gotten access onto the site. Ethan should be able to get the spike down, but the fight बिना किसी को मारे plant easy retake C. Taskmasters looking to go toe to toe. Steals in good spot. But no, it's Ye again. The man does भाई ये 3 kill चालू हो गया गेम. और El Diablo on full display as he's gotten 3 early on. तू क्या कर रहा था? मैं डेथमैच खेल रहा हूँ. अच्छा भाई ये ले गया भाई, लेके जा रहे भाई, अलग ही नशे करके आया है. कौन यही तो यही They're just as aggressive on defense as they are on offense. They have one of the most terrifying defenses. 23 and 5. In your face at the drop of the wall, and here we see it again on Haven. Opposition team में top scorer के पास सिर्फ 11 kills. And ये बंदा 23 पे. They have a question to answer in front of them. Tens but ये tens वाला flick मार नहीं रहा, ये मतलब बहुत ही decisive shot, precision. OP. Not exceptionally surprising to see them. They're like, fine, you know, we're going to stick with pistols. We know that there's always an opportunity. भाई आपका 100K subs कब होगा? On the attacking कौन लेगा ये? Anik. Bro. 100K का तो पता नहीं बन के का. बोल ना जब आपका होएगा. हाँ पहले आप अपना कर लो, फिर यहाँ पर रेड मार देना 100K की. तो मैं वही वाली रेड वाले जाऊँगा लिथल स्नाइपर पे, फिर न्यूब गेमर में शुरू कर देगा. हमारी क्लैन बन जाएगी एक. गेमिंग हाउस बनाएंगे, फिर सभी घर में रुक के वो करेंगे, स्ट्रीमिंग करेंगे. इन गेम वो करें, इन हाउस पार्टीज करेंगे. भाई दोनों सेम चीज कर रहे हैं, बट एनवी बेटर है. Victor's just looking for more. The gravity well was there. Ye shows up to add insult to injury. Ye looking Damn, he to take care of it. He's got an upgraded weapon.
क्या हो गया? हाँ वो काफी अच्छा खेल रहा है अभी। एम मूवमेंट एंड either as Marv cleans that up. Envy gets भाई a गार्डियन now एम बॉट है 100 यार। thieves. They should be able to have more rifles. You did deal a bit of damage to गार्डियन में बताऊँ क्या होता है, तो तेरे को पता है कि तेरे को ऊपर नीचे फ्लिक करने की कोई जरूरत नहीं, तेरे को रिकॉइल कंट्रोल भी करने की कोई जरूरत नहीं है. You just have to wait for the for you yourself to be stable, है ना? तो ये सही रहता है. आपको सिर्फ लेफ्ट राइट मूव करना होता है अपना माउस, नीचे तो मूव करते ही नहीं मैं कभी. Do they go fast or do they try to Mortal Scout जैसा पार्टी? अरे bro, exactly. FNS plays garage. What's their purpose for A? What's their purpose for You know, फिर धीरे-धीरे वो भी हो जाएंगे, मतलब फीमेल स्ट्रीमर्स को भी ले लेंगे, फिर तो कंट्रोवर्सीज क्रिएट करेंगे, फिर और लोग आएंगे देखने के लिए, फिर वायरल चल जाएंगे लोगन पॉल की तरह, you know? वर्ल्ड डोमिनेशन भी आएगा लास्ट में. प्लान सेट है अपना. एक मीटिंग रखेंगे ओबामा के साथ. Instant reset. Going up top, looking for more. प्लान सही है एकदम. And it does not look like 100 Thieves are going to give him an opportunity, but नो बंदे मेरे को क्यों मिलते हैं? a little bit of flash, a little bit jiggle, a little shoulder. It's like they can't gain any ground. Why do you want to meet Scout? This is too much of a dance. Scout में ज़्यादा follow करता नहीं सही बताऊँ. He does it with the last blade that he had. Ethan gets dropped. So मेरे को नहीं पता वो बंदा अच्छा है बुरा है. मेरे को मैं बस नाम सुना है तो अच्छा ही होगा. He's going to continue to push his way forward. Hiko. कैरी, हाँ कैरी को तो जानता हूँ, मतलब पर्सनली नहीं, मतलब पता है उसके बारे में. उसको तो उसके बारे में किसको नहीं पता भाई. Gets flashed up. Ooh, big flash. Do anything with that steal? Good for 3. हाँ आशीष भी, आशीष तो मतलब वो तो ऐसा है ना कि जो गेमिंग में नहीं है फिर भी उसमें है. सबको पता है उसके बारे में. कॉमेडी स्क्रिप्ट्स आशीष चंचलानी 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 चलानी तो नहीं है उसका नाम. चंचलानी है ना उसका नाम. हाँ सही है. बहुत एक्सप्रेसिव बंदा है वो. सारे इमोशंस जो है एकदम हाइटेंड करके आते हैं, यू नो, एम्प्लीफाइड इमोशंस. You felt Ye breathing down your neck. He's just ripping people's faces off all over the map. They call for a mid hit. They're able to hold things off, and yeah, Steel goes absolutely bonkers on this side as well to hold things up for him. And that's where you see some of that expertise. Absolutely see some of that experience on full display for him. पे रहता है. Being able to switch it up. अरे यार ठीक है भाई. तूने बोला वही रहता है भाई. अच्छा रेंट पे. वो एरिया में. ओके ओके. अरे वो दिल्ली में तो रहता है आई थिंक. नहीं दिल्ली में नहीं रहता, मुंबई में रहता है ना आशीष. उल्लास नगर थाने कल्याण साइड. हाँ उसके डैड के थिएटर्स हैं. जो कैरी से मिलोगे? कैरी से मिलवा रहे हो ब्रो? बताओ. नहीं यार मैं मिलना नहीं चाहता यार उससे. मुझको डर लगता है उससे. पता नहीं कुछ बोल दिया तो मेरे पास रिप्लाई भी नहीं होगा यार उसका. कमबैक होना चाहिए ना आपके पास. कोई बंदा अगर वो तो बंदा सोते सोते कमबैक दे दे लोगों को 20 गालियों के साथ. ऐसे लोगों से डर लगता है भाई. Right, and 100 Thieves were there, so they play around the space. They intentionally don't clear it out to give off the impression. दिमाग लगा के बात करनी पड़ती है उन लोगों से फिर. And this is all bait, Riv. This is all just to draw attention. Crashes and Ye are able to get a couple big ones. Total domination चल रहा है अभी तो. Towards long. किसका? And Envy. Ethan who's there now. Hiko's working his way up short. You've got Envy members. They smell blood in the water. They're starting. हाँ इको अच्छा खेल रहा था बट एक बंदा क्या करेगा. अभी भी अच्छा खेल रहा देख मारा. बट वही है जैसे हीको है ना, हीको का पूरा मीम ही चलता है कि बहुत बंदा वेट करता है. वेट बहुत ज्यादा करता है. Everybody just coming up huge. Crashes there, held down the site. The first kill, the second kill almost. Ye picks another one up to come back and clean in the site. डांस ही नहीं है भाई. मतलब it doesn't just have to be Ye. The sites are still held down. ऐसे लग रहा है कोई डिफरेंट गेम खेल रहा है. This entire team has brought 100 Thieves का टाइम आउट 12-4. It's hard to stress the importance of Crashes' kill. They're on the long to open things up because remember, it was a bait play.
right? Like it was all about drawing attention towards mid, drawing attention towards B, and to give off the impression there's nobody long. Again, I want to draw us back to that recon dart that posted up down long. Nobody cleared it out. आप रूटलेस गेमिंग से मीट करोगे? अब ये रूटलेस कौन है? तेरे को पता है रूटलेस गेमिंग? मेरे को भी नहीं पता ब्रो। ब्रो भाई है कि तेरा? अरे तेरे को पता है राकाज़ोन गेमिंग के अगेंस्ट? अरे मैंने तेरे को बताया था ना, राकाज़ोन गेमिंग के अगेंस्ट में खेला हूँ वैलोरेंट और जीता भी हुआ था। मेरे को पता भी नहीं था कि वो राकाज़ोन गेमिंग है वो। उसके बाद अक्षित ने फिर से स्ट्रीम देखी और उसने बोला अरे अंकिता सी है यहाँ पर राकाज़ोन गेमिंग, अरे पूरी टीम है उनकी और तुम उसके अगेंस्ट खेल रहा था। बट यार वही है कि यूट्यूब में वीडियोस क्लिप करके डाउनलोड करना और उनको फिर वापस अपलोड करना वो बहुत मुश्किल है, मतलब बहुत ही ज़्यादा टायरिंग काम है स्ट्रीम से निकालना। अब मैं हूँ अभी 8, 7, 6, 5 टोटल गेमिंग का भाई। अबे मुन्ना तेरे को टोटल गेमिंग पता है कौन है? नहीं वही वाला अभी पूछ रहा टोटल गेमिंग कौन है? मेरे को भी नहीं पता ब्रो टोटल गेमिंग कौन है भाई। Save, kind of a save round by 100 thieves on the last round. Oh, Crashes is dead. एक gun upgrade. Nice, Ethan भाई। एक frenzy से ले गया। There it is, Marv trying to clear that out. The lockdown goes off. Marv just playing on the other side. Marv just playing on the other side. The frenzy's there. What? The classic. Yes. But Ethan wins. Aye, this frenzy is OP. And all of 100 members, उसको गन भी मिल गई। 100 thieves are there. They're a little bit weak, but they're there. भाई Ethan wins that one. He's got 3 on the round so far. FNS is alone here. YouTube में डालो टोटल गेमिंग सर्च करो, okay? Mike is down. It's continuing to tick away as well. The one thing is, I don't know that they know. If he kills Hiko, this is incredibly scary. Are there mollies on that? It's just alarm. Content बनाते हैं। Yeah, they haven't fully rotated. Oh, 28 million सब्सक्राइबर वाला है बंदा। Oh, Free Fire. Oh, वही तभी सोचूं इसका कभी नाम क्यों नहीं सुना। क्योंकि फ्री फायर वाली कम्युनिटी नहीं है ना। कोई देखता है इसलिए वैलोरेंट में कुछ नहीं पता। मैं फ्री फायर देखता नहीं क्योंकि खेलता है अच्छा नहीं लगता फ्री फायर मैंने ना सोचा था यार क्योंकि पबजी जैसे ही है ना वो। पबजी से भाई 10 times 20 times 100 times वर्स। हाँ Losing a few, back to Spectres, Guardians in hand, Marshall for पर as it is going to be a full कम रैम वाले फोन में चल जाता है ना इसलिए हाँ ये कॉपी है इसका। हाँ फुल ऑन कॉपी। अरे पबजी बैन करने के बाद यूज करना सही है। टोटल गेमिंग तो बढ़िया है, मतलब काफी अच्छी वो है इसकी फॉलोइंग बना ली। अरे ये जो न्यू स्पेक्टर स्किन है कौन सी है? स्पेक्टर ही नाम है, स्पेक्ट्रम। ओ हाँ स्पेक्ट्रम, हाँ हाँ। इसमें कौन फैंटम क्लासिक गार्डियन और चौथी कौन सी है? आ रहे हैं इसमें बुलडॉग फ्री फायर इज इक्वल टू 30। उल्टी वाली टट्टी। ये YouTube पे मत बोल दो यार। YouTube पे बहुत फैन फॉलोइंग है इसकी। मतलब 14-15 साल के बच्चे होते हैं ना। मैं भी बच्चा ही हूँ पर फिर भी बड़ा हो गया। मैं 16। Victor, hello, surprise! I'm here. Nitro's been dropped. The flash is there as well as Victor looking for more. एक यूट्यूबर था सागर, टेक्निकल सागर नाम के, ठीक है? उसने कुछ बोल दिया था इस फ्री फायर के बारे में, पूरा कंट्रोवर्सी वगैरह। ये तो जी बात है तो गंदी। ओ भाई ठीक हो 5 HP। अरे भाई थ्रू द वॉल। इस पर डिस्कॉर्ड पे एक मिनट। डिस्कॉर्ड पे तो हूं। हां मतलब एक मिनट देखो जो दिखा रहा था ना, वो रहा था ना क्लिप। अच्छा। टोटल गेमिंग का छोटा भाई रूटलेस गेमिंग में मैं और वो BG में माइक खेलते हैं
ओ भाई ये बंदा वही एनेक थोड़ा ऊपी निकला। तो जरा बोल ना जरा टोटल गेमिंग को भी। हाँ रीच लगवाओ भाई, टोटल गेमिंग से रेड करवाओ ना। हमारे भी आधे आधे मिलियन नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 1000 चाहिए। want to bring us back to the last round or just a couple rounds before where यार BGMI स्विच करें क्या? फाइल गेमिंग आई लव यू। अरे फाइल गेमिंग तो मैंने देखा बहुत पॉपुलर हो गई है, वो इंस्टा पे सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुई है। तो वो यूट्यूब पे चाहे पॉपुलर ना हो, इंस्टा पे बहुत हुई है। हाँ तूने भेजा क्या? नहीं स्क्रीन शेयर पे दिखा सकता हूँ ना। ओके 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 वॉच स्ट्रीम। El Diablo and हाँ देख रहा हूँ। do things, but also the rest हाँ of can hold their own victory. यार अभी टाइम लगेगा 10 मिनट लोड होने में। For himself, picking up a lot of big frags. We saw कोई Mark नहीं on कोई some नहीं। big roams in the early game of the first half, and देख। it's kind of wild. Yay with 400 and basically 449 on the ACS for the first map, setting a statement. Envy sending a message to 100 Thieves. सिर्फ पहले मैं तो 3 क्लिक्स मस्त पड़े उसका तो मर गया। ये ना ये जो शॉट है ना मैं ऊपर मिनी मैप पे देख रहा हूँ, सामने स्काई आ गई मेरे। हाँ 1 2 और अब ओमन के देख। ओहो अभी ना सोआ हल्का सा शायद था, हल्का सा बचेगा। किसे देखा? आई थिंक वो चक्कू अगर हवा में था ना वो लगता नहीं। हाँ हाँ चक कर गया उसके नीचे। क्या किस्मत है ना। रुक जा मैं स्ट्रीम पे भी दिखाता हूँ, एक सेकंड। हाँ फिर दिखाइए जरा पीछे से। अनिक ब्रो आप भी देखो। मॉर्टल ने बोला था पायल गेमिंग आई लव यू को। मॉर्टल इज वेरी थर्स्टी। नाइस एक तो थोड़ी गार्डियन हार्ड वो है ना, हेवी सप्रेशन वाली है, हेवी पेनिट्रेशन वाली। तो वो भी लग गया। इतना डैमेज करती है वो। तू गन उठाने जा रहा था ना? नहीं नहीं मैं हाँ मतलब ट्राई कर रहा था, बट ये देखना यार ये मेरे को बुरा लग रहा है अभी। ये देख हेड लग जाता था ना, मेरी क्लिप थी यार ये। और वो जो जंपिंग वाला राउंड भी शायद जंपिंग वाला भी ये शायद से। भाई मैं बहुत यूट्यूबर्स को जानता हूँ। नाइस ब्रो कुछ करवाओ ना यार, क्या कहते हैं वो, कुछ वॉच पार्टी करवाओ, कुछ ऐसा टूर्नामेंट करवा दो। ऐसा करो टूर्नामेंट करवा दो वैलोरेंट का, सारे यूट्यूबर्स। हम भी आएंगे ना फिर। टेक्नो गेमर्स का माइनक्राफ्ट सर्वर है, उसका लीडर हूँ तो। अच्छा लीडर है तो लीडर यार। हाँ लीडर ही होगा। लीडर है ट्रेडर ट्रेडर ट्रेडर। देख देख जो तू बोल रहा था ना जंपिंग, ट्राई कर रहा था। देखा दिखी रहे ना? हाँ दिखी तो। वो ऑफ लगा के बैठी थी, मार ही नहीं रही पता है। पर तू उल्टा जंपिंग कर रही है, वाला उल्टा है। मतलब मेरे को ऐसा जंप था देखना उसने। अच्छा 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 देख वापस से शॉट मिस किया। नाइस नाइस। अच्छा तभी तो कह रहा था क्या क्या हो हाँ ये जो इतना टाइम पास किया ना 10 सेकंड, उसको ये था कि सब ये था कि भाई पूरा टाइम पास हो गया इसलिए। तो नहीं जैसे उतना अभी एडिट किया है क्या? मतलब नहीं उतना ही कैसे रिकॉर्ड किया? और ये क्लिप बनाई इसने। मैं तो इस पे किया ना, क्या क्या बोलते हैं Nvidia GeForce पे 2 मिनट का। उसने मेरे को अब का स्पॉन्सर किया था है टेक्नो गेमर ने। तो माइनक्राफ्ट खेला क्या तूने मुन्ना? ना नहीं मैं उसके सर्वर में खेल रहा था तो पार्कोर, इसलिए मेरे को पार्कोर मतलब जंप करते हैं। अच्छा ब्लॉक से ब्लॉक से। अच्छा मेरे को रखा ओके। ओह अबे हाँ माइनक्राफ्ट का, ये गैरीना का गैरीना फ्री फायर, दो चीज़ों का बहुत वो है इंडिया के अंदर क्रेज। और पबजी बीजीएमआई तो है ये। अब धीरे धीरे वैलोरेंट का भी आया था थोड़ा थोड़ा। हाँ ना एक डेथ मैच खेलता है।
डेथ मैच गार्डियन नहीं। हाँ उसको भी लिया ना, तू इधर आजा, मैं इधर पर इनवाइट करता हूँ। क्या गया पूर्ण आ गया इधर। अच्छा आजा। अच्छा 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 डेथ मैच। अरे ब्रो एनिक्स आप भी आ जाओ वैलोरेंट पे, वैलोरेंट तो ओपी गेम है, मजा आता है खेलने में। Match found. मतलब ऐसा स्किल्ड रहता है ना उसके ऊपर, और अगर अच्छे बन जाओ तो भाई ऐसे फॉलोइंग मिलती है, ऐसे व्यूअरशिप मिलती है। भाई एक बंदे की लेवल 1 है, तेरे को लग रहा है बॉट हो सकता है सिर्फ 40 बंदे भरने के लिए। Death match. बंदा ऊपर से गिर के मर गया। मिल्फ लवर 69। हाँ खेल तो मालूम। अरे हाँ मुझे याद है खेलते तो। बॉट नहीं है, एक लेवल वाला। ओके अच्छा मार रहा है क्या? जंप पिक करके क्लासिक मार रहा है। ओह आ जाओ भी, आ जाओ अभी खेलना है। अरे एक सेकंड रुको मेरा सेटअप थोड़ा खराब हो गया। एक सेकंड मेरे को अपना सेटअप ठीक करने दो। दो है उड़ी बाबा, अब ठीक है। मैं रात में नहीं खेलता। अरे खेल लो। Experiment complete. अरे पूर्ण तू था क्या है ये? मतलब पहले पूर्ण जाया ना तो मेरा थोड़ा एम ऐसे वो हो गया है, इजी हो गया। 11 बजे के बाद नहीं खेलते। ओ मम्मा को कोई सीन नहीं क्या? घर वाले डांटते हैं। आई कैन अंडरस्टैंड, कोई नहीं, जैसी जॉब लगेगी ना सब सही हो जाएगा। हाँ ऐसे भागेगा तो यही होगा। भागने रहता है, हील ले रहा था। अब भाग कर हील ले रहा था। कम ऑन, नीचे की जूत कम ऑन, बॉडी शॉट लगता है नहीं तो वो भी थ्रू द वॉल। 12 बजे तक का खेलता हूँ सिर्फ। ओके यू भी बहुत दूर है मेरा, मैं सिर्फ ओके हाँ अभी तो जॉब वॉब बहुत दूर रहेगा। आई नो। कितने साल का है एनिक्स? 13 का है। फिर तो बराबर है। वही तो टाइम लगेगा। लार ओपी क्या हो गया? अरे मिल गई थी हेल्थ। Experiment complete. पूर्ण ने मार दिया तेरे को? पहला किल दिया मैंने इसको भाई, मैं बोला 0 किल अच्छा नहीं लग रहा आपको। किधर क्लासिक से मारो। अरे क्लास में मर गया मैं हेडशॉट मार गया। देख वापस मारूंगा, देख 3 2 हेडशॉट खा गया ब्रो। ब्रो लैग हो रहा है क्या?
डेथ मैच में भी स्पॉन कैंपिंग कौन यहाँ स्पॉन पे खेलता है मैं स्पॉन नहीं खेल रहा, विंडो पे खेल रहा हूँ ऐसे कहते हैं। सोवा अच्छा सोवा मिस्टर मिल्फ नंबर 69 ले गया मेरे को। अरे पूर्णज कल टॉक्सिक थे कितना हो रही है भैया आप मेरा 200 सब्सक्राइबर कर दो। मैं कहाँ से कर दूँ ब्रो, मेरे सब्सक्राइबर आपने दिलवाए हैं। अरे यार ये नाइफ हो जाता है यार ये बंदा। अरे मैं जंपिंग लेके ना पीछे आया। मुझे लगा तू होल्ड कर रहा है। बोला नहीं पीछे आ गया। Come on. भाई आप ओपी खेलते हो? I'm trying bro. खेलने वाले भैया। याद करता रहा था मैं। अरे पीछे से यार ये 5 kills remaining. Come on, मिल्फ नंबर 69 ले गया भाई। वो सबका किल चुरा रहा है यार। हाँ। जीतने का ना भाई। कितनी बार नाइट शॉट लिखेगा भाई मेरे को? Come on भाई मैं बैनर चला रहा हूँ ऊपर लेवल पे मिल्फ लेवल को हटा रहा हूँ यार। नहीं जीत पाएगा तू। एक किल है। मैं दे रहा हूँ सबके। ओह माय भाई मैं ओडिन आ गई भाई सामने, मैंने अभी कर दिया। जॉर्ड गेम प्ले थैंक यू यार। मिल्फ लेवल जीत गया यार, पहले शुरू कर देना चाहिए था मेरे को। एक और का टाइम है, एक और का टाइम है मेरे पास। अरे ब्रो आने का अच्छा आप तो चलो रात हो गई, कोई नहीं कल खेलते हैं फिर आने के साथ। एक और का टाइम है अभी शुरू नहीं हुआ। इस बार ही करते हैं मतलब पूरा वैंडल फैंटम जो खेलने के लिए स्पीड रन करते हैं। नहीं गार्डन करते ना। नहीं गार्डन नहीं करना। नहीं मेरे को थोड़ा अब मेरे हाथ खुल गए ना, मेरे को मारने का मन कर रहा है। डोमिनेट करने का मन कर रहा है बस। Match found. आप सम में खेलते हो? SM सम क्या अब रहेगा शायद, क्या बता। शाम में ओ शाम में नहीं शाम में मैं खेलता हूँ बट मैं ऑफ स्ट्रीम खेलता हूँ, वो भी सैटरडे संडे को ही। यार ठीक है यार देखो फिर से। अरे इतना दूर से चाकू लेके भागेगा, मेरे को क्या पता। अरे लेफ्ट में बंदा था मेरे, इससे भी डर रहा था मैं। कौन तो होने दो यार। कंपा क्लास ओह प्रत्युष सिंह। हाँ सही जगह स्पॉन हुआ है। अच्छा स्पॉन हुआ था। ओके कल संडे है, आपके साथ खेलूंगा। ओके ब्रो ऑफ स्ट्रीम। हाँ जी
अगर उसमें बता सकते हो डिस्कॉर्ड पे तो बहुत बढ़िया रहेगा। डिस्कॉर्ड पे मैं मोबाइल में कनेक्टेड रहता हूँ, तो बता दो। यार क्या लैग हो रहा है इसमें, रुक जा मैं अपना कुछ करूँ चेंज। अच्छा ये डिस्कॉर्ड भी तो ऑन है अभी, वही तो पहले पिछली बार डिस्कॉर्ड ऑन नहीं था। Make sure to follow my pack in. आ जाओ फुल ऑन ट्राई हार्ड। Right to the enemy. अब देखना एनेक्स प्रो, आई विल विन दिस I गेम। got yous, okay? लमाओ यार मे बी नॉट। अरे यार पूर्णच ब्रो व्हाट इज दिस? हाँ मैं पीछे से आके ये करने वाला था। ओके आप जीतो मैं दिखता हूँ। ओके ब्रो ओके। यार एक ट्रेन अच्छी खेल रही है। कम ऑन चंपकलाल ले गया। बंदे नहीं दिख रहे इतने भाई, क्या क्या टाइमिंग हो रहा है स्पॉन। वही तो मेरा किल था, वो ओमेन मेरा किल था, देखो पता है। अच्छा कोई नहीं, हेडशॉट तो मैंने मारा। यार क्या उड़ रहा है मेरा। अरे यार मैंने सोचा आगे चला गया। भाई ये क्या लैग हो रही है। 120 पिंग आ रहा है, 120 वो 120 FPS आ रहा है मेरे को। कंसिस्टेंट नहीं है, उड़ रहा है जा रहा है। क्या हगरेले हैं। शैडो के लिए बुरा लग रहा है भाई मेरा ना, उसका मूवमेंट ऐसे कर रहा है, मैं पीक ले रहा हूँ और वो हेड खा रहा है मुझसे। ओए वैसे शुरू हो गया, ओए 100 से शुरू हो गया है, 0-0 चल रहा है। बट खत्म करते हैं ना ये वाला खत्म करते हैं। तो यार क्या हो गया मेरे, मैं डिस्कॉर्ड को मिनिमाइज करके देखता हूँ, उससे तो कुछ फायदा हो। FPS भाई हाँ चलो फैंटम पे आता हूँ, फैंटम ट्राई करते थोड़ा। अरे यार यही सिंह ये ना रेज कर जाएगा सौरभ, वो बस तेरी कर रहा। क्या रहेगा? रेज कर देगा सौरभ। सौरभ शैडो शैडो अच्छा शैडो। ओ शैडो खेल रहे हैं, शैडो ओ शैडो 080 वाला है क्या हमारा? हाँ शैडो केजे पे जो है। ओ वो मेरे से पीक ले नहीं रहे कि ना हेड खा रहा है, मस्ती नहीं कर रहा। No more Viper. अरे यार ऑन प्रत्यय सिंह। अरे पहले राउंड 103 जीतते हुए, ओपी गेम प्ले दिखाते हुए। यार क्या 4 लोग मेरे ऊपर चढ़े बैठे हैं। What the hell? भाई फैंटम ओपी ये तो इसकी तो भाई बंदे लेट आ रहे हैं मेरे से। मेरे को मैं ना डिस्कॉर्ड बंद कर रहा हूँ अभी, थोड़ी देर में ज्वाइन करता हूँ।
Need to be confident. अरे पुणे वापस है ना. 10 kills remaining. Come on. भाई आप गाली दो. मैं शुरू करता मैं बिट रेट करता हूँ 15,000 15 Mbps. मैं गाली देता नहीं. I don't wear that much. ये है फैंटम गेम प्ले. पूर्णा मार देता ना तू मेरे को, मैं तेरे को किल दे रहा था. Five kills remaining. अरे लीथल तू जीत रहा है. अरे मन्ना मैं सुनूंगा 15,000 की भी. यस यस यस. मैं 2K में करता हूँ ना स्ट्रीम, तो उसमें 15,000 चाहिए होता है. One kill remaining. भाई मुन्ना चीटिंग. लड़ रहा हूँ मैं. अब तू सारे से उसको मार देगा वो वाले को और जीत जाएगा. अरे मर गया. चलो 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 दूसरे गेम पे आ जा. अच्छा मुन्ना को तो मेरी आवाज भी नहीं आ रही. आपका राउटर का प्लान कितने MBPS देता है? मेरा देता है 150 MBPS. नहीं खेलने वाला. खेले के बीच बीच में ब्रेक होएगा ना, आके एप्लीकेशन या ऐसे कुछ टाइम पास खेलेगा. और एक बार मैच हो जाएगी ना, उसके बाद खेलेंगे. ठीक है. हाँ तो आ रहे डिस्कॉर्ड तो आ जा. नहीं ठीक है. 2K में क्यों? 2K में क्योंकि मेरा मॉनिटर 2K का है, तो मेरे को बेटर ये रहता है कि मैं 2K के अंदर स्ट्रीम करूं, क्योंकि नहीं तो क्या होगा, मेरे 2K वाले को क्वालिटी को कम करके उसमें लेके आना पड़ेगा 1080p के अंदर. हेलो हेलो. हाँ देखा राउंड. हाँ मैंने सिर्फ लास्ट के 2 किल देखे. क्रैश वही 2 किल. सही जगह पहुंच गया. 49 का ACS क्रैश का. सही है. स्टार्ट के राउंड से बट फिर. हाँ इसका 400 था ये का एक बारी तो. Really to recall back on the first map how they've just been able to dismantle what 100 Thieves have shown. 2K में कोई देखता नहीं, सब 1080p में देखते हैं. यस आई नो ब्रो. और ये एक बात है कि तुम देखोगे किसी के भी कोई भी वैलोरेंट स्ट्रीमर उठा लो, जैसे अभी लीथल स्ट्रीम कर रहा है ना, वो 1080p में कर रहा है. उसके स्ट्रीम पे जाके देखो और मेरे स्ट्रीम पे जाके देखो, आपको 1080p में भी क्वालिटी में डिफरेंस दिखाई देगा. बहुत बड़ा डिफरेंस दिखाई देगा. Okay. The combination they bring, just with their synergy from team to team and having comfortability playing together, adds so much. काफी बड़ा डिफरेंस आपको दिखाई देगा, आप एक बार देखना. Now at 2-2, we're all tied up, Doug. अभी स्ट्रीम में देखोगे तो सेम रहेगा. अभी तो लिटिल स्नाइपर नेक्स्ट स्ट्रीम में जाओगे ना तो सेम रहेगा, क्योंकि हम किसी और का गेम स्ट्रीम कर रहे हैं. बट अगर आप थोड़ा 10 सेकंड या मतलब 5 मिनट पहले पीछे जाओ, जब हम डेथ मैच खेल रहे हैं तब उसका ग्राफिक्स में क्वालिटी में कंपेयर करके देखना एक बार. जमीन आसमान का फर्क पड़ेगा. क्या जमीन आसमान का तो नहीं, मतलब ऐसा लगेगा कि आप मेरी स्ट्रीम में देख रहे हो तो ऐसा लगेगा आप खुद खेल रहे हो, मतलब उतनी वैसी क्वालिटी रहेगी.
That's a hit. वो तू किस पे है? 40 पे हूँ मैं तो. 34, 23. ओह. अरे आसुना मार रहा है क्या? मैं पीछे था, मैंने रिफ्रेश किया, सारे मर गए तब तक. उसने तो ये लिया, लाइक फ्लैंक किया है यहाँ से, मिड टॉप से, लाइक मिड से शायद से, और तो मिले तो अच्छे. Looking for something. Yay! Putting up the turret is so perfect. That's exactly the Cloudburst demise right there. He's got to stay on this same angle. Now, yeah, he'll take it out with the op so he can have a little more freedom. Oh, nice, Yay. Swing with the turret. That allows Yay to isolate both, and then Crashy shows up at just the right time to get another one. Crashy, don't say it again. A 4K for Envy. This guy is nuts. No right. आपका 2K में अच्छा क्वालिटी आता है, बट सब 1080p में देखते हैं तो क्वालिटी इतना अच्छा नहीं आता. नहीं, मैं कह रहा हूँ आप मेरी स्ट्रीम भी 1080p में देखो, और फिर रीथल की स्ट्रीम में आप 1080p में देखो, और मतलब हम दोनों का गेम प्ले, जब हम गेम खेल रहे हो ना, तब उसकी क्वालिटी को कंपेयर करो. Envy is just on another level right now as they gain in game मेरे low, everything low. My brain is so excited about seeing these rounds go back and forth, and this was another one. 1080p में FPS कम जाता है? नहीं. I will say this though, 1080p में FPS कम तो नहीं होता. Of confidence and not of good for 100. आपका हो जाता है क्या? अगर कंप्यूटर थोड़ा स्लो हो तो 1080p भी स्ट्रीम नहीं हो पाता कभी कभार. They got early picks, they established site control, they had the setup that they wanted. So there's value there, right? Like there's optimism there for fans of 100 Thieves. It's a great point, Doug. To keep things tight at least. Oh, Odin ले आया स्टील. A little bit of a shock dart damage. ये सोच के कि दूसरे वाले ओडिन लेके आएंगे. हाँ. Victor was looking for more. Gets popped of charges. Oh, वो बंदा लेके आया था ओडिन. Not able to tag up too much there. Damn, Asuna. Marv falls to Asuna. Online. Coming up big on these rounds with some impact frags. Can they finish it though? Envy has always seemed to retaliate perfectly. Here it comes. Oh, dodging. Look at the main map. The Hunter's Fury comes out. Asuna looking to go hunt Crash. She's fancy footwork. Oh, ये ओडिन का disadvantage है. गन निकलने में टाइम लगता है, क्लिक नहीं हो पाते. Also got Yay wrapping his way around through the attacker side of the map. With Yay. so for FNS and Yay here, an attack on two fronts is 100 Thieves as they try to divide 100 Thieves' attention as the Cosmic Divide. Envy के पास एक राउंड है तो वो कॉन्फिडेंट है. ओह ये ने वो उठा लिए. Odin. How do Envy get past this? They can't spam through Boathouse because of the Cosmic Divide. And there's no. वो ये Odin भी चल रहा है. अच्छा वो सेव का प्लान, उनका ये प्लान है कि बाहर नहीं निकलने देना. And how do those exits start to occur? Alarm bots in. Asuna doesn't even fall. Oh, देखा यही Odin का यही दिक्कत रहती है. Asuna का तुमने jump shot देखा head. Thank you very much. I think वो मिस हो गया. देख पीछे जाके jump shot देख. अभी वो होगा. आपका एक दिन 1080p में 20K में करना हो कि मैं देखूंगा, मजा आएगा. 1080p अरे नहीं 1080p के अंदर आप 10 Mbps से ज़्यादा स्ट्रीम करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता. Too, and I was a little worried with the Cosmic Divine going down so late. Actually इसका नाम Anik है और X तो उसने ऐसे लगा रखा है. अब ये भी नहीं पता Anik को Anik बोलना है, Anik बोलना है, फिर Anik है या फिर क्या है? That I don't know. I like this setup here for 100 Thieves. Ethan's pretty close to having secrets online, so they use the flash. अगर आप 1080p में स्ट्रीम करो ना 10 से ऊपर मत रखना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा. YouTube उसको खराब कर ही देगा. From having seekers. अपने आप इसको कंप्रेस करके वो 10 मिनट लेके आ जाएगा, तो फिर कोई पॉइंट नहीं है. बेफालतू में अपना MB वेस्ट करना, प्रोसेसिंग पावर वेस्ट करना. They do want to lean towards A. Yeah. Slight difference here, as we've alluded to before. Steel this time with the lockdown not working. 1440p का तेरा वो भी है ना, तेरा डिले आ जाता है, फिर तू डिले हटाने का. हाँ ये बात है. 1440p के अंदर हल्का सा लो लेटेंसी पे नहीं कर सकते. आपको अल्ट्रा पे नहीं कर सकते. हाँ लो करना पड़ता है. नहीं वो बस 4K में होता है ना. हाँ नहीं 1440 में भी 2K में भी. Marv pushed off the site. One player was detained. Marv not able to make that Marshall sing this time around. Yay certainly is, at least for now. मरेगा? He's got 10 HP and Crashies has a sheriff. A 2v3 in favor of 100 Thieves. 30 seconds left. भाई वो अभी वो स्पैम कर. Oh my god, Crashies! In the shot.
Those are the easiest ones where they're not moving. But Ye hits that. Yay. Yay able to catch the second. Yay. Yay Looking for the been fourth on the tens of- round. Nitro gives him a Oh, haircut. NT. But Nitro stops that it was a good as he round. cleans up Ye. Good 100 try Thieves by take Ye. the हाँ lead. Little आप जो scary खुशी there, but बुला yes, सकते हो 100 ना Thieves take it. अच्छा खुशी से They are अच्छा taking अच्छा a lot of damage on these rounds, though, and Annex he is Annex not letting छोटू them go गोभी quietly with these जो भी wins. So, coming through strong. Not Gobi, Again, Joby. 100 Thieves pick up another round, Gobi. showing us a bit Gobi. more pace to what they're doing. Chotu But Gobi. these moments almost need to be cleaned up to make sure that they can carry the weapons and utility they need into next round. 10 को चैट Envy के will लिए क्या punish यूज any कर रहे थे? mistakes right now. चैट लेफ्ट में आ रही है ना वो यूट्यूब के में जो चैट है ना उसको पॉप आउट कर दो ठीक है उसको पॉप आउट कर दो और उसका URL आएगा ऊपर वो कॉपी कर दो ठीक है फिर ब्राउज़र उससे OBS में जाओ या अगर स्ट्रीमलैब्स है तो उसमें जाओ और ब्राउज़र सोर्स डालो ब्राउज़र सोर्स में वो URL मांगेगा तो वो URL वहीं पर कॉपी जो किया था वो पेस्ट कर दो And for Envy, you उससे वो got a चैट message यहाँ पर आ from जाएगा Alarm Bot. बट उसमें Also just saw हाँ an Astral Star चैट जहाँ पे आ रहा होगा ना उसके टॉप राइट में 3 डॉट होंगे pressure's coming from. पॉपर Ye ठीक है ठीक है confirms their suspicion. But बड़ी हर रोज करना पड़ता है हर रोज हर स्ट्रीम के बाद मैं पिछले 260 दिनों से कर रहा हूँ keep them alive. नहीं वो ये यूज कर सकते हो ना स्ट्रीम Jostico स्ट्रीम now एलिमेंट्स का कुछ है 3v1. हाँ स्ट्रीम लैब्स के अंदर अगर चैट है तो वो यूज कर सकते हो वो इजी रहता है He's got to be able to नहीं स्ट्रीम isolate some of these एलिमेंट्स So में Indo है gathered. मतलब वो वेबसाइट से Gunfight होता है isolated, but not able to land the हाँ shots. Victor हाँ cleans वो भी that कर up. सकते हैं Tied up at 4. Neither team. वो भी कर सकते हैं वही मैं आज नूब गेमर से ही पूछ रहा था कि कौन सी वाली चैट अच्छी दिख रही है मतलब ये वाली है मैंने 4 तरीके की चैट दिखाई है उसको मैं भी अभी अगर मेरे स्ट्रीम पे आएगा तो मैं दिखा सकता हूँ ओके तो एनिक आप भी बताओ ये वाली भी एक चैट है ठीक है जो भी साइड में है ये वाली भी चैट है तो कौन सी वाली भी आपको बेटर लग रही है अगर ये यहाँ पर हो तो कैसी रहेगी बहुत डिफरेंट टाइप्स की चैट्स हैं ये ग्रीन वाला है हाँ ये ग्रीन है थोड़ा सा इजी है मतलब देखना इसको हाँ वो वाला थोड़ा उसके अंदर ना फोटो आती है सबसे अच्छी बात ये है और वो मैं इसलिए प्रेफर करता हूँ क्योंकि मैं ना फोटो बढ़िया लगती है Kneecap gets a second. Do you get away with doing that a third time? वो भी चेंज कर सकते हो भाई ये Ye rips him down from the sky, हाँ, वो 17 health, full health but भी he हो जाएगा manages to get away with his life. Presumably going to get healed up here in just a moment and keep that op in tow. So they actually did the safety heal. पूरा लेफ्ट में कर दो हाँ वो तो एडजस्टमेंट मैं ले लूँगा मैं बस ये बता रहा था कि दूसरे वाली चैट के कंपैरिजन में कैसी है वो Now moving up, Cat Dog. He was in a great spot, but the flash was there. Nitro swings out, cleans that up. अच्छा हम गेम के बाद में देखते हैं With the gravity wall again, माउंट able इज to लाइक get two. The Seeker's coming करेक्ट through. Way. Marved. He's down on the side by himself, a 3v2 in favor of 100 Thieves. And he plays his life. He pulls back to add more pressure to the situation. Apologies, it's Envy who have the 3v2 working for them. See the door going down in the hands of Yep. Hiko. The op shot from Ye once again rings true. Hiko's got everything in front of him. His hands were full. Marv gets 3. Envy take the lead. चैट सही है ओपी है Continue to flip it. ठीक है ये अब मैं ना अब वापस ऑन करता हूँ अब कंपैरिजन हो सकता है ठीक है Back up again. ये वाला है अब History बताओ repeating itself again for these teams meeting each कौन other. सा अच्छा है They butt heads on ascent. मैं तो कहूँगा उसके अंदर फोटो आ रही है नाम बढ़िया सा लिखा हुआ आ रहा है इसलिए लेफ्ट वाला मेरे को बढ़िया लगा ऊपर वाला जो राइट वाला है वो स्ट्रीमलैब्स की तरफ से 14-12 Envy. So this one, it looks like it's going to be another one of those overtimes. Who's going to have the लेफ्ट वाला स्ट्रीमलैब्स की तरफ नहीं लेफ्ट वाला वो है जो मैंने बताया था पॉप आउट करके और राइट वाला स्ट्रीमलैब्स वाला तो पॉप आउट ही अच्छा है पॉप आउट वाला अच्छा लगा था तभी तो मैं वो यूज कर रहा I was going to say they may need more than grit this time around. भाई डीमन है भाई यार ये बंदा कितने लोग लगेंगे इसके ऊपर The early op shot to clean up. Nitro steals just down to 19 Bye. as well, and now Asuna has fallen. तू ये सोच कि ये जो है ना वो रिसेंट एडिशन था इनकी टीम में 100 Thieves की टीम में These are important rounds for Envy to win, right? Like because जैसे 10 आया था ना वैसे ही यार बंदा आया था it's moments like this in a tight हाँ match where ये पहले नहीं था 100 Thieves में sideways momentum flips the other way and all of a sudden the तो map ये is की बात कर रहा हाँ ये की बात कर रहा हूँ जैसे 10 सेंटिनल्स में आया था ना वैसे ही ये आया था short the importance of them तो 100 Thieves छोड़ दिया फिर उसने as Ethan drops.
नहीं 100 थीव्स के अंदर आया था वो पहले वो किसी और ऑर्ग में था ये। अरे जैसे 10 हाँ जो 10 सेंटिनल्स में गया था ना वो छोड़ के Cloud9 को छोड़ के ये किसी और ऑर्गेनाइजेशन में था और वो फिर 100 थीव्स में आया था और वो भी मतलब नहीं 100 थीव्स में तो है अभी। मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये कहते हैं लोग कि ये का एडिशन 10 से के एडिशन से ज़्यादा बेटर था और 100 थीव्स नहीं फॉर एनी प्लेयर एनी लाइक ओवरऑल इन द होल VCT। हाँ वो ठीक है बट मेरे को ये बात बता तू अभी मेरे को बोल रहा है कि फॉर वो 100 थीव्स में ये हाँ 100 थीव्स में है ना ये क्या बोल रहा है पता नहीं है। अरे हाँ उसमें है एनवी में अरे लॉल अच्छा ठीक है माय बैड ओके कोई नहीं हाँ ठीक है। एनवी के लिए सबसे बेस्ट एडिशन था मतलब एनवी के लिए पूरे वो कह रहे हैं कि वैलोरेंट का पूरा जो सीन है ना प्रो सीन है उसके अंदर 100 थीव्स का वो ये का एडिशन एनवी के अंदर वाज द बिगेस्ट एडिशन इन द हिस्ट्री ऑफ वैलोरेंट। इतना वैल्यू आज तक कभी किसी बंदे ने एक पर्टिकुलर एक अकेले बंदे ने कभी प्रोवाइड नहीं किया। ये नाइट्रो को खेल देगा हाँ वही तो स्पैम उल्टा स्पैम भाई तूने ना मेरा ऐसे 2 सेकंड के लिए ना दिमाग खराब कर देता है बंद कर दिया था ऐसा लग रहा है क्या बोल रहा है इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहा है हमें 100 थीव्स तो बोलते हैं हाँ 100 थीव्स ये अचानक बोल रहा है कि भाई गुड नाइट सोने जा रहा हूँ। ओके गुड नाइट ब्रो गुड नाइट गुड बाय। अरे मैं खुद ही थोड़ा सा ऐसा हो गया था यार डिसोरिएंट पता नहीं वही पता नहीं मेरे नाम पे 100 थीव्स क्यों चढ़ा हुआ है। मेरे को नाम एनवी याद ही नहीं आ रहा था। एनवी है और इतना मजे में बोल रहे हैं क्या बोल रहा है मैं एक सेकंड के लिए कंफ्यूज हो गया कि क्या बोल रहा है। हाँ अगर मेरे से कोई ये कहता मैं सोचता अरे मतलब ये अभी इसके लिए खेल रहा है एनवी के लिए खेल रहा है और कल ज्वाइन कर लेगा उसको 100 थीव्स को। वो बात ही हो गई मैं 4 नाम आ गए ना बीच में 10s भी आ गया और वो भी आ गया सेंटिनल्स भी आ गया क्योंकि डाउट था कि सेंटिनल्स पहले जीत नहीं रही थी मतलब जीत रही थी इतनी ज्यादा नहीं जीत रही थी बट जैसे 10s आया तो पूरी की पूरी जीतने लग गए। तो क्या इसका एडिशन ज़्यादा अच्छा था या फिर एनवी का ये और एनवी का एडिशन ज़्यादा अच्छा था? तो सब यही कहते हैं ये का ज़्यादा बेटर है क्योंकि ये तो सोच ये टीम बॉटम टियर थी बॉटम मतलब लास्ट के 3-4 और क्या खेले भाई ये। लव यू भैया लव यू ब्रो लव यू बाय गुड नाइट। सो जाओ कल मिलते हैं कल खेलते हैं वालों। And this may be fast. They just popped the star in mid on the archway, which means they know nobody's going to hopefully push through that. Lockdown's going to start right now. Nightbot.dev पे चले जा मतलब गूगल पे नाइटबॉट लिखते हैं इजी। मेरे को लगता है बंदा मरेगा क्या टाइम पे 19 18 17 FNS close. I think ये कि 5 डेथ भी नहीं हुए होंगे 5 तो थे पहले हो गए थे। I think 10 भी नहीं हुए होंगे। ये भाई जीतने के लिए आया ये मतलब पीको भी जीतने के लिए आया भाई। You see the patience, they're not allowing him those triple B they're not really giving him a chance. They're going to make you swing around. And guess what? You see 3 members of Envy on the other side. A 7-5 half for them defensively. Tap दबाओ भाई tap दबाओ। They put up relative to what we saw even. Oh no, it's ठीक है। More confidence in the opening shot. 14-328 का ACS। They're doing a hell of a job here. Victor इसमें थोड़ा सो रहा है 4-8। We're going to throw it down to the desk. An excellent start from Ye again, but Dash, do you think he can keep it up?
Well, I don't know about whether or not I think he can do it, but I'm definitely curious about whether or not Bala and Kukuka think he can do it. Envy closing it out in 75. Deathmatch करते हैं custom. Right edge here on ascent. हाँ. Better look, I'd say, at वो least कभी भी quit कर सकते हैं ना. Exactly, and as you were mentioning, they also started on the attack, so that gives me a little hope. They also got the pistol round in this instance, and it's what I mean. Like, I don't really think that they have as an option. Yeah, for me, कौन सा I Ascent? just feel like हाँ Ascent लगा दे. felt much better there, but I'm not sure if it was because Deathmatch करना Deathmatch का लगाते normal वो वाला करना है चल Deathmatch लगा. slowing down a little bit because I definitely felt a lot of that. However, I will say their attack side of Haven was the one that really kept that momentum going. Their defensive side, it kind of started to feel like wasn't necessarily as well thought out or as well executed. So I'm feeling a bit on the fence. I don't really know which way this is going to go, but I feel Coolness bro, pick कर लो bro, बढ़िया. Yeah, I wanted to say that the defense feels so well structured by MB, and the attack as well. Like we saw very nicely plans executes onto B with the cosmic divide, the long support event, but the usage of ability from both teams was just perfect, and MB knew exactly what he was going to go against. I will say this, 14 kills for Ye, still top of the boards for his squad. That's no 20 like we had in Haven. And one sorry. of the right. Yeah. So come on. Deathmatch. No, the Warm point up. is gonna make that is how we have talked about him needing to be contained. Guardian. So the fact Guardian that के लिए. he's down to only 14 kills, I do take as a positive sign. A little bit more is going to have to happen though from 100 Thieves. Another fight? Clean slate. Yeah, but Let's leave whatever happens in the past. Fight. He's at I 4 got kills yous, right now okay? in the first half, and that was a factor to why they started off very strong on Haven. Now, maybe you see Austin, maybe you see Nitro starting to step up. I think a lot of the other side is also lagging behind. Yeah, I think both Ethan and Victor are not having their best halves, but I because he had a great thing today. He was having a great first map, and I feel like हाँ बोनस ले गया. मैंने कितना डैमेज दिया था? 26. स्मैश शुरू हो गया. इतना जल्दी जादू क्यों हो गया? अरे छोटा वाला तो था मतलब पूरे उधर ना था. ये जा रहे हैं बी मेन से नहीं ए मेन से. ए मेन घुस चुके हैं. एसेंट है मैप. ओह पूर्णस का हेडशॉट. अनप्लांट करने नहीं दे रहे वो. स्विफ्ट कर दिया नाइट्रो ने. The spike goes down as well at the hands of Victor. Numbers advantage in favor of Envy. They're going to go ahead and invest in Trailblazer as well to clear out this site. 100 Thieves, they have numbers. They're starting to show up. All going to be coming from heaven. Exactly. Steel rotating over. It looks like he's going to follow as well. So if you can apply a bit of pressure. Great flash. Door's closed. बोलने रहे तो. हाँ मैं मैच देख रहा हूँ ऊपर दूसरे स्क्रीन पे. बात तो कर ही सकता हूँ. एनवी मैं बता सकता हूँ तेरे को क्या हो रहा है. हाँ नहीं भी पता तो चलेगा, देख ही लोगा. Come on. Cheating. Yeah, 130 to set up for the retake, right? Like 100 Thieves, they're so good at that. That's been their call. अरे भाई पूर्णस तो राइट क्लिक करके चल रहा है. राइट क्लिक तब क्या? अरे यार फिर से 130 यार ये मतलब. Taken out. 29 क्या डैमेज your mouse. You really don't have to do too much else there. Steel looking to get a few kills, maybe pick up a Spectre, get a few more, but he'll be finding. ये क्या वॉल के थ्रू भी होता है? हाँ.
Look at that. मैं जानू से और ट्राई कर रहा हूँ. Enough. सेकंड राउंड भी एनवी जीती. पहला वाला 100 Thieves नहीं, पहले वाला हाँ मुझे याद नहीं. मैंने क्या बोला था? पहले वाला कौन जीता था? Stage 3, they could have come out even higher. And here, Peripherals, the 7th seed of an 100 Thieves, 9-5. Remember, these have always been incredible. यार मेरा लैग हो गया. मैंने गोली चलाई. को मारा था क्या इससे पहले भी? हाँ. हेड मारा था क्या? हेड नहीं. बॉडी शॉट था. फुल करके आ जाता है. फिर से 130. अबे यार ये 130 क्या है? 3v3. हाँ. शेरिफ यूज करना क्या? बात तो एक ही पड़ती है. It gave Marv such a positioning to be able to watch there. No, nobody was going to. Come on. Said no calming all of that out, and his movement, his positioning as well. Oh, that kill from. अरे वो दीवार है क्यों? जब गोलियां नहीं रुकती. बॉक्स के पीछे इस वाले जब मैं जा रहा था वो बॉक्स के पीछे बैठ गया जाके. भाई मेरे को जंपिंग में मार दिया इसने. हाँ दोनों हेडशॉट थे. पहला वाला भी सेकंड वाला भी. अरे मेरा किल था यार. हाँ. Looking to land the shots on Hugo, and they are just not missing. अरे यार. Finding the headshots on 100. Come on. Kill a few as they go hunting for him. And low था ना तो. हाँ. And shot. One of the orbs that they can almost freely bring into that next round possibly, and a flawless prime gaming round for MV to come in as Thieves were back. अरे हेड पड़ा तेरा. हेड पड़ा उसको. I suck. And it still hits. One dead. Where you're walking in to the aim of your opponent, but it's happened so consistently. Envy is putting themselves in these positions as well. You can't say they aren't. 100 Thieves calling a timeout. We've talked about their mental. We've talked about their grit. We've talked about टाइम आउट करती है 100 Thieves ने तब. times and they come back. But is this it? You want to call on the greatest philosopher of our time, Marshawn Lynch. कौन सा बॉक्स के पीछे बैठा है? अब बॉक्स को ट्रस्ट नहीं कर सकता यार. कितने बार हुआ था? 2-3 बार हुआ था ऐसा. And this is what we've expected out of 100 Thieves. They're trying to absorb. Yeah, it's they punch back, and I think that's lacked out of 100 Thieves. The series is where's the counter? We really aren't seeing kind of the setups. They would say, hey, Austin, finished. Up and play off this smoke. I'll drop it as Astra, and you hit it. We aren't. A lot of it is because it has to be in response to Envy. How fast they're playing. The stars might be set up, but they're clear. Reset and go back forward. Hey, right click on the नहीं shots. 1 minute remaining. हाँ वही तो. 10 kills remaining. Along with utility from Steel over onto B. तू पहले राइट क्लिक करके मार रहा था. मैं वही थोड़ा. सारे लेफ्ट में.
डेप तो सारे ही होते हैं विदाउट राइट पूर्ण से मारता है राइट क्लिक के साथ तो उसकी मुंडी दिखाई देती है टेढ़ी बड़ी रहती है हमेशा 30 seconds left. ओए पीछे था तो चालू कर दिया तूने पता नहीं किधर है बस मारना चालू कर दिया He actually gets hit and concussed a bit there with the nearsightedness. It's going to be the B hit for Envy on this, and they have already flushed. 10 seconds left. राइट क्लिक कर नहीं किया तो एम ही नहीं हाँ वो बात भी नहीं ऐसी बात नहीं है वो हमें उल्टा आदत है क्योंकि हम वो गन खेलते हैं ना कैंडल एरीज टाइप आजा 11-5 हो रहा है दिस इज डू और डाई हाँ 11-5 इतना कहाँ से हो गई तो भाई कोई नया गेम थोड़ी ना था 30 सेकंड्स का तो टाइम आउट होता है फिर भी अच्छा तो जीते रह गए ओ एनवी 12-15 map point As soon as that guiding light came in and identified too easy or what was happening, Victor flashed back. Just saw Ethan. एक सेकंड रिफ्रेश करता हूँ The entrance couldn't have been had. The timing. Envy is retaliating with everything in their utility has been. मैं हूँ रिप्ले चल रहा है अभी तो the medicine that Hiko was able to clutch with previously here at Masters Berlin. What a shot. Replay 3, 2, 1, 0. Just getting those few shots, assessing the situation perfectly from the side of Envy. Game point, Doug, for Envy. Asuna with the blade storm. Yeah, and as soon like the Trailblazer got cleared out, understood. Well, we may need to back this thing up. The flash came out, but he was already in a decent spot for Asuna to get away with it. FNS का ये flank भाई. Blade storm as well. किसी ने देख नहीं रहा कोई एबिलिटी भी नहीं है जो देख पाएगी इसको लगेगा उसने ये किया है क्लियर बट देन नहीं खत्म जरूरी नहीं है अभी बंदे रोटेट करेंगे जैसे एस्ट्रा रोटेट करेगी ना वो उसी के लिए होल्ड कर रहा है It sometimes becomes scary to see a team like that, like Gambit and what they अब तो हीको मरेगा देख बहुत बड़ा नुकसान होगा नहीं आई थिंक पता है इसको हीको को पता है कि कोई बंदा ना अभी पता है कि लोग मिडी हाँ वही तो वो लेट हो गया मतलब उसने वो नहीं किया तो लगता है कमबैक होगा नहीं ये नेक्स्ट राउंड में हार रहे हैं 100% आ रहे हैं नेक्स्ट में क्योंकि अगर वो FNS आगे चले जाता तो गेम खत्म थी यहीं पर Ethan, Nitro react with that utility instead of use it for their own to shut down Envy and positioning. Already we have no stars placed on that defensive side, and we do have Steel going over to the right. Now they're placed down. We get the gravity wells and smokes as they were considering how that defense might happen, but a complete switch of the script from 100 Thieves now. Steals at A. Holy util stack A. We just saw FNS pick up that ult orb, so now he's got lockdown on using his blade storm. Oh, early aggressive space nice. away from Austin to dial it up. Hit it just where they hurt at just the right time for 100 Thieves. And that's great. But इनको अभी भी नहीं पता कि बंदे रोटेट कर रहे हैं या फिर still A जा रहे हैं. Towards mid. All right, let's push someone out and take the space in B right away. We have more intel. We know how well 100 Thieves worked off just a little bit of intel of what Steel can deliver. Nice dodge by Asuna. Asuna having to dash back. He is going hunting. He's following up. He's got the blade storm, not able to land anything yet. You hear the 100 series coming out to try to exactly what it does. Ye not able to land the shot with the op. Everything erupted. And everything slows down. And this is being able to attack back for 100 Thieves. Will they be able to hit it again? That's going to be the mollies in the gravity well. Just sitting Victor on his tippy toes.
40 seconds left. Nice shot. Nitro. Good for Nitro. Nitro's good for 3. Nitro good for 4. A Prime Gaming flawless for 100 Thieves. Shake it out. अगर असुना Just shake aggressive those खेलता hands था तो out, नहीं Nitro. catch नहीं Oh, लूज my word. What a round from him. 21 and 12 coming from the controller position. उसने like Absolutely stellar केजे showing ना last few days. उसने मतलब shield buy नहीं किया था वो 33 पे भी लास्ट में मतलब ये in न्यू the राउंड back half of this map, but is it a little too little? वो भी too देख late? 33 पे ही है What a बाई fantastic करेगा तो round अलग from him. बात अब यहाँ पे बाई कर लिया देख 1600 माइनस वन अरे तू आगे कैसे है तू रिफ्रेश मारे एक बारी मैं 2 पे 0 139 37 ओके ठीक है अब मैंने फिर से उसका बटन दबाया एंड ओह आसुना Exactly. That's what they need. Those are the frags you see Ye picking up 2-3 Marshall kills. Not this time. Sat right back down to the start of this 20th round with the operator from Asuna, which we've been waiting to see. The detriment in money, or the economy for that rather, hasn't allowed nice this. Asuna. But now Asuna coming online a little bit here with the strength of his operator. Coming online a little bit बोलते Beautiful. Nitro. Who else you've got? It's Nitro. Continuing to do it. The man has been on another level, seemingly flawless for 100 Thieves. And there's little bits of an advantage too in having that in those experienced players. Seeing Nitro pop off, there's confidence behind that for everybody, right? It gets everybody going. Having Nitro do this, being one of those callers, one of those leaders, definitely brings 100 Thieves to another level. खत्म करेंगे भी ये लोग हाँ वही तो कह रहा हूँ अगले से अगले में तो ये हो गया ना ये वाला राउंड अभी बाय राउंड है Things look real good for Envy. यही खत्म होएगा आई थिंक टाइम आउट ज़्यादा बड़ा होता है हम जो 50-50 वाला ब्रेक लिया ना हमने 7-5 वाला जो ब्रेक होता है वो वाला साइड स्विच वाला वो छोटा रहता है टाइम आउट से टाइम आउट 1.5 का होता है टाइम आउट अच्छा टाइम पे लोगों ने लाइक टाइम आउट लिया एनवी वालों ने क्योंकि उनको पता है लाइक 100 Thieves को कॉन्फिडेंट देना नहीं है लोग कॉन्फिडेंस हाँ और यही वो है टाइम है एक्चुअली मैं देखो बोल रहा हूँ अगर ये मैच अगर 100 Thieves ने निकला 100 Thieves क्वालीफाई हो रही है पक्का हाँ पक्का अगर ये वाली मैच लोग ये वाला मैप जीतते हैं ना हाँ मैं देखो 110% बोलता हूँ अगला गेम 100 Thieves There's something a little extra there that 100 Thieves are able to reach into. The fans love it too. But they still have so much to go. They have their work cut out क्या for them. टाइम They're पे still down 12-11 considerable amount here facing elimination in this second map. यहाँ से कौन सा डार्ट है to put 100 Thieves away. Look at that. अगर आपको B रहना है तो A का डार्ट 3 is the max rounds. Or sorry, that's on the other side, but 3 every time Envy wins, they'll grab another one. So this could be 100 Thieves on a very difficult round just based on momentum. Envy back with what the hell is the start? That should be bigger than 30 meters. 30 meters is the sonar detection, so he's good to go. And Nitro's safe to stay. Asuna again playing this tight angle with the op. We saw him in the previous round find success with that setup. And Envy haven't challenged it yet, but they're flirting with it. They're thinking about it. The drone, that should be the cue for Asuna if he swings. Oh, the star. But it gets recalled. Nice. Asuna again lands a big shot Great for opener. 100 Thieves. Again, just trying to read how Oh, Envy स्टील moves दूसरा up एंगल this. होल्ड कर रहा है 100 Thieves. पर इसका लाम मोड है Good बोलेगा positionings. A slight bit of rotation over here out of Hiko so he can get his utility to the site fast, and you can नहीं see लाम मोड नहीं as वो well from Okay. Asuna. The steal's got to be calling what he's सारे आ गए hearing. भाई हाँ They're gonna flip A it. entry They're gonna A flip the main split. Look at how far up Up Crashies to is. Ethan. अभी Envy got ईथन बोल रहा है कि control, आ जाओ figured भाई things out, but Asuna's rotating with enough कैसे छोड़ time के to चले गए secure मिड those as well. Right now, Envy have their choice, right? They can go wherever they want because they have the same position taken Nice, away Ethan. on either side. Crashies drops. That's the cue for them to go away. Ye gets the opener onto Steel. They're going to work their way into Tree Room, and it's Nitro. Again, tournament on his back, looking to keep things alive. No, he drops. Victor gets one. He's going to get the spike down as नहीं well. actually bad 6 pick seconds था वो left. Ye and Marv looking to cut off the rotations. Oh my Marv God. last one. GG. It's all just down to Ethan. Envy in a 3v1. The Seekers are going to come out as well. Ethan, what do you do? Where's the magic? नाइट्रो को लेकर हूँ मैं नाइट्रो तो सर to तक लिया make this happen.
as the spike continues to tick away. भाई काइडे को 2 लगातार दिन में 2 लॉस They're good for one. लग रहा है. So much ahead of him. The time is not his friend. 100 Thieves down. Ethan on the flash. Not able to find anything at first. Spike continuing to tick. Ethan's gonna have to go. He's gonna have to go fast, but he has to check every single corner. Ethan on the tap. The gravity well is there. He understands where Marv is, but is he gonna have the time? You're gonna have to hold it and no, it's not gonna happen. They say art is eternal, and they just put their own Mona Lisa together on the way to the grand finals. And locking अब तो ऐसा लग रहा है एनवी जीतेगी championship, taking down 100 Thieves in fantastic fashion. Another 13-8 between these two teams. They have always had close games coming out of the North American region. Envy versus Defo. Yay versus Defo. One Diablo versus another Diablo. Yay. Really coming together in a short amount of time. The synergy Envy is showing us now to battle up against Gambit in the grand final. Woo! And you talk about clashes of style. Oh, baby. Right? Like Gambit, we're going to be slow, we're going to wait, we're going to feel things out. And Envy, they're just going to go. Baby, they're going What's slow? Envy, I'm sorry, what's slow? Look, That's the first thing you can tell, Okay. you can tell about that team is they don't know what slow is. 100 Thieves having glimmers there, and again, in my opinion, it comes down to aim. अभी तो रैंक कुछ चालू भी नहीं किया. Being on today. I mean, we रुक जा मेरे दोस्त को भी बुलाता हूँ. आजा यार ये लोग ना. अरे खेलना है क्या? आजा जल्दी आ. ये लोग दोनों मस्त बच्चे हैं, मजा आएगा. आयरन वाले हैं. आजा मारेंगे. अरे आयरन वाले तो अच्छा फिर मैं बंद कर रहा हूँ सब कुछ फिर बैक का एंड Valorant कूदना चाह रहे? हाँ 2 मिनट ना, अगर वो लोग आ रहे हैं, 2 लोग हैं. ओके मैंने इनवाइट भेज के रखा है. घर सुनना, वो 2 जने पूर्णज, हाँ एक पूर्णज करके वो जैसे ज्वाइन करेगा ना तो चालू कर दे. मैं जरा फ्रेश हो गया. ठीक है. अरे वो तो लेके जाओ. अच्छा चल जल्दी चालू कर. मैं डिस्कॉर्ड वो लीव कर रहा हूँ ब्रो. हाँ मैं भी लीव कर रहा हूँ. इतना सन्नाटा क्यों है? हेलो हाँ बोलो. हाँ मैं अरे यार अभी टाइम लगेगा मेरे को, ऐसा लग रहा है मैच मिलने में. जाओ फिर आओ खड़ी. इतना सन्नाटा क्यों है गाइस? थोड़ी गानी वानी बजाया जाए. Okay. अरे पूर्णेश को क्या हो गया? आई थिंक नेट का इशू है. कर ले, लगा ले, कोई नहीं. लगा ले. हाँ Match found. Match found.
अरे अरे तेरे मैसेज लेट आया पूर्णज। ठीक है मैं डॉज कर रहा हूँ, कोई नहीं। अच्छा मैं डॉज कर रहा हूँ और वो पूर्णज का मैसेज आया मेरे को, उसको आ रहे वो 1 सेकंड के अंदर। आई थिंक नेट का कोई इशू होगा। मैं कोई भी कैरेक्टर ले रहा हूँ जो मेरे को नहीं आता। हाँ ले लो। कोई नहीं ब्रो, मैं डॉज कर रहा हूँ। मुझे लगा रात हो गई है ना, तो हो सकता है तू सोने चला गया और ऑल्ट F4 करके चला गया। हुआ है ना मेरे साथ पहले, इसलिए मैंने। और अगर इंटरनेट या लाइट जाती है ना तो पता नहीं चलता मतलब कितनी देर लगेगी लाइट आने में। यार हमको डॉज करना है। टीपी कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं। नो आई डोंट स्लीप स्लो अर्ली। ओ हाँ नहीं हम वो कर रहे हैं, डॉज कर रहे हैं। पूरन क्या नाम है वो आ रहा है। पूर्णज सॉरी कोई नहीं। उसने लीव क्यों किया? आई थिंक कोई इशू हो गया होगा। अरे बाइंड आया था यार, फक। अब आएगा फ्रैक्चर नहीं खेलना है। हाँ भाई तो फ्रैक्चर यार। कर दे चालू। बढ़िया बैन नहीं मिला मेरे को। नाइस। ओ पूर्णज पुश टॉक है पूर्णज जरा। अड़स्की पीक पक्का। मैच में भी नहीं जा पा रहा क्या? नो समथिंग विद माइक। एक बार इनपुट चेंज करके देख ले, आवाज कम करके देख ले, ऑन ऑफ करके देख ले, ठीक हो जाता है। होता है मेरे साथ भी होता है वाला। ये पूर्णज हाँ। कई सेकंड अकाउंट है ना आई गेस। ये मेन अकाउंट है। नहीं सेकंड है। ये बंदा डायमंड है। लगी रहा है। कौन डायमंड है? पूर्णज। ये तो सेकंड अकाउंट है इसका। हाँ एनीथिंग एल्स नो। बस माइक टिक कर ले, कम्युनिकेशन इज की। हेलो। बढ़िया हेलो। हाँ हेलो। आर्क डायमंड प्लेयर बोल दिया। हाँ तो मतलब ठीक है, प्लैटिनम है तो डायमंड बोल दिया। प्लैट 3 तक जाते हैं लोग। कोई नहीं तो डायमंड प्लेयर को डायमंड नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? वही तो लॉबीज तो वही है। अभी तो इसी अकाउंट पे सिर्फ 26 लेवल है तेरा। ट्रू फैक्ट्स। क्या करें फिर? यूट्यूब देखें क्या चल रहा है यूट्यूब की दुनिया में? टाइम क्यों ले रहे? तू डायमंड का लेवल हम लोग आयरन। वही तो पे वो यार इतना मत लो बनाओ। क्या आयरन 3 पे अकाउंट में? अरे तो ये तो फिर ये है ना स्मॉक अकाउंट है ना। मैच फाउंड लेकिन लो हो गया। वो हमारे साथ मतलब कैसे खेल सकता है अगर हम गोल्ड के भी हैं? गोल्ड और डायमंड साथ में थोड़ा ना खेल सकते हैं। मैं आगे क्यों आ रहा आप लोग से कौन गया? क्या बता? लैपटॉप ये वैसे भी
हम दोनों लैपटॉप ले रहे हैं, अल्फा और हाँ मैं भी, मैं तो लैपटॉप पे स्ट्रीम कर रहा हूँ 2K में वो भी 2K में वो भी 2K ये वाला जरूरी था ना। मतलब कि लैपटॉप में हो जाता है। कोई रहना नहीं रह रहा ना। डेस्क रहना ले ले प्लीज। क्यों, क्या हो गया? ठीक है कोई नहीं। पुनच जिसमें तो कॉन्फिडेंट है खेलने का वो खेल। चाहे वो तेरा यूरू के ना कैरी करना हाँ हमें बिंदास। हाँ बंदा को सिर्फ स्किन्स देनी है बिंदास। नहीं भाई अरे इसको साइड पे अकेला छोड़ दो ना, ये एक बंदा भी एंटर नहीं होएगा। आई नो। सिलेक्ट कर ले। वो तो नेटवर्क खराब आ रहा था, नहीं तो सेंटिनल्स में यही होता। अरे तू सिलेक्ट करना। अभी देख रेना देव देख कैसे होएगा। ओके अरे मेरा हाँ अरे हमारे टीम का देख तू रेना ऐसा मारेगा ना पकड़ के। 1 2 3 देख वैसे भी न्यू बूस्टेड है, लिखा हुआ इसके नाम के नीचे। हमारा पूर्ण तो चिल है ना। फिर बस जीजीस अभी लिख देता हूँ। It was not pretty. क्या चाहिए? प्लास्टिक दो हाथ में हम बात प्लास्टिक ग्राइंड कर रहे थोड़ा। गोशी कौन सी स्किन है? Gun here. हाँ गोश्त की भी बैटल पास वाली है। कौन सी वाली? वो योरू वाली। हाँ मेरे पास भी है। अब डिस्टरबेंस नहीं आ रहा ना? नहीं बढ़िया। वाह का सेट RIPS। Launch to Sova. फेंकना Standing ahead. Hawk out. Enemy spot. There they are. Blinded. Hawk out. Blinded. Our spike carrier's down. Spike down A. Planted. हाफ विकी का निकाली मैंने। भाई Reloading. Careful now. Reloading. मेरे को मत फेंक मारो जो भी मार रहे। एक लॉन्ग है। Last player standing. One enemy remaining. OP Ooh, that's going in a highlight reel for sure. Phoenix. मैं भी जैसे ऑटोमेटिक कर देता। तू भी ऑटोमेटिक कर दे 10 चाहिए था। नहीं तो आदत खराब हो जाती है मेरी, बोलते रह जाता हूँ मैं। जेट प्रो क्या प्रो? Time to mobilize my pack. मेरी गन हाथ में ही है। I have the spike. Oh shit, मेरा हाथ स्लिप हो गया। कैंपर रे ना कैंपर। मेरा हाथ स्लिप हो गया गलती से। अरे क्या? Spike down A. Last player standing. जिंदा है। Come on clutch. मैं नहीं कर रहा। मन नहीं है अभी। उधर ही थी राइट में, अभी पता नहीं कहाँ गई। ये तो ऊपर से आ सकता है। ओह Night night. One enemy remaining. ये लॉन्ग था। हाँ सी लॉन्ग था ये।
आ गया। अरे तो सीलोंग था वो बूम क्या क्या। May the wind guide your blade. One Spectre. And my arrows. Need a drop. Thanks. वो दियो फैंटम। Need a drop. Thanks. करेगा स्प्रे ट्रांसफर। वो लिखता है मैंने उसको लिखा था नहीं हो रहा क्या तो लिखता है डबल किल विद ऑफ लाइक वो कोलैड मारा तो मैंने लिखा हैकर। Blinded. I have the spike. Hello. I'm back. कहाँ गया ये रेना? Gun here. मेरा भी है। Found one. देखो ही मारना। Piss off. Spike down. C. That's 3. गराज डेड था पीछे दो हैं पीछे दोनों। I got the spike. हाँ चलो आ गया। One enemy remaining. पूरन बोलता है। पूरन। मैं रेना बोल रहा हूँ इसको। रेना बोल रहा हूँ। वो दिख गया तेरे को? मैं रेना बोल रहा हूँ। बोलता है आ गया पूरन। Screw up and they're on us. जो मेरे को वैंडल दो वीवर जो भी है। बीवर तो बीवर। एक मिनट। भाई सही बता रहा हूँ मेरे पास भी आने वाली वीवर। Reloading. Spike ले लूँगा मैं। जब पहली बार मेरे को पता चला ना कि रिवर नाम की कोई गन है मेरे को सबसे पहले पता चला कि रिवर है क्योंकि सारे टीम में भाई रिवर दियो तब मेरे को पता चला अच्छा रिवर नाम की कोई गन आई है। पूरन 70 भाई मैंने भी 60 Last player standing. भाई सोवा का एज कम ऑन। I know exactly where you are. दो नहीं कॉन्फिडेंस है भाई बंदे में। और कुछ इससे बढ़िया कॉन्फिडेंस। अरे वही तो कॉन्फिडेंस होता है जब आप तोड़ो ना उस स्ट्रिप पैर को क्योंकि आप पूरे टाइम दिख रहे होते हो ना। अच्छा दियो मेरे को भी फैंटम दियो। कौन सी चाहिए? फैंटम। Thanks. Need a drop. एक मिनट दे रहा हूँ। Thanks. मेरे को दो मेरे को। के बैकग्राउंड ब्लर कैसे करता है तू चैट का? बैकग्राउंड ब्लर अरे वो CSS डालना पड़ता है इसके लिए। कौन स्ट्रीम कर रहा है? लेफ्ट में I got the spike. Lena 79. Taken out. Seeking out. हील कर गई। Found one. Hawk out. Blinded. Hawk out. Blinded. भाई 78। Spike down B. कहाँ पे? हाँ मिड में है जाना। Enemy spotted A. Scanning ahead. अरे बहुत ऊपर वो डिटेक्ट नहीं करेगा। कर दिया। One enemy remaining. हाँ healing। Come on. वाह। पीछ। GG NT LT LSD. That Sova's gonna put his eye out with all that tech. हाँ मेरे को ये दो ना मार्शल। Need a drop. Thanks. मेरे को वो दियो वैंडल। Need a drop. Thanks. अरे नहीं वैंडल ना? हाँ। Need a drop. Thanks. मेरे को भी शेरिफ। नहीं अब हो गया 3 ही मांग सकता हूँ। अच्छा। मार्शल मांगा फैंटम मांगा और ये मांगा ना।
यहाँ से कोई आएगा, इसलिए ले लो। Reloading. मेरे को हेल्प करने हो ना, रिक्वेस्ट है। जा सोवा रिवील देना। Reloading. सोवा रिवील मांगा था। अरे इधर दीपक कैंप पे, उधर ही है। Finished. अरे रेना आ गई। भाई 10 भाई मैं नहीं खेल रहा यार, दोनों को 120 दिया। One enemy remaining. अरे दिख गया। हाँ ऐसा नूब। यस वाह। बंदा कितनी खुशी। भाई मैंने तो हेडशॉट मारे ना, तूने कंप्लीट ही नहीं मारा उसको। 120 क्या बताऊं, चोर है ये। क्या चोर हेडशॉट्स। और शेरिफ की कौन सी स्किन है? हाँ रिवर ही है, दे दो। वैसे ही वेस्ट कर रहा है, खेलता हूँ टाइम पास कर रहा हूँ उसको। दियो रिवर दियो, वो दियो हेड शरीफ। ना शेरिफ से किल कर दो। हाँ भाई क्यों तो कोई किल। चलो लेट्स गो। Time to hunt. कोई नहीं, सही है। ओ उधर साइफर है, ऊपर ही है। रेना लो है, हील कर दिया। हेड मारा भाई। Found one. मेरे को खेलना ही नहीं है यार ये गेम। 145 मारा मैंने। Last player standing. Spike down A. साइफर लो है। I'm out of stuff. Flawless. क्या ही करूँ चलो कम ऑन 47 किल्स करो। चलो स्पैम करते हैं पे सब घुस जाओ। अरे वो गराज कोई नहीं जा रहा, अगर मुन्ना तेरे को मेरे साथ जाना है तो फिर अगर जीतना है तो मारते रहे, मतलब क्या ही करे। अभी 145 पड़ा यार हेड इसको रेना, और उसने भाई वैंडल से हेड मार। यहाँ पर सोवा रहते, सोवा अच्छा खेल रहा है। Nowhere to run. Time to hunt. कैंपर से Revealing area. भाई क्या कैंपर है? Found them. Reloading. Enemy spotted. Last player standing. Heal. Spike down. I hate to say it, but आई थिंक मेरे को अपने माउस की सेटिंग चेंज करनी ही पड़ेगी। क्या कर रहे हो? क्या? वेक्टर दो। तो कुछ जीतने का? एंड्योरेंस अनरेटेड है। आपके भरोसे पे मैं खेल रहा हूँ। और परफॉर्मेंस मोड 3-1 है चल भाई, अब तो वोट भी नहीं है। enemy spotted A. Hawk out. न्यू प्लेयर होके इतना एग्रेसिव पीक क्यों लेगा? Reloaded. गेम है। बढ़िया। अरे सोवा रिवील करेगा कभी, आज की कल। No, you don't. Someone's A. Huh. Careful now. Spike carriers down. Spike down A. Last player standing. Hawk out. Blinded. Good bird. I got the spike.
अरे यार इतने 2 बंदे थे भाई Wind, show me where to go. बंदे क्या पर जीतना था क्या हो गया कॉम्पी नहीं खेल रहे भाई अनरेटेड खेल रहे फन के लिए वो भी खेलना जीता कर मान जाओ चलो क्या क्यों जीतना है देखो ऐसे ही टाइम पास मन हो रहा है पिछला मैच घटिया गया क्या करना है गाइस हाँ जीतना है मैं तो जीतने के लिए खेलूंगा डाल फ्लैश Reload him. Reloading. Reloading. क्या कर रहे हो चलना मारे हुए टूलिस्ट ऊपर से ऐसे कोई आ रहा है -90 से 2 बंदे मैं अटक गया कहां से आएगा 3 117 दो बेस I know exactly where you are. One enemy remaining. Reloading. Last player standing. फ्लैश राइट Still in sight. जा फ्लैश करके बढ़िया गन उठा ले गन उठा ले उठा बढ़िया एस था यार मेरा एस था और वैंडल Need a drop. Thanks. नहीं मेरा पैंडल ले लो ना मैं फैंटम लूंगा अरे नहीं अब साले तू मेरे को दिला हाँ अरे बड़ी फूडनेस बढ़िया सब क्लास हो गए जेट D2 और जेट D2 नहीं है D2 है अरे आ जाओ यार अल्ट लगा रहा हूँ अरे ही Revealing area. Spike down A. Last player standing. Last round in the half. Don't save anything. Last chance to use our stuff. Reload him. Reload him. Spikes here. Need a drop. We survived. यहाँ से लोग के जंप पिक ले राइट रहा 100 है Reloading. You will not kill my allies. Hawk out. Blinded. Hawk out. Blinded. Time to hunt. Scanning ahead. आप गाड़ियाँ चला रहे हो दो हैं Spike down A. That's 3. One enemy remaining. 100 Switching sides. Clean slate. तो वो उसने मारा Let's leave whatever happened in the past. मैंने नहीं कर सकता था नहीं साइफर और ब्रिम सॉरी मैं साइफर ब्रिम को मारा मैंने सोवा को मारा ओह हाँ क्या हो गया कुछ नहीं हो बात नहीं कर रहा नहीं करते रहो ये आएंगे मेरे को लग रहा है जेट Sky D2 I'm out of stuff. Sky का क्या रैंक है वैसे
out. Blinded. Scanning ahead. There they are. अरे पिछले ले पुनच एंटी दोस्त का पे Last player standing. 85 rim to be. Spike planted. Blocking sight. We move as a unit, okay? Last thing I need is some hero messing things up. करने का क्या जज? जज कर सकते हैं, एक्सपेक्ट नहीं करेंगे वो। बट यार मेरे पास शील्ड नहीं आ रही। मेरे साथ खेल, कहाँ है तू? आजा सी खेलते हैं। तेरे को लगता है ये पुश करेंगे वापस से लो? मुझे लग रहा है, मेरे को लग रहा है मैं यही जा रहा हूँ। अच्छा मेरे पास हील है तो फिर अगर तू लंगड़ा क्या है आवाज तो नहीं आई अब तक। पीक लेना घर। हाँ आ गया नहीं एडमिट को रीटेक करने पड़ेगा। जज पे हाँ वो कोई ऑप्शन ही नहीं है, साइड कंट्रोल उनके पास। Spike planted. One enemy remaining. Heal up, squad. Reloading. बढ़िया। Reloaded. Was that important? हाँ? Act on my intel. यार मैंने स्किन दे रहा। नहीं टाइम पास के लिए खेलते चल। मत जीता इसको, मत जीता। आग करनी है ना बड़ी। अरे तू तो मरता भी नहीं, तू तो फुल था ना। उसने मारा था तेरे को उससे। हमारे पास वॉल नहीं है, किसी को भी देखना पड़ेगा। और सुबह जितना जल्दी अपना एरो फेंक सकते फेंक दे। गराज बी Kingston is तो 130 150 सी पे कोई है क्या घर? रेम ने स्मोक तो किया है। होंगे, मैं स्कल्ट लगा रहा हूँ। आप रेम में Enemy spotted. Spike down. अरे विंडो दो विंडो। 3. One enemy remaining. मेरी अब हाँ मेरी वो पड़ी है, फैंटम ले ली इसने, अल्फा ने। अरे 1v1 मत करो, ये मत जाइयो, घर मत जाइयो। Mid. अरे इधर ही थी। हाँ वही तो, नहीं हो पाएगा। Player standing. तो दीवार उसमें क्या देख रहा था? दीवार में क्या देख रहा था? 30 seconds मेरे left. को पद में पीक लेने जाता, मैं रुका फिर। ओ भाई Spike planted. डांट कर दे, तूने आवाज तो कर दी, उसको पता है कि तू यहाँ पर है। Scanning ahead. वो यहाँ पर आ सकती है भी। हाँ यहाँ पर हो सकती है वो। Let's get these idiots. अंदर अभी तक कर रहा हूँ, कुछ तो कमाल दिखाओ। नहीं अभी ये करता कुछ।
नहीं। यस तो सोवा क्लियर है। अरे बी पे कौन है? बी पे कोई जाओ यार, कोई स्मोक्स नहीं मेरे पास। खेलते हैं। ए पे Hawk out. Look, I'm out of stuff. Spike down A. अरे यार Last इसको player भूल गया मैं standing. कैसे करते हैं। अरे यार साइफर 52 है। दोनों ही पर हैं। हाँ। One enemy remaining. Spike planted. अरे यार नो। आगा as usual। अरे बात करना कम कर और फोकस कर। बढ़िया। Clutch. Oh, you thought you put up a fight? आपके वैसे होंगे ना बस वरना। Stay alive. कर ले Their life, not yours. बहुत इजी ऑफ रहेगा यहाँ पे। ऑफ कर दे चलो लेट्स सी ना स्टॉप। अरे फिनिक्स वो करेगा क्या? बाय करेगा क्या? Help a girl out, would you? Cheers, mate. थैंक यू। और सुन सोवा इधर सोवा यहाँ खड़े हो। Here. अपना ई ना चार्ज कर, अपना ई मतलब कंट्रोल मत दबा, और यहाँ पर जो है ना विंडो है, विंडो के थ्रू मार दे यहाँ पर। इधर ही फेंक दे ब्रो। 4 दिन बाद फेंकेगा क्या? फेंक दे बस ये तेरे को करना है हर राउंड। सारे ए पे हैं गाइस। I know exactly where you are. भाग जा। अभी भी आ रहे हैं, ए शॉट आ रहे हैं और ए लॉन्ग आ रहे हैं। ए लॉन्ग पे रहना। अरे मरेगा कर। Shot down. साइफर आ गया, साइफर आ रहा है। One enemy remaining. Spike down A. The hunt begins. बढ़िया। किसी ने नहीं देखा ना, किसी ने नहीं देखा। These parasites aren't going to take one step past this place. मेरे को भी ऑफ दिलाइयो वरना। Need a drop. Thanks. क्यों कर रहे हो? भाई बहुत इजी रहेगा यार। कोई भी संभाल लो। मैं देख रहा हूँ। Scout destroyed. Hawk out. लेना बहुत अच्छी है। भी आ सकते हैं उस पे। Enemy spotted A. Spike down A. फ्लैश प्लीज। नहीं है। हील दे। One enemy remaining. हील देना। Healing over here. फ्लैश है बस। Hawk out. अंडर में है हिल। Enemy spotted A. वाओ पवन भैया। क्या हो गया? ऑफ कर लो आप। As much as this world hurt, तुम्हारा तो it's mine. हाँ तो बोल रहा हूँ ऑफ करो आप। The Phantom Mandel. Need a drop. Thanks. और नहीं क्या करना है, ऐसे देख, एज जब अपना मुंह दिखाने से पहले
पूरा फुल चार्ज कर लेना है, फिर जस्ट हल्का से लेफ्ट मूव करना है, ए दबाकर उसको और अपने माउस बटन को छोड़ देना है, ठीक है कर। हाँ वो पहली बार खेल रहा है कब? अब ए दबा तो छोड़ दे इसको, छोड़ दे, छोड़ो बाबा वापस आ जा, बढ़िया। टी पे आई गेस। नहीं ए पे कोई बात नहीं क्या मैंने इधर सोवा का डाटा है। Seek them out. Found one. One less. Nice. Found one. क्या लगता है बैक जा रहे क्या लोग? नहीं एक रिनाट की बढ़िया, मर गई मर गई। Hawk out. तुझे मैं फ्लैश करो, दोनों ही बढ़िया। इधर ये दोनों। Hawk out. Blinded. One enemy remaining. नाइस। बढ़िया। ये मेरे को लगता है रोटेट करने वालों में से है। Just let them try to catch. इवन दो अल्टीमेट लगा दिया ना मैं उसका साइफर का, तो भी वो रोटेट नहीं करने वाले। बोनस बाय दे सकते हैं मेरे को, फैंटम खेल ले चाहिए तो। अरे इतने स्टैक मत करो। सुबह तू ये कर। अरे बी नहीं जा रहा है कोई, गराज में नहीं जा रहा। मैं जाता हूँ। अरे बी पे आप जाते नहीं। अरे कोई नहीं जाते नहीं है तो अच्छी बात है, तो वहां से पुश कर सकता है। One dead. भाई छोड़ सोवा। Brimstone down. हाँ एकदम से छोड़ देना होता है, रुकना नहीं होता किसी के लिए। You will not kill my allies. ये विंडो दिया ये भाई, सारे विंडो में ही है बस। 80 है सोवा। Hawk out. काम कर रही है। Blinded. गराज उसके शायद से हो सकता है। Hawk out. गराज। अरे जा तू आगे जा। One enemy remaining. Spike down mid. इसको हील दे दे। वो देखना कहाँ जा रहा है। घर इधर टीसी की तरफ। हील दैट सोवा। दे रिवील दे। 30 seconds उतना left. दूर मत थे। स्पाइक पे आ गई। वो स्पाइक पे आ जा। गराज। बढ़िया। ऑपले पीछे ऑपले इधर है। हाँ। वो बहुत क्यूट था। The MVP is mine. Yeah, phantom. Need a drop. Thanks. मुन्ना मैं कहूँगा तू भी आ जा, ए आ जा, और हम दोनों को ए रहने दो और बाकी तुम समझाओ। अभी लोग सी आएंगे, देख मैं तेरे को देख के देता हूँ। अच्छा हैं। मैं रहता हूँ सीट पे देख। अरे चल ठीक है, सुबह तू जा और बहुत जल्दी करना है तेरे को जो भी तूने किया ना। मैं फिर दूसरे साइड जा रहा हूँ ना फिर। अरे सो पीछे आ जा, सुबह पीछे आ जा। Spike down A. Spike spotted A. Nowhere to run. ए मेन से लगा, ए मेन दोनों। Hawk out. Blinded. अरे यार क्या फ्लैश कौन किया? क्या मतलब फ्लैश कौन किया? डस्क ठीक है। One enemy remaining. ये सीटी थी हमारे स्पॉन पे थी ये। Last player बढ़िया। standing. इधर छुप जा। लेफ्ट में छुप जा। वो लेफ्ट में छुप जा। बस इधर ही बैठ। तेरे राइट में क्या उतर है? लेफ्ट देख। हाँ लेफ्ट देख। हाँ अरे इतना भी लेफ्ट, हाँ बस ये देख। नाइस ऑपले। सामने ऊपर। हाँ बाहर निकल लेफ्ट में ऑपले। हम बढ़िया बहुत बढ़िया। If you say one of my creatures, it's a good thing. एनिमीज ब्लाइंडेड है भाई, वो नहीं है, पहला ब्लाइंड नहीं हुआ। अरे मैं तेरे को बता दो क्या हुआ। तूने ना ध्यान नहीं, तुझे इसको फ्लैश ना वो रैंडम फायर करने लग गया। किस तरफ किया उसने? मेरे तरफ।
अच्छा ऑफ दियो Need a drop. ऐसे आजा सी मैं गराज चले जाता हूँ। उनके पास कोई स्मोक्स हैं तो स्मोक्स पर वो यूज़ नहीं करने वाले। लगता है बी है। Hawk out. Blinded. Hawk out. Blinded. बी पे ही है, क्लोज है बी। Enemy spotted me. मैं रुक जा राइट में है। कैंपर है से राइट में बैठी नहीं। भाई पूर्ण क्यों जा रहे, मैं कह रहा हूँ रुक। एक विंडो भी था, एक विंडो से आ रहे तेरे मुंह पे आ रहे हैं। बढ़िया। Match point. अरे पूर्ण से पास फ्लैश था तो फ्लैश करके जाया कर, ऐसे अकेले में जाया कर। अरे लेके जा भाई। चल एक को भी आप मैं भी खिलाऊंगा। कैसे है? टाइम पास के लिए। चल है ये दे। तू ड्रॉप दे ना मेरे को सोवा को ड्रॉप दे। पूनच तू ड्रॉप मांग सकता है डस्ट से। हां फुल शील्ड। शॉक डार्ट क्यों मार रहा है? सी जा रही है क्या? नहीं ये गराज के सामने थे, सी हो सकते हैं। ये छोड़ रहा हूं मैं। छोड़ सी हो सकते हैं। ये बंदा अपने स्पॉन पे है। सी पे कोई नहीं है। कहाँ पर है? यही जाएगा। नहीं सी Taken out. आया वो। दोनों हैं। Building area. फ्लैश कर किसका सोच रहे हैं? 30 seconds left. वाह। One enemy remaining. Deploying drone. इधर है। Seek them out. 10 seconds left. है प्लांट नहीं होगा ये तो। Spike planted. Blinded. भाई क्यों? अरे मेरे को लगा जीत गए। हेले लेफ्ट। Last player standing. नहीं मत फेंक, जा शिफ्ट वॉक करके चले जा। मत हाँ कंट्रोल छोड़ दे बस शिफ्ट। ओ बढ़िया। 4 इसके पास अल्ट था भाई, ये थोड़ा नहीं साइड। Defenders win. I'm not tired. Are you? भाई गाना सुना चेंज हो गया। कब से? जब से वो जेड की स्किन आई है। मेरे सिर्फ इस अकाउंट पे आवाज खुली हुई है इसकी, बाकी सब पे म्यूटेड है। अच्छा चलेगा अगर मैं जा रहा था। जी अब क्या करना है? जैसा बोलो। छोटी कोई छोटा अकाउंट है क्या? ब्रॉन्ज आयरन टाइप का पूर्ण का कॉम्पी करवा देते हैं। हाँ मेरे पास तो हर्ष का एक होगा। मेरे पास कोई नहीं है। पूर्ण तेरे पास कोई दोस्त का अकाउंट है क्या तेरे पास? नहीं। अबे सुन, तेरे पास हर्ष का अकाउंट है ना? नूब गेमर का? हाँ
हाँ हाँ एक है। हाँ तो उससे आ जा ना। और तू किससे आएगा? तेरे पास कौन सा वाला है? और रुक जा, मैं नाम बताता हूँ उसका। हाँ नहीं तो मैं मेरे गुड्डू पंडित वाले अकाउंट से आ जाऊंगा। मी रेस प्लीज है मेरे पास, बट वो तो ज़्यादा नहीं था। मतलब उसका वो सिल्वर नहीं था वो। सिल्वर की सिल्वर था क्या? एक बार चेक कर लो। अनरैंक्ड है तो सिल्वर 2, पर अनरैंक्ड है अभी। नहीं खेल सकते ना फिर। हाँ नहीं हो पाएगा आई थिंक। वे आउट वाला आईडी का क्या है फिर सीन? मेरे पास तो एक है अनरैंक जो लाइक आयरन के ऊपर भी नहीं गई, कभी रैंक खुला ही नहीं उस पे, मैं उससे आ सकता हूँ। ओके। कितना अकाउंट बना के रखते हो? हाँ अरे बहुत महीनों सालों से खेल रहे हैं ना, इसलिए बन जाते हैं। अब जब तू भी डायमंड पहुंचेगा फिर तेरे को खेलना पड़ेगा ना अपने दोस्तों के साथ। वे आउट वाला दो आईडिया तो। तू तेरे पास अच्छा वे आउट का क्या सीन है बताइए। मेरे को नहीं पता उसका क्या रैंक खुला था, एक बार जरा देख। नहीं मेरे पास है नहीं वो वाला, और एडेड नहीं है। मैं देखता हूँ। सिल्वर 1 था, सिल्वर 1 है अभी। सिल्वर 1 एट प्रेजेंट ओके, मतलब खुल गया इसका। हाँ अरे शिट, मेरी प्लीज का खुला नहीं है, बट मेरे को लगता नहीं कि वो अलाउ करेंगे। सिल्वर वाले अलाउ नहीं करना चाहिए, आयरन के अगेंस्ट तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बस आयरन और सिल्वर ज़्यादा दूर है नहीं, दो ही का ही डिफरेंस है, बट क्या करना है फिर? ऑप्शन बचता नहीं है फिर। मेरे पास तो है गुड्डू पंडित वाला, वो तो न्यू न्यू एकदम अकाउंट है। मेरे पास नहीं, मेरे पास वही मैं भी सोच रहा था मेरे पास है कि नहीं है। सारे जो हैं वो ऐसे ही हैं, सिल्वर है, ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज चल सकता है ना? नहीं वही तो मैं सोच रहा हूँ, ब्रॉन्ज है कि नहीं है वो मैं सोच रहा हूँ, नहीं है मेरे पास। जेन समा का भी तो नहीं है ना अकाउंट। क्यों जैनसमा का अकाउंट नहीं है मतलब? क्या पासवर्ड नहीं पता ना उसका। अच्छा वो तो जागरा रहेगा, देखना डिस्कॉर्ड पे है क्या। और मेरे को भी खिला लो मेरे को। ओके आजा भाई गोल साइबॉट, फिर हम अनरेटेड खेलेंगे ब्रो, क्योंकि हमारे पास अकाउंट नहीं है अगर एक्स्ट्रा नहीं है तो। आ जाओ डस्कब्लेड 1924 मेरा आईडी है, ऐड कर लो। अगर आपके पास कोई ऐसा अकाउंट हो जो आयरन के अराउंड का है तो बताओ, हम सब खेल लेंगे। मैं कॉम्प नहीं खेल सकता? हाँ कोई नहीं, चलो ठीक है फिर अनरेटेड ही खेल लेते हैं ना, तुम भी आ जाओ। वैसे बहुत कम प्लेयर्स मिलते हैं जो वैलोरेंट पे मतलब स्ट्रीम देख के खेलना चाहते हैं नो। फोर्टनाइट में तो भर रखे, फोर्टनाइट रॉकेट लीग में। अरे पूर्णच हमें कैसे मिला था ब्रो, बताइए जरा। स्ट्रीम से है ना? किससे? स्ट्रीम से मेरे स्ट्रीम पे ना। हाँ ओके पैब्लो पापा लो बोलो 13447। हाँ भेज दी पापा, बोलो 13 नहीं। इससे पहले कभी खेले हो? नहीं ओके कूल, कोई दिक्कत नहीं। चलो शुरू करते हैं फिर। अनरेटेड माइक है ब्रो। हाँ चालू कर लो, हाय हेलो तो बोल दो।
अच्छा तू चालू तो कर दे ना, अगर तेरे को छोटे वाले अकाउंट पे आना है तो तू आ सकता है। नहीं तो इसी पे खेलेंगे तो स्मर्फ आएंगे, वैसे तो मेरे में भी आएंगे तो लगा लेगा, दिक्कत नहीं। ये बड़ा वाला नाइफ नहीं है उसका, तो एक गेम ट्राई करो। अरे तू पहले लगा तो, मैच मेकिंग तो लगा। तो मैं हूँ। हाँ तो कह रहा हूँ लगा। अरे यार आदत नहीं है ना। Did you all watch Sora XT? We watch, like मैंने इसकी 3-4 वीडियोस, लाइक 3-4 नहीं काफ़ी वीडियोस देखी हैं Sora XT की, बट आई डोंट फॉलो हिम। मुन्ना तू करता है फॉलो सौरा को? पूर्णज तो करता होगा पक्का। पूर्णज तो करता होगा Sora XT को फॉलो। कौन है? ओ लो लॉल, कौन बोल दिया भाई मुंह पे। या ये फेकर है भाई। हाँ सोना इसी को चाहिए भाई। ओ वो लॉगिंग करता है, वो है क्या? वो चलाता है मार्शल ओनली सेज हेडशॉट, ऐसे क्रैकिंग हेडशॉट होते ना। शूट बोलता है, शूट। पता नहीं। बट भाई मैंने उसकी ना वीडियोस देखी, और एडिट करने में भाई मैं सही बताऊँ बहुत टाइम लगेगा उनको एडिट करने में, उसके पास एडिटिंग स्किल्स काफ़ी सही है। क्या खेलूं? रेना जेट जल्दी अरे बता। कुछ भी खेले, कुछ और खेलना, सुबह खेलना। तू प्रो प्ले भी देखता है क्या कुछ? मैं ट्राई हार्ड नहीं कर रहा ना। अच्छा ओके। वाइपर जो तेरे को प्रो में बढ़िया लगा उसका टाइप का भी तू खेल सकता है। प्रो में बढ़िया लगा मतलब क्या होता है? मतलब कि ओ भाई उसने अब शॉक डार्ट मार के किल ले ली, या फिर उसने अब यहाँ पर डार्ट मारा फिर पीक लिया फिर बता दिया टीम को, मतलब वो से पता लगता है ना थोड़ा। माई वन ID इज बैंड फॉर 18/09/2022। अगले साल तक 1 साल का बैन लग गया, कैसा फील हो रहा है? इंटरव्यू। इसमें नाम चेंज नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं। कैसे? गूगल पे लिख रायट लॉगिन, आईडी पासवर्ड लॉगिन कर और जा ऐसा प्रोफाइल पे और एडिट कर। हाँ पहले गूगल पे ये सर्च कर ले हाउ टू चेंज, वो उससे एक आर्टिकल मिल जाएगा। आर्टिकल मिल जाएगा ना वो। इजी और प्रोफाइल में चले जा। अरे वो सब झंझट है, भी कंफ्यूज हो जाएगा। नहीं आई थिंक रेफरेंस होगा इसके पास तो फायदा होगा कि कहाँ जाना है, क्योंकि राइट की वेबसाइट मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आई। बाकी लोगों की वेबसाइट इतनी सही है बट राइट की पसंद नहीं आई। वो तेरे पास EP1 MMX वाला गन बडी है, बताइए जरा बाद में। मेरे को लग रहा है ये क्योंकि मैंने फर्स्ट सीजन में खेला था इसलिए मेरे को मिला है, बाकी लोगों को नहीं मिला होगा। क्या लूं? हाँ मर्जी है देखो, मतलब जेट के और जेट रीना के अलावा तेरे को जो खेलना है खेल सकता है, रेज भी खेल सकता है अगर तेरे को खेलना है तो। तेरे को वो कैसा लगा था, ब्रीच कैसा लगा था? वैसे तो हमने सरेंडर कर दिया था उस दिन। हम लोग फन खेल टाइम पास करके खेल रहे थे। हाँ मैं साइफर खेलूंगा तो शॉटगन ओनली करूंगा, मजा आएगा, लाइक जज ओनली। मेरे को भी वाइपर खेलने का मन है। हाँ खेल सकता है, सोच ले तू अल्टीमेट लगा रखा है तो कितना बढ़िया रहेगा। हील नहीं रहेगा अपने पास। तेरे को सेज लेना है क्या? ले सकता हूँ। हाँ स्टेल लेकर मार्शल रोल नहीं करता हूँ, सोरा एक्स बनेगा। ये भी सही है। वैसे ड्यूलिस्ट कमी नहीं है, एंट्री हो जाएगी, नो इश्यूज। काजू खाएगा काजू। तू खा क्या रहे भी?
बादाम बादाम गीले वाले नहीं नहीं ओ बता दे क्या नहीं बहुत तो नहीं आ रहा ये पता लगेगा तू कुछ खा रहा है You can bring people back from the dead? Anyone? No constraints? Interesting. Bro, OBS. Wow, my eyes are down. I think left में गया. अरे spike किधर बस? Spike carrier is killed. Spike down A. जेट डिंग है Reloading. Last player standing. 58 और 72 जेट 78 और 52 Their omen may be a nightmare, but I was never scared of the dark. ना सुन रहे हो? Omen might be a nightmare, but she was never afraid of the dark. XG. Reloading. Spike down mid. I have the spike. Last player standing. Oh. Yeah. Reyna, time to hunt. ये अच्छा मारा है, अच्छा मारा है. Yes, this should do. जाओ जाओ बीच में पीछे पीछे. I will find you. स्कोप सेंस तो 1 रखते हैं. Reload. ओडन. दो आ रहे हैं. Reloading. ओ हील दी फिर. Spike down B. No cage triggered. Last player standing. One enemy remaining. 20. Where will they go this time? गन दिला सकता हूँ मेरे को मार्शल दिलाते. नहीं मैं एडी से चला रहा है. That goes there. This goes here. नहीं तू जाए ऐसे ऐसे.
Decoy. Reloading. Bro, बहुत much. Cage triggered. भाई this side देखा है. Our spike carrier is killed. Spike down. B. Enemy down. Last player standing. Give me a moment. I need to set back up. 2v5 करना है? क्या करना है या नहीं करना? क्या? 2v5 करना है या नहीं करना? नहीं. तो हम चाह रहे हैं ऐसे हम वो भी कर सकते हैं. FF करके नया गेम भी शुरू कर सकते हैं. क्या? 4 फीट करके नया गेम भी शुरू कर सकते हैं. कैसा बोला? मार्शल से थोड़ा टाइम पास कर देना फिर छोड़ देगा. Okay. $106. अरे ये बार रिवाइव है. क्या? ये बस रिवाइव है. उसके जेट के पास 106 डाउन है तो वन शॉट है वो. Decoy. अरे ओपी हील. अरे पूर्ण सुन सुन मेरी बात सुन. तेरे को हील को देखना पड़ेगा तभी तेरे को हील मिलेगी. ठीक है. ओ तो साइड से गया तो नहीं. हाँ तो गया हील गई तो हील नहीं मिलेगी. ब्रो यहाँ पर लोग आए हुए हैं. चलो. पापा बोल लो पीछे बंदे हैं. लेफ्ट में. हाँ 30 seconds left. Cutting through. पापा बोलो. ई दबा. पीछे तो बंदे हैं. Ten seconds left. पूर्ण भाग के जा. यहाँ पर बंदे हैं. यहाँ पर बंदे हैं. Standing. Zuko better watch their backs. ट्राई हार्ड खेल रहे हैं. करने दो. Cage triggered. Cutting their vision. यहाँ पर बंदे हैं. A3 पे बंदा है. दो हैं. Camera taken out. Cage triggered. Our spike carrier is killed. Spike down B. Last player standing. Where is everyone hiding? ऑफर है. ओमन के पास ऑफ है. I have retrieved the spot. No more targets. One enemy remaining. 30 seconds left. Most probably be man.
10 seconds left. Planted the spike. इधर बा मिड देख। अरे मिड नहीं देखा तूने? मैं पिंग करूँगा आराम से गेट। अरे राइट में स्मोक हो जाऊंगा, मेरे को याद नहीं था यार। Their lives are so meaningless. Might as well give them to me. ऐसा ऑफ कर लूँ भाई। ये ले, मेरे को तू वैंडल दिला दे। Can someone get this? Thank you. No hard feelings. Sure. Yes, sir. I got this one. One down. Reloading. Many enemies speak. बी में नहीं है, अंदर तो कोई नहीं है। तो भी मैंने। One enemy remaining. Reloading. आ जाओ ब्रो, आ जाओ। पाब्लो पापा बोलो। क्या हो गया? Let us use our sight to our advantage. ले लो पूर्णस, उठा ले। अबे नूब्स है लोग। हाँ नहीं, मतलब इतने भी नहीं, बट अब ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं। मैं भाग के गया, लोगों ने पीछे चेक भी नहीं किया। हाँ ये बात है। लाइक साउंड पे नहीं खेल रहे लोग, सिर्फ एम पे खेल रहे। यस, एम और स्ट्रैटेजी पे खेल रहे हैं। हाँ कोई नहीं ब्रो, कोई नहीं। Get out of my way. जाना, मेरे पास रिवाइव है। I'll handle this. Still in sight. वो दिख गया उसको, ओमन दिख गया। Wall raised. Cage trigger. ऊपर रेस रहना, ऊपर 3 लोग हैं यार। They found my wire. I know exactly where. अरे इम्बरी है। ओह Last player standing. Spike down A. ये बनाया क्यों है यार? जब वहीं से मार सकते हो। We know more than we did before. Let's use that. बात तो है, क्यों बनाया भाई? हाँ बात तो है, क्यों बनाया? हाँ अरे पूर्ण जॉब कर रहा है। हाँ Where are you? ऊपर वाला पीछे नहीं बैठ सकता, उसको आगे जाना पड़ता है मारने के लिए। यस बाय द वे। Cage trigger. भाई मेरे को ऑफ पड़ी, मेरे को पता नहीं क्यों ना। Reloading. Your duty is not over. Where I belong. No more charges left. Spike's down. Spike down mid. I have retrieved the spike. Cage trigger. One down.
player standing. 3 out of 5. 30 seconds left. Planted the spike. They found my wire. One enemy remaining. You're dead, and I didn't feel anything. Let them try to get through me. वो उसने शूट किया था ना. गिरा दे इसको, गन गिरा दे. गन गिरा मेरे को. कोई नहीं. ऑपर है. Camera taken out. Cage triggered. नहीं ऑपर से पड़ेगी, मत जा पे. No more charges left. Decoy. हाँ बस फेक कर दी ना. शिफ्ट वॉक करके पीछे आ जाओ. Decoy. बिना आवाज करे गाइस. पूर्ण वापस आ. शिफ्ट तो आके आजा पूर्ण आजा. Thirty seconds left. हाँ एक और है. One enemy remaining. इस यहीं पे पूर्ण जान देख रहा है. जहाँ पूर्ण देख रहा है. मार्केट. तुम जाओ साइड में जाओ. पूर्ण प्लांट करना है. 10 seconds left. बढ़िया. To be a hero. Great job. VCT needs me. I can't be away from it. दिला दे. फैंटम दिला दे. ओ नहीं वो पैंडल आपने. Can someone get thank you? पैंडल. अब ऑप के पैसे है अभी भी. मैं फिर भी कैम लगा के चेक कर लेता हूँ. हाँ एक बंदा वहाँ पहुँच गया. टाइल्स एक को सामने भी है. तो ये सब रोज़ है. आई थिंक एक सब रोज़ है. Last player standing. Spike down. Attacker spawn. Team Ace. Team Ace क्या होता है? Last सबने एक round को मारा. before the switch. Oh. We cannot keep our goods after this. Spend all. I need a drop. Thanks. I need this. दिलाते ब्रो. चाहिए. स्किन वाली गन चाहिए थी इसको. अरे कोई नहीं मिल जाएगी वो उसके लिए. Enemy removed. बेल्ट में लगाता हूँ. Where is everyone hiding? एक और है सोवा भी यहाँ पर. सोवा साइड में चला गया. Enemy spotted.
remaining. I'll handle this. That is right. Last player standing. Clutch. Switching sides. I know that I am by your side. क्या पॉइंट है अल्ट पॉइंट लेने का रिवाइव तो तूने एक ही बारी किया फिर वो डील लाइयो शरीफ गिरा दे और चले जाते बंदा हाँ तुम दोनों एक खेलो हम दोनों बी खेलते हैं ए भाई क्या गुस्से यार Spike planted. Last player standing. I'll pick them apart. You clean up whatever's left. हाँ सारे आए थे Ah, this is a nice. Yes, this should do. B. लाइन में सारे Spike planted. छोड़ना तोड़ना भाई Reloading. आजा Enemy spotted. Last player standing. Remove. Cage triggered. Wow, my eyes. oh I don't care if there are 5 of them or 50 of them. Let's go. इनको एरी स्पैम मारना है क्या करो तेरे को अगर मारने तो तू मार मैं पिंग कर दूंगा कैमरे से नहीं यार मेरे कैमरे से कहाँ लग सकता है यहाँ पे लगता है इस तरफ जाना है तो इधर ये जहाँ मार के ना वहाँ पर लगाना लगाओ ना किसी ने स्पैम नहीं किया भाई क्या मतलब स्टार्टिंग में करना होता है Cage triggered. Spike down B. Last player standing. अरे राउंड शुरू हो मार Match point. The dimensional fabric here is thin. I'll test. Ooh, 4200. इस बार कैंप करेंगे I will find you. Cage triggered. Spike down B. भाई मिड से आ गया
Last player standing. 120. Holy shit. Attackers Holy win. shit. खेल रहे हो और? खेलना मैं तो खेल लूंगा। अरे लगा Match found. ये तो बनते मैं आया 2 मिनट। ओके चल गाइस आई थिंक आज के लिए इतना ही करते हैं एंड सी यू गाइस टुमारो विद द फाइनल्स ऑफ वीसीटी। क्योंकि वीसीटी हो गया, मेरा प्लान तो ये था कि वीसीटी खत्म करके स्ट्रीम बंद कर दूंगा, बट स्ट्रीम बंद नहीं करी। तो ये वाला मैच वैसे खेल के भी मैं जा रहा हूँ, तो या GG's and I'll see you guys tomorrow. Bye bye. कुछ बेकार से कर लूँगा सेज टाइप।